क्या हाल है?
क्या हाल है?
ठीक है ओके ডাঙৰ খোলা বেগ এটা ধৰিবলৈ আপুনিও কৈ থাকে হ'ব দিয়ক ৰাখক ইমান কওক না হ'ব দিয়কচোন আপুনি মোক আহি পেলাই ৰুমত আহি লৈ পেলাই ডাঙৰ বেগ এটা থৈ লৈ আপুনি আপুনি অকল শিকাই আপোনাক দেখাতে ইমান আৰু মইতো লাইভত আছোঁ কাম কৰি আছোঁ আপুনি ইমান কৈ থাকি কেনেকৈ কৰিম দিয়ক কৈ দিয়ক দি পেলাই আপুনি আহক কৈ আছোঁ ইমান দাদা এই লাইভত আছে আপুনি কেমেৰা পাৰ্চন লৈ আহিছেনে কিমান টাইম মই বৰ্তমান মই কালি আকৌ চাৰে তিনিটা দি গ'ল না চিন্তা কৰি সোমাব দিয়া নাই কাৰ্ডখন লাগিব তাতে বাহিৰত থাকিব চিন্তা কৰিছোঁ ড্ৰাইভাৰ পটকতে আপুনি সুন্দৰ দিয়ে চাৰ্ভিচিং লিষ্টটা আপুনি লৈ নিমিল লাইভত গৈ আছে ইয়াতে পঠিয়াই দিলোঁ ড্ৰাইভাৰটোকে আপুনি আপুনি লৈ পেলাই ৰুমটোৰ লগত হেৰি কৰি ড্ৰাইভাৰটোক ক'ব যে এই দহখিনি যোৱা তাৰপাছত এইটো লৈ Kenapa tuh magilah kanalan nih? Mampu lagi ya kan? Ini dua. Siapa jawab apa nih? Kan lagi wolf.
না কাঠখন থাকি গ'ল গাড়ীত কি গ'ল গুচি গ'ল ফচকে মাইনদা Himanta Biswa Sarma নিজে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ইয়াৰ উপৰিও গুৱাহাটী চেণ্ট্ৰেল এইবাৰ চৰকাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ আছে এফালে বিজয় গুপ্তা আৰু আন এগৰাকী যিহেতু যুৱপ্ৰজন্মৰ প্ৰাৰ্থী ইয়াৰ উপৰিও নিউ গুৱাহাটী বিধানসভা সমষ্টি আছে নিউ গুৱাহাটী বিধানসভা সমষ্টিৰ এবাৰ তেওঁক প্ৰত্যক্ষ কৰা হৈছে ইয়াৰ উপৰিও শান্তু পৰা তেওঁ যিহেতু কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা তেওঁক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হৈছিল ঠিক তেনেধৰণে দিছপুৰ বিধানসভা সমষ্টিটো বিশেষকৈ চৰকাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈছে কাৰণ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ যি কংগ্ৰেছৰ নেতা আছে তেওঁৰ ক্ষেত্ৰৰ নিশ্চিত ৰূপে তেওঁ আহি বিজেপিৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব বিজেপিকৈ ইয়াৰ বিজেপিৰ পৰা আঁতৰিকৈ কেন্দ্ৰীয় ঠিক তেনেধৰণে ডিমৰীয়াত যিহেতু অসম্পূৰ্ণ পৰিষদৰ ডিমৰীয়া সমষ্টিত দিয়া হৈছিল তেনেধৰণে এই পাঁচটা বিধানসভা সমষ্টিৰ ভোটগণনা 8 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু 8 বজাত ইতিমধ্যেই যিবোৰ যি পোষ্টেল বেলট আছে পোষ্টেল বেলটৰ গণনা আৰম্ভ হ'ব 8 বজাৰ লগে লগে যাৰ কাৰণে ভোটদান দেৱাল কেন্দ্ৰত যি ষ্ট্ৰংৰুম আছে সেই ষ্ট্ৰংৰুমৰ বাহিৰত আৰু ভিতৰত ইয়াত নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে ইয়াত যিসকল দলৰ ফালৰ পৰা আৰু নিৰ্বাচন আয়োগৰ ফালৰ পৰা যিসকল কেমেৰা নিয়োগ কৰা হৈছে তেওঁলোকৰ কাৰণে ব্যৱস্থাসমূহ গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু পৰিৱেশটো এই
এইটো লাইফত লাগি আছে আপুনি অঁ মই ড্ৰাইভাৰ ভাবিছোঁ এনচুট কেলা Okay, তুমি নিৰ্দিষ্ট জেগা লৈ যোৱা বাইকমেনবিলাক কেলা বিপদবিলাক আগত গুচি যায় নহয় কেলা
where the tribal people holds the holds the upper hand. Hello and welcome to our special coverage of the Assam Assembly election. After weeks of high-octane campaigning and a record 85% turnout, the moment of truth is finally here. Will the BJP-led NDA return to power in the state for a third consecutive time, or has the Congress-led opposition done enough to change the script? Joining us live from Guwahati is senior reporter Rahul Karmakar, who has covered the region extensively. Rahul, good morning. Good morning. It has been a long wait since April 9. And as we stand here on the cusp of the first leads, how do you summarize the soul of this election? Well, as you are aware, the voting turnout was the highest ever in Assam at 85.96%. Well, but this has usually been the case because elections in the Northeast are more like festivals, and Assam is no exception, compared. And then it has usually been above the 75% mark. And people to whichever party or alliance they belong, they tend to interpret it accordingly. Whether it's a vote for a change for the opposition or whether it's a vote for continuity for the BJP. We'll get to know in a few while. But then there has been a few issues here for the factors. We talk about the identity politics of that the BJP has been using and the development agenda, and the Congress has been trying to focus on an inclusive Assam with the goal of a new Bor Assam. Bor Assam is a greater Assam, and they unified it because they say that the BJP has divided the society into the hills and the plains, into the Barak Valley and the Brahmaputra Valley, and the Muslims and the non-Muslims, the tribal and the non-tribal. So that's what the opposition says, and they hope to bring a change. But amid all this, we must also consider a major factor. This is this election is the first after the 2023 delimitation, and which there was no. Many say that there was no logic to how these in all the constituencies were redistributed or reshaped. For example, Barak Valley used to have 15 constituencies; it now has 13. The Boroland Territorial Council, where the tribal people holds the holds the upper hand. So that region had 12 assembly constituencies. It now has 15. So these are some of the changes. And at the same time, traditionally there were some Muslim dominated constituencies where Muslims used to call the shots. And the seats have come down from about 35 to around 22 now. So these are some of the factors that will decide. And a major turnaround for any major shift for any alliance or any party is how Upper Assam votes. Upper Assam will be the eastern part of Assam, where tea tribes and some of the communities that are seeking scheduled tribe status, for example, the Ahoms, which ruled Assam for more than 600 years before the British came and took over. So, and the Morans and the Motoks, these are some communities which dominate those areas. Apart from the tea communities, we call them tea tribes. Basically, they are the Adivasis from Central Assam. So, how this region votes will decide the results. Because the BJP
BJP never had, they could now never touch the majority mark, which is 64 in Assam, in a house of 126 seats. They, in the past two elections, the BJP had 60 seats, but along with the allies, they had between 75 to 84 seats in the past two elections. So how this region votes will play a crucial role, and at the same time, Barak Valley also, because Barak Valley is where the BJP was born in the Northeast. In the 1991, they got 10 seats, which was unprecedented, because at that time, nobody believed that the BJP could do it. And now, at the same time, this region has now two fewer seats. So this is these two regions, how they vote will decide the factor. And apart from that, you have the Bodoland factor, because the Bodoland factor, there are two major parties, the UPPL and the Bodoland People's Front. And the BJP, they have always, because these councils and the smaller states in the Northeast, as you know, they tend to support the party at the center, because they are all dependent on the center for the funds. So BJP now has the PPF as the partner, while its partner was the UPPL earlier. So usually what happens is whichever party is not officially with the NDA, they are in the opposition. But at the same time, we have seen from past elections that after the polls, after the results, they tend to align, because at the end of the day, they dependent on funds from the center and the party that rules at the center. So these are some of the factors that will decide, the outcome of the polls. And most of the exit polls have already predicted, return to power of the BJP. And at the same time, the Congress is also upbeat, but we must also understand that the Congress, because many leaders have, before the election, many leaders have come on board to the BJP. For example, Pradyut Bardoloy, the MP, and then former President Bhupen Kumar Bora. The Congress is seen as a party which has only one leader. So this is the major factor for whether they can do it under Gaurav Gogoi. Thank you. Yeah. You said like you spoke about the BJP's growth. If you look at the results, in 2011, it had 11% vote share. And then in 2016, it grew to 29.5. And in 2021, it rose to 33.21. So from 2011 to 2021, there has been a massive jump in BJP's vote share. So is it the most dominant force in the state now, or perhaps in the Northeast? Come again? Like, has the BJP turned itself into the most dominant force in the state? Yes, absolutely. But at the same time, they are also dependent on the regional players in the north, because on its own, except for Arunachal Pradesh and Tripura, it has never, won the majority mark. They have never reached the majority mark. So they are dependent on the smaller parties. But undoubtedly, it has become BJP has become a major force. But if you see the trend, the BJP in the Northeast, but let me talk about the Northeast, because the outcome of the BJP in Assam will decide if it loses the election. This will have an impact on the other states, because after technically Arunachal Pradesh had a BJP government for a year. That was, I think, it's 2003. But they never won the election, because the party at the center, it changed, and they also changed, because from a regional party, from Congress, they turned overnight. This thing happened in 2016 in Arunachal Pradesh after Assam won the election that year. And the next year, it was Manipur. And a year later, Tripura, Meghalaya, and Nagaland. Although Nagaland and Meghalaya, they were the smaller players, but then you get the bigger picture, because in Assam is the most powerful and most economically stronger state in the Northeast, and it's also the connectivity hub of the region. So whenever a party, whichever party in
has the majority or holds power in Assam, it has an impact on the other states, other northeastern states. So this is a very crucial election for the BJP that way. Okay. We will continue this lively discussion. Stay tuned to our special coverage. We will return with key constituents and in some time the early trends. Thank you. Sure. Welcome. Thank you. দাদা এই লাইভত আছে আপুনি কেমেৰা পাৰ্চন লৈ আহিছেনে কিমান টাইম মই 10 মিনিটমান মই কালি আকৌ চাৰে তিনিটা দেৰি হ'ল না 3টা বাজিব সোমাব দিয়া নাই কাৰ্ডখন লাগিব তারপরে বাহির থাকিব এটা কৈছোঁ ড্ৰাইভাৰ পটকতে আপুনি চিন্তা দিয়ে সাৰ্ভিচিং লিষ্টটা আপুনি লৈ নিমিল লাইভত গৈ আছে ইয়াকে পঠিয়াই দিম ড্ৰাইভাৰটোকে আপুনি আপুনি লৈ পেলাই লগত হেৰি কৰি জেগাটো ক'ব যে এই দহখিনি যোৱা তাৰপাছত এইটো লৈ কেনেকৈ তোমাক দিলা খানালে নি অন্তত আহি আছে যাব পাৰে নাই কাৰ্ডখন থাকি গ'ল ঘৰত নাই কাৰ্ডখন থাকি গ'ল গাড়ীত কি গুচি গ'ল খোজকে মাইনেটা
মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নিজে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী। ইয়াৰ উপৰিও গুৱাহাটী চেণ্ট্ৰেল এইবাৰ চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ আছে। এফালে বিজয় গুপ্তা আৰু আন এগৰাকী যিহেতু যুৱপ্ৰজন্মৰ প্ৰাৰ্থী ইয়াৰ উপৰিও নিউ গুৱাহাটীৰ বিধানসভা সমষ্টি আছে। নিউ গুৱাহাটী বিধানসভা সমষ্টিত এবাৰ তেওঁক প্ৰক্ষেপ কৰা হৈছে। ইয়াৰ উপৰিও কাকু বৰা তেওঁ যিহেতু কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা তেওঁক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হৈছিল। ঠিক তেনেধৰণে দিছপুৰ বিধানসভা সমষ্টিটো বিশেষকৈ চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈছে, কাৰণ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ যি কংগ্ৰেছৰ নেতা আছিল তেওঁ কেৱল কিছুদিন পূৰ্বে তেওঁ আহি বিজেপিৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব বিশেষকৈ ইয়াৰ বিজেপিৰ পৰা আঁতৰি গৈ ঠিক তেনেধৰণে ডিমৰীয়াত যিহেতু অসম্পূৰ্ণ পৰিষদৰ ডিমৰীয়া সমষ্টিত ভোট দিয়া হৈছিল। তেনেধৰণে এই 5টা বিধানসভা সমষ্টিৰ ভোট গণনা 8 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। 8 বজাত ইতিমধ্যেই যিবোৰ যি পোষ্টেল বেলট আছে, পোষ্টেল বেলটৰ গণনা আৰম্ভ হ'ব 8 বজাৰ লগে লগে, যাৰ কাৰণে ভোটদান দেৱাল কেন্দ্ৰত যি ষ্ট্ৰংৰুম আছে সেই ষ্ট্ৰংৰুমৰ বাহিৰত আৰু ভিতৰত টকটকীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। ইয়াত যিসকল দলৰ ফালৰ পৰা আৰু নিৰ্বাচন আয়োগৰ ফালৰ পৰা যিসকল বিষয়া নিয়োগ কৰা হৈছে তেওঁলোকৰ কাৰণে ব্যৱস্থাসমূহ গ্ৰহণ কৰা হৈছে। আৰু পৰিৱেশটো এই লাইভত লাগি আছে। চুটকেলা তুমি নিৰ্দিষ্ট জেগা লৈ যোৱা বাইকমেনবিলাক কেলা ফটোবিলাক আগত গুচি যায় নহয় কেলা
এখন নকুলদার আপনাদের তাতে কেউ এনাগো বুজুর্গ এনাগো Hey, apa ya? Lagi ni. রাতে 5টাতে আমি তো এসে ছোট ছোট পাইছি এগুলো তারে আছে দেখা
মাতিবলৈ কোৱা নাই মই কৈছোঁ কাইলৈ আহিব মই কৈছোঁ হোটেলৰ পৰা লৈ লওঁ লৈ লওঁ নাই নাই খালি সোমাইছে অঁ ঠিক আছে মোক কৈছোঁ ওলালে বা বাইক দিব ওলালে ওলাই নাই इसको बुलाया तो हाँ आना तुम यहाँ जाओ অঁ এই 2 নম্বৰ ৰুম হা ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰ তাত চাব বৰ্ডৰ ওপৰত লিখা আছে 2 নম্বৰ অঁ আপুনি ৰুম পাই পেলাই কৰিব এই হালধীয়া নিচিনা কাগজখন অকণমান স্পীডত যাব বাইদেউ বেয়া নাপায় বগাটো অঁ পালেগৈ অঁ 2 নম্বৰ ৰুম হা ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰ অঁ খোলা বেগটো এই ৰাইট চাইডত চাব আপোনাৰ হালধীয়া নিচিনা কাগজখন মোক গৈ পেলাই ৰুমৰ পৰা ফোন কৰিলোঁ এই কিমান টাইম লাগিব ঠিক ঠিক check.
ठीक है ओके কলাপাচি যিটো আপুনি কলাপাচি যদি নিচলা হয় মোৰ ৰুমত খাবলৈ আপুনি সেইটো লৈ মানে ডাঙৰ খোলা বেগ এটা সেইটো লৈ আপুনিও কৈ থাকে হ'ব দিয়ক ৰাখক ইমান কওক না হ'ব দিয়কচোন আপুনি মোক আহি পেলাই ৰুমত আহি লৈ পেলাই ডাঙৰ বেগ এটা আছে লৈ আপুনি কেলে আপুনি অকল শিকাই আপোনাক দেখাতে ইমান আৰু মইতো লাইভত আছোঁ কাম কৰি আছোঁ আপুনি ইমান কৈ থাকি কেনেকৈ কৰিম দিয়ক কৈ দিয়ক দি পেলাই আপুনি আহক কৈ আছোঁ ইমান দাদা এই লাইভত আছে আপুনি কেমেৰা পাৰ্চন লৈ আহিছেনে কিমান দাম মই বৰ্তমান মই কালি আকৌ চাৰে তিনিটা দি গ'ল না তিনিটা বাজিব সোমাব দিয়া নাই কাৰ্ডখন লাগিব তাতে বাহিৰত থাকিব তাক কৈছোঁ ড্ৰাইভাৰ পটকতে আপুনি চিন্তাও দিয়ে চাৰ্ভিচিং লিষ্টটা আপুনি লৈ নিমিল লাইভত গৈ আছে ইয়াকে পঠিয়াই দিলোঁগৈ ড্ৰাইভাৰটোকে আপুনি আপুনি লৈ পেলাই ৰুমটোৰ লগত হেৰি কৰি ড্ৰাইভাৰটোক ক'ব যে এই দহখিনি যোৱা তাৰপাছত এইটো লৈ এনেকে তোমাক দিলা খানালে নি মন কৰি আহি আছে যাব পাৰে নাই এখন থাকি গ'ল ঘৰ
না কাঠখন থাকি গ'ল গাড়ীত কি গুচি গ'ল ফচকে মাইনদা আৰু মাজত কেইটামান মুহূৰ্ত তাৰপিছতে কোনে মাৰিব সকলো কেইবাগৰাকীও ঘাই প্ৰকাই নেতাৰ এবাৰ এই 5টা বিধানসভা সমষ্টিত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। কাৰণ জালুকবাৰীত ইয়াতে হ'ব, জালুকবাৰীত সকলোৱে জানে যে জালুকবাৰীত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নিজে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী। ইয়াৰ উপৰিও গুৱাহাটী চেণ্ট্ৰেল এইবাৰ চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ আছে। এফালে বিজয় গুপ্তা আৰু আন এগৰাকী যিহেতু যুৱপ্ৰজন্মৰ প্ৰাৰ্থী ইয়াৰ উপৰিও নিউ গুৱাহাটীত বিধানসভা সমষ্টি আছে। নিউ গুৱাহাটী বিধানসভা সমষ্টিত এবাৰ তেওঁক প্ৰত্যক্ষ কৰা হৈছে। ইয়াৰ উপৰিও শান্তি কুমাৰক তেওঁ যিহেতু কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা তেওঁক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হৈছিল। ঠিক তেনেধৰণে দিছপুৰ বিধানসভা সমষ্টিটো বিশেষকৈ চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈছে। কাৰণ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ যি কংগ্ৰেছৰ নেতা আছে তেওঁৰ ক্ষেত্ৰৰ নিশ্চিতৰূপে তেওঁ আহি বিজেপিৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব বিজেপিলৈ ইয়াৰ বিজেপিৰ পৰা আঁতৰি গৈ ঠিক তেনেধৰণে ডিমৰীয়াত যিহেতু অসম পৰিষদৰ ডিমৰীয়া সমষ্টিত দিয়া হৈছিল। তেনেধৰণে এই 5টা বিধানসভা সমষ্টিৰ ভোটগণনা 8 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। 8 বজাত গোটেই যিবোৰ যি পোষ্টেল বেলট আছে, পোষ্টেল বেলটৰ গণনা আৰম্ভ হ'ব 8 বজাৰ লগে লগে। যাৰ কাৰণে মতিৰাম দেৱান কেন্দ্ৰৰ যি ষ্ট্ৰংৰুম আছে সেই ষ্ট্ৰংৰুমৰ বাহিৰত আৰু ভিতৰত বিশেষ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। ইয়াত যিসকল দলৰ ফালৰ পৰা আৰু নিৰ্বাচন আয়োগৰ ফালৰ পৰা যিসকল বিষয়া নিয়োগ কৰা হৈছে তেওঁলোকৰ কাৰণে ব্যৱস্থাসমূহ গ্ৰহণ কৰা হৈছে। আৰু পৰিৱেশটো এই
ড্ৰাইভাৰ কি ভাবিছে এনচুট কেলা তুমি নিৰ্দিষ্ট এটা জেগা লৈ যোৱা বাইকমেনবিলাক কেলা বিপদবিলাক আগত গুচি যায় নহয় কেলা ठीक है ডাঙৰ খোলা বেগ এটা ধৰিবলৈ আপুনিও কৈ থাকে হ'ব দিয়ক ৰাখক ইমান কওক না হ'ব দিয়কচোন আপুনি মোক আহি পেলাই ৰুমত আহি লৈ পেলাই ডাঙৰ বেগ এটা আছে লৈ আপুনি কেলে আপুনি অকল শিকাই আপোনাক দেখাতে ইমান আৰু মইতো লাইভত আছোঁ কাম কৰি আছোঁ আপুনি ইমান কৈ থাকে কেনেকৈ কৰিম দিয়ক কৈ দিয়ক দি পেলাই আপুনি আহক কৈ আছোঁ ইমান দাদা এই লাইভত আছে আপুনি কেমেৰা পাৰ্চন লৈ আহিছেনে
अभी तो पोस्टल बैलेट चल रहा है। पोस्टल बैलेट का काउंटिंग चल रहा है और मेरा उम्मीद है कि मैं पहला राउंड से जीतूंगा और शिवसागर कॉन्स्टिट्यूएंसी में भारी वोटों से मैं जीतूंगा। इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा खिलाफ जितना कैंडिडेट है सब लोग जितना वोट मिलेंगे उससे ज्यादा वोट मिलने का मेरा भरोसा है। तो इसीलिए शिवसागर में तो मैं जीतूंगा। तो सारा असम में हम लोग का उम्मीद है कि इस बार 70 से ज्यादा सीट लेके हम लोग अपोजिशन पार्टीज हम लोग जीतेंगे और हम लोग जीत के इस बार अपोजिशन अलायंस का हम लोग का गवर्नमेंट होगा। बीजेपी का ऊपर लोग पूरा नाराज है। आप लोग जानते हो कि सिर्फ कम्युनलिज्म के लिए सिर्फ नहीं, लेकिन उस लोगों का जमाना में जो महंगाई जिस जैसे बढ़ गया है और बीजेपी का जमाना में असम में पूरा डेमोक्रेसी को पूरा खत्म कर दिया। लोगों का कोई हक नहीं है, कोई कुछ नहीं बोल सकता है। पूरा डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर को पूरा ऑटोक्रेटिक एटमॉस्फेयर बना दिया है और लोगों का जो बिजनेस है ये बिजनेस पूरा खत्म हो चुका है। तो इसीलिए लोग पूरा नाराज है। ये बीजेपी गवर्नमेंट का खिलाफ, बीजेपी का खिलाफ लोग नाराज है और इसीलिए इस टाइम नरेंद्र मोदी जी का कोई वेव नहीं है, हिमंत बिश्व शर्मा का कोई वेव नहीं है। इसीलिए लगता है कि आज का जो काउंटिंग है इस काउंटिंग से हम लोग जीत पाएंगे। अपोजिशन अलायंस का 70+ सीट में हम लोग का जो ही होने का चांस है और हम लोग गवर्नमेंट बनाएंगे। देखिए, मैं सिर्फ अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी का ही नहीं, सारा असम में मैं खबर कर रहा हूँ। सारा असम में जो माहौल है, ये माहौल ये स्पष्ट करते हैं कि बीजेपी का नेतृत्व में ये तीसरा बार लगातार सरकार हो रहे हैं और सारे असम में जैसा खबर आया है, फीडबैक आ रहा है, हम भी मॉनिटर कर रहे हैं और मेरा अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी का काउंटिंग यहाँ हो रहा है। तो ये बस तय हो चुका है कि बीजेपी का नेतृत्व में सरकार होगा यहाँ में। लेकिन बोल रहे हैं कि 3 गुना का होगा तो 2 का बीच फाइट हो सकता है। नहीं, इलेक्शन तो हमेशा ऐसा ही। अभी तो देखिए, मैं सिर्फ अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी का ही नहीं, सारा असम में मैं खबर कर रहा हूँ। सारा असम में जो माहौल है, ये माहौल ये स्पष्ट करते हैं कि बीजेपी का नेतृत्व में ये तीसरा बार लगातार सरकार हो रहे हैं और सारे असम में जैसा खबर आया है, फीडबैक आ रहा है, हम भी मॉनिटर कर रहे हैं और मेरा अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी का काउंटिंग यहाँ हो रहा है। तो ये बस तय हो चुका है कि बीजेपी का नेतृत्व में सरकार होगा यहाँ में। लेकिन बोल रहे हैं कि 3 गुना का होगा तो 2 का बीच फाइट हो सकता है। नहीं, इलेक्शन तो हमेशा ऐसा ही होता है। 3 कोना होता है, 4 कोना होता है, 2 कोना होता है। तो सब्र कीजिए। एग्जिट पोल के अनुसार आप क्या देखते हो अभी आके? एग्जिट पोल का क्या बात है? एग्जिट पोल तो हो ही गया 3-4 दिन पहले। उसके अनुसार जो आपने यहाँ आया उसको क्या देखते हैं? बीजेपी का सरकार आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। हमारा दिल्ली में माता है फेस टू फेस लाइव लंगा तो আহিব একবার মাইক দিব আমরা তো রাতে আমরা
আৰু দিবা গাইকে ৰ গুৱাহাটী চেণ্ট্ৰেল অৰ্থাৎ মধ্য গুৱাহাটী সমষ্টি আৰু এই মধ্য গুৱাহাটী সমষ্টিৰ এইখিনি আকৰ্ষণীয় ক্ষেত্ৰত হৈছিল যে এগৰাকী প্ৰতিনিধিত্বত অৱতীৰ্ণ হৈছিল এইবাৰ অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী কীৰ্তি চৌধুৰীৰ এগেইনষ্টত যিহেতু বিজয়যুক্ত প্ৰাৰ্থীত্ব প্ৰদান কৰা হৈছিল আৰু অঞ্চল লাভ কৰিছিল বিজয়যুক্ত প্ৰাৰ্থীত্ব আৰু হেল্ল' ড্ৰাইভাৰটো কথা নাই ড্ৰাইভাৰটো এইটো ৰাস্তাত আহিব পাৰিব এইটো ৰাস্তাত আহিব পাৰিব গুৱাহাটী মেট্ৰ' এইটো বেয়া জেগা ৰখি আছে মাছ দিব নোৱাৰা ন মাছত অকণমান চাইডত আহিব চিনি নাপাওঁ অকণমান চাইডত নামটো কৰিলে বেয়া হয় এই পকেটে ইয়াক অকণমান চাইড কৰি দিয়কচোন এই কেতিয়াবা পৰা ৰখি আছে এনেই বেকাৰ চাইড কৰি দিয়কচোন ইয়াক এইটো আগত অকণমান চাইড হৈ দিয়কচোন আমাৰ যিটো কৰিছা সেইটোকে কৰি আছো বাহিৰত হা কাঠখন ৰুমৰ দিয়ে নহয় তই হেল্প কৰিবি তোৰ ফোন মাৰি ভকতা অকণ হেল্প কৰ মই পিন্ধি আহি আছো পিন্ধি আহি আছো হেল্প কৰি जी
शांतनु बोरा, मैं न्यू गुवाहाटी कॉन्स्टिट्यूंसी का कैंडिडेट हूँ कांग्रेस का। इस बार असम की जनता चाहती है कि एक क्लीन इमेज के व्यक्ति सीएम बने और कांग्रेस के लीडर गौरव गोगोई जी को वो सीएम देखना चाहते हैं। कांग्रेस का एक सरकार चाहते हैं, एक स्टेबल सरकार, जो सरकार भ्रष्टाचारी ना हो, जो सरकार लोगों के बारे में सोचे, लोगों के मन के बारे में सोचे और लोगों के लिए काम करे। तो वैसा एक सरकार असम की जनता चाहती है। न्यू गुवाहाटी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी कांग्रेस को चाहती है। लोगों के बीच हम गए, लोगों को हमने बोला कि हमारा प्लान क्या है गुवाहाटी के लिए, और गुवाहाटी के लोग हमें चाहते हैं कि हम आगे बढ़े, हम एक अच्छा सरकार बनाएं और स्टेबिलिटी लाए स्टेट में। एग्जिट पोल ने अपना काम किया है, हम अपना काम कर रहे हैं और लोगों ने अपना काम किया है। एग्जिट पोल ने शायद कोई सैंपल लिया होगा, लेकिन हमें विश्वास है कि इस बार हमारी जीत है। हमारे नेता गौरव गोगोई जी मुख्यमंत्री बनेंगे और एक साफ सुथरी सरकार गुवाहाटी के लोगों को मिलेगा। वो कुछ भी बोल सकते हैं, अभी काउंटिंग शुरू होने वाले हैं, तो काउंटिंग के वक्त हमको पता चलेगा कि हम कितने मार्जिन से हम जीते, कहाँ कहाँ हम जीते, और हमें यकीन है कि हमारी सरकार होगी। यही हमारे कॉन्फिडेंस है। आप काउंटिंग हल के बाहर आ रहे थे, विजय गुप्ता जी, सर कितनी उम्मीद है और मतगणना की प्रक्रिया अभी शुरू हुई नहीं है। हम आश्वस्त पहले भी थे, आज भी हम आश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तृतीय बार सरकार असम में बनने जा रही है। किस आधार पर ऐसा मान रहे हैं? आधार हमारे पास कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा समूह है। हमारे बूथ के अंदर 50-50 लोग होते हैं। एक एक कार्यकर्ता 60 वोट 12 घरों को देखता है। तो हमारे पास एक एक कंस्टिट्यूएंसी में 3000 लोग हैं और प्राय 4 लाख हमारे पास में ग्राउंड में कार्यकर्ता होते हैं। तो वो असेसमेंट करते हैं, वो भी असेसमेंट करते हैं। जैसे आज मीडिया आज एग्जिट पोल देती है, तो उनका जो साइज है वो छोटा होता है, 10,000 का होगा, 20,000 का होगा, 50,000 का होगा, उससे ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन हमारा जो है एक कंस्टिट्यूएंसीज में 3,000 प्लस है, और उसके अलावा भी हमारे पास में ढेर सारे हमारे भी सर्वे हैं, हमारे पास में भी असेसमेंट्स हैं, विशेषकर हमारे कार्यकर्ता हैं और हमारी भी अपनी एजेंसियां हैं। एग्जिट पोल के हिसाब से क्या लगता है, आपको खुद देख के आए? एग्जिट पोल के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी उससे भी ज़्यादा परफॉर्मेंस करने जा रही है। 90 प्लस हमारा विचार, एनडीए की सरकार 90 प्लस। लेकिन लक्ष्य तो आप लोगों ने सर 100 का रखा है। तो अभी तो स्टार्ट है, काउंटिंग स्टार्ट होने जा रहा है। लक्ष्य हमने 100 का रखा है। हम आश्वस्त हैं 90 पर। अगर बैलेट बॉक्स खुलेगा, ईवीएम खुलेगा, तो वो 100 हो भी सकता है। कांग्रेस ने जिस तरीके से आरोप लगाया, क्या लगता है वोटों को प्रभावित कर पाया वो? आरोप, जनता आज के दिन में जागरूक है। वी आर लिविंग इन द एरा ऑफ द कंपटीशन एंड कंपेयर एंड एआई। जनता जानती है, जनता देख रही है कि कौन जो है विकास और उन्नयन कर रहा है। जनता देख रही है कौन असम को सुरक्षित रख सकता है। जनता देख रही है कि असम को आत्मनिर्भर कौन बना सकता है। इसलिए जनता हमारे साथ है, इसलिए हम आश्वस्त हैं। आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी में देखा गया तो जेनजी बहुत ज्यादा रहता है, तो आप जेनजी हमारे साथ है। मैंने जब मीटिंग किया तो हमने 5 मीटिंग किया, 5 मीटिंग में 500 लोग हमको मिला। 4 में तो बहुत संख्या थी, एक थोड़ी बारिश की वजह से कम हुई थी। तो हमारे पास जेनजी बहुत हैं। हमारे रैलियों में आप देखेंगे तो जेनजी लड़के लड़कियां बहुत अधिक संख्या में हमारे साथ थे। आप अभी जो अंदर में जो अभी आ रहे देख रहे हैं, क्या लगता है कितना सीट पे आने का चाहते हैं आपका? 90 से ज्यादा सीट
हम असम में लेके आएंगे। कांग्रेस भी बोला है कि 80-90 सीट मिलेंगे सर, इसका ऊपर क्या बताना चाहेंगे? बोलने का उनका अधिकार है, वो बोलते रहेंगे और हम काम करते जाएंगे। वो बोलते हैं और हम काम करते हैं। নহয় আপোনাক লোৱা নাই, আপুনি চিকিউৰিটি চিকিউৰিটিটো বনাব লাগিব।
পালেগৈ দুই নম্বৰ ৰুম হা ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰ খোলা বেগটো এই ৰাইট চাইডে চাব আপোনাৰ হালধীয়া কাগজখন মোক গৈ পেলাই ৰুমৰ পৰা ফোন কৰিব কিমান টাইম লাগিব ঠিক ঠিক এখন নকুলদার আপনাদের তাতে কি Hey, apa ya? Lagi nih. আমি তো এসে ছোট ছোট পাইছি এগুলো তারে আছে পাতগুলো কোন হইলো মই কৈছো খালি আহিছো মই কৈছো হোটেলৰ পৰা লৈ লো নাই নাই খালি সোমাইছে মই কৈছো ওলালে বা বাইক দিব ওলালে ওলাই নাই এই 2 নম্বৰ ৰুম হা ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰ তাত চাব বৰ্ডৰ ওপৰত লিখা আছে 2 নম্বৰ আপুনি ৰুম পাই পেলাই কৰিব এই হালধীয়া নিচিনা কাগজখন অকণমান স্পীডত যাব বাইদেউ বেয়া নাপায় বেছিকৈ চাপৰি
अभी तो पोस्टल बैलेट चल रहा है, पोस्टल बैलेट का काउंटिंग चल रहा है और मेरा उम्मीद है कि मैं पहला राउंड से जीतूंगा और शिवसागर कॉन्स्टिट्यूएंसी में भारी वोटों से मैं जीतूंगा, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा खिलाफ जितना कैंडिडेट है सब लोग जितना वोट मिलेंगे उससे ज्यादा वोट मिलने का मेरा भरोसा है, तो इसीलिए शिवसागर में तो मैं जीतूंगा। तो सारा असम में हम लोग का उम्मीद है कि इस बार 70 से ज्यादा सीट लेके हम लोग अपोजिशन पार्टीज हम लोग जीतेंगे और हम लोग जीत के इस बार अपोजिशन अलायंस का हम लोग का गवर्नमेंट होगा। बीजेपी का ऊपर लोग पूरा नाराज है। आप लोग जानते हो कि सिर्फ कम्युनलिज्म के लिए सिर्फ नहीं, लेकिन उस लोगों का जमाना में जो महंगाई जिस जैसे बढ़ गया है और बीजेपी का जमाना में असम में पूरा डेमोक्रेसी को पूरा खत्म कर दिया। लोगों का कोई हक नहीं है, कोई कुछ नहीं बोल सकता है, पूरा डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर को पूरा ऑटोक्रेटिक एटमॉस्फेयर। Come back to our special coverage from Assam. The initial trends are ticking in, and we'll talk to Rahul about the initial trends. Rahul, how is it looking? It's it's looking very good for the BJP plus, because as of now, trends in 48 seats are available, and BJP is leading in 49. 49 has come, BJP in 40 and Congress plus in 9. But this may change over the period after the first round and the postal ballots. I think this is the trend that is showing. But I see nothing on the ECI site yet. These are all, locally sourced. Okay. But these are very initial trends, and they might be the postal votes of government employees who may be supporting the ruling party. Yes. Let's talk about Congress. How has Congress lost its vote base in Assam? Like if we look at the trend, in 2011 it was peaking at 39.4% in the 2011 Assembly election, and it is now down to, in 2021 it was down to 29.7. Has like why is it the case? See, there are, I think we can break it down into 4 regions, especially in the tribal areas, in Barak Valley, in Upper Assam, that is mostly what we call the T tribes, who have around 18 to 20% of the voting strength, and the Muslim-dominated areas. See, the trend, because at that time, after 2005, after the IMDT Act was abolished, which was, said to be pro-immigrants, the All India United Democratic Front came up that year. And this party was the main reason why the Congress base in the Muslim-dominated areas got eroded. And over the period of time, around the time of the 2014 elections, the T tribe vote, which was said to have been loyal to the Congress, it just gravitated towards the BJP. So maybe it was because of the Modi wave or promises made to increase the daily wage to around 450 rupees from the existing levels. These were some of the factors that affected the whole prospects of the Congress. But then when you look at analyze the percentage, vote percentage, the difference between the BJP since 2016 and from 2016 to 2021, the difference is not very much. It's just how the BJP has clinched most of the seats. Otherwise, when you consider the voting percent, there is only a difference of 1 or 2% every year. So these are the 4. The Barak Valley has always been
BJP stronghold for since the 2016 election, and the tribal votes have also shifted from the Congress to the BJP. And these are the main factors. And the AIDF, it is not doing well. According to trends, the AIDF is trailing. It has, in all the Muslim-dominated areas, the charm of the AIDF seems to have evaporated as of now. Because the Congress candidates mostly are from these areas that are leading. So these are the few factors that will, impact the results. If you recollect the 2024 Lok Sabha election results, the AIUDF vote bank seemed to have moved to the BJP Congress. Yes. Like, will it be the same thing? Like, is it because of why is it happening? Because I think the Muslims, mostly who were with the AIDF, they also realized that the AIDF in the long run will not be beneficial for them as far as the national level or the state level interests are concerned. And at the same time, the AIDF and particularly its president is seen as very pro-BJP, or maybe some of the acts that they have done, some of the equation, for example, being in the alliance, Congress alliance in 2021 and then getting out of it. So there are certain things, there are certain events that have indicated that the BJP may have some, AIDF may have some kind of understanding with the BJP. This message has also gone across to a lot of people. So, is the politics of Assam turning into a bipolar nature, like where the two national parties will be the main contenders? Yes, it has always been the case. And then, if you analyze the results, most of the elections have never been a close contest because they have usually been one-sided in favor of whether Congress on its own or with allies, or BJP and its allies. So it has always been one-sided. So this election is also heading that way. But it seems from the earlier thing. But after the Antica protests, some new regional parties came up, like Rajya Dal and Assam Jatiya Parishad. So, I mean, have they been able to garner supporters, say in Upper Assam regions, or people have stuck to the BJP or the Congress? Yes, going by the 2021 result, they have not made much of an impact, except for Rajya Dal. Maybe the Assam Jatiya Parishad has not had that kind of impact, but then they have done well. They did, some of the candidates, particularly the president, Lurinjyoti Gogoi, did perform well against Sarbananda Sonowal in the Dibrugarh constituency in the Lok Sabha elections. Otherwise, they have a few good candidates, strong candidates this time. But I don't, only the time will tell whether they will have some kind of impact or not. They have not, so the Ka was momentary, anti-Ka movement was momentary. And then there were certain figures that were being floated about. For example, people were told by the opposition parties that 2 crore Bangladeshis would come in and become citizens of India from Assam. But at the end of the day, the BJP was able to deflect this theory. And because as of now, I think only 6 people or 4 or 6 people have got citizenship till as of date. So this was not much of it. This eventually did not become much of a factor. Like, if you recall, what would be the one key issue that played out during this election? Was it the anti-migration narrative or development? Anti-migration narrative to some extent, because see, in the eastern part of Assam, it doesn't. That isn't much of a factor because the migrant or the so-called the Mia population, that is the word that is used for Bengali-speaking Muslims or Bengal origin Muslims,
they are not much of a factor in the eastern part of Assam or in the hills or in the, yes, they are a factor in the Bodoland Territorial Council because they are the second largest voters in almost all the constituencies. And in Barak Valley they are. But then Barak Valley Muslims are not called Mias. They are not considered Mia because they were, they are residents. They are not migrants mostly. So they are a factor. But then I think the development agenda, that has worked a lot. Because wherever you go in Assam, all these, infrastructure, the roads, the bridges, everything is visible. Then you have this semiconductor unit that is coming up pretty fast. There was it has come up on the space of a defunct paper mill. So these are something that people see, and this also shows that Assam is headed for the future. This is the impression that is being given to the people. So this is one factor, and then just a minute. This has been one of the major factors. This development agenda. Like Guwahati has transformed into a city of flyovers. Yes. Take us through the politics of Guwahati, where Himanta is eyeing a sixth term from Jalukbari. He's facing a young opposition candidate in Vidisha Niyok. And then there is the Gen Z candidate, Kunki Chaudhary from Guwahati. Yes. How is the politics of Guwahati? So politics of Guwahati is, people have seen development, but at the same time, these flyovers, there are issues about the design of these flyovers, and the quality. People, talk about the quality, whether they have been developed too early, too fast. So, and then the problem of waterlogging, and this is a major factor because all these constructions are happening, but at the same time, the drainage system has not improved that much. And then the flyovers are there, but to some extent, for some certain time when you are on the flyover, it's fine. But then when you approach them or you come down, things are back to square one. So these are some of the. But I am not sure how much will the Gen Z will impact because because there are quite a lot. As far according to the election commission, so the first time voters to 18 to 19 years, they are 6,42,314, and those beyond from 20 to 29 are 66 lakh, so almost 67 lakh. So they might be a factor, but then at the same time, I am not sure how much of an impact it will have because Gen Z or the Gen Z is the main, population block that is also involved with the issue of Zubin Garg and the justice to him. But so far as the trends are going, so I don't think they have impacted much these issues. But the the youth seems to be back. I mean, like they were when the Zubin Garg case happened. There was lot of angst against the BJP government. Did it continue till the election? Will it be a factor? No, it continued till the election, but at the same time, I think the government also, particularly the chief minister, also sent across a message that they are handling it through the court. And although the chief minister has been changing his statements a lot, but at the end of the day, I think the message has come across that the government is handling it, and it's up to the courts to decide now. So these are, this. So I'm not sure how much of an impact it will have. But then, Assam and the Northeast in general, people tend to be very emotional. So at the heat of the moment, the things happen. But then over a period of time, things settle down. So this is an issue, but how much it will impact going by the trends, I don't think it has impacted much.
because at the same time, this before the election, the Zubin Garg Kshetra, that is around 30 kilometers, 25 kilometers from Guwahati, where he was cremated. The construction work started there also. So this was one of the major demands for a lot of people. So just a minute. Yeah. How big is the Mama factor? Himanta Biswa Sarma in Assam. Mama factor, it's pretty big. When you that's another thing. Like when you talk about Gen Z, so I think situation on the ground is quite different from the situation on social media, because you find a lot of people spewing venom or commenting on social media, but then on the ground it's pretty difficult, because there are, as you are aware, Assam has a scheme, Arunodaya scheme. There are 40 lakh women beneficiaries and the families are beneficiaries. Then they give a stipend for the youth to study. And there is a lot of schemes for free education in schools and universities and colleges. So these are factors that also count. So these, I think, override these Gen Z angst or whatever you call them, because the people who would be, very anti-BJP or against the BJP policies, I think the number is not that much. Like when you talk about the schemes, one such scheme is Nijut Moina. Through this Yes. scheme, is BJP targeting the future voters? Like this is targeted towards school children, supporting school. Officially it's not, but then you can always have a theory on it. There is also a factor that isn't talked about much. The BJP government gives annual grants to Namghars and the Satras. There are around 65 Satras, that is Vaishnav monasteries, and the Namghars in Assamese society, and even in some tribal areas. The Namghar is a prayer hall. It is a community prayer hall. It's almost in every community, and each Namghar is connected to around at least 50 families in a village. And when you multiply the number of voters, if you have 2 voters per family, then you already get 80 voters. And there are, and it gets relayed. There are thousands of such Namghars, and this is a factor that is going to work, or it has been working in favor of the BJP over the last 2 years, last 2 elections. So there are multiple factors. Okay. Let's talk about Gaurav Gogoi, who is the Jorhat MP. He is contesting against BJP heavyweight from Jorhat Assembly constituency. Yeah, the former speaker. Yes. Is the Congress, has the Congress lost its base in Upper Assam, or has it maintained its base? Will Gaurav Gogoi turn out to be the alternative? This election will be difficult to say, because even if Gaurav Gogoi turns out to be, I think the impact will be limited mostly to the Jorhat district, because going by the trends, it has not had much of an impact. And then the Congress is also hamstrung by the fact that Gaurav Gogoi is the only leader. It has become almost a single man show for the Congress and the alliance. Well, you have Akhil Gogoi in the alliance, you have Lurinjyoti Gogoi in the alliance. But for the Congress, Gaurav Gogoi appears to be the only bankable leader. And then how much of an impact it will have across the state is to be seen. So this is one major disadvantage for the Congress, because they do not have too many leaders to bank on. There's apart from him, there is the MP Rakibul Hussain. But then Rakibul Hussain does not, maybe because of his name, because of his religion, he does not, evoke that much of a connect with the people as Gaurav Gogoi does. And then the Congress
before the election, the Congress lost Pradut Bordoloi and Bhupen Kumar Bora, former president. So they have lost a few leaders over the period of time. And then BJP, as you know, is mostly former Congress leaders. But the infighting in the Congress seems to be affecting the party. Yes, it has. Also the seat sharing talks were delayed. Yes, it was delayed, and that impacted a lot because Akhil Gogoi and Rajor Dol, they were undecided. They were playing along. Mostly, whether they would come to the alliance or will fight alone, it was undecided until the last moment. And I think they did not have much time to prepare for it as an alliance. So that's it. Does the Rajya Dal have significant support on the ground, or is it only on social media? Rajya Dal and AJP. It has some support, but then in very limited areas, not too wide to be much of a factor. Because it doesn't translate into seats. And then because if you are aware, there are a few Congress leaders, the Muslim Congress leaders, they were from the so-called Mia community. They joined Rajor Dal, and one of them was made a candidate of the Rajor Dal, and that was Sherman Ali Ahmed, who happens to be my college batchmate also. So Sherman Ali Ahmed, they gave a ticket to Sherman Ali Ahmed from the Mondia Council, and then they cancelled the ticket because Assam is, to some extent, you can say that Assam is a divided society on religious lines. It's highly polarized over the last 10 years. So this gave an impression that the Rajya Dal may be warming up to the Mia voters or the Muslim voters. So this is a handicap for the Rajya Dal. And then and Sherman Ali Ahmed, he did not get a ticket, and he joined the Trinamool Congress. And Trinamool Congress may get a toehold because of him at Mondia constituency. So he's a pretty strong candidate because he has been winning a series of elections on Congress ticket. Congress suspended him last time. So he joined the Rajya Dal ahead of the election, few days ahead. And then in a fortnight, he left the Congress and Rajya Dal and joined Trinamool Congress. So, but who are the main supporters of the Trinamool Congress? Mostly Bengali speakers, or they have supporters among Assamese speakers? Among Assamese speakers, I doubt they have too many supporters. Mostly the Bengali speakers and primarily the Muslims. Okay. Like the initial trends from the official sources say the BJP is leading in 13, the Congress in 2, the BPF in 2, and the AGP in 1. What do your local sources say? BJP alliance leading in 60, Congress in 13, and AIDF in 1. So will it be the first election where the Congress will cross the magic figure on its own? Though it has Congress? 64 in the assembly. Oh, no, now. you mean the BJP? I mean, sorry, the BJP. BJP, let's see, because in both elections, in 2016 and 2021, BJP had identical number of seats, 60. So they may cross. If the trend is maintained till the end of the counting. So you never know, over the next few rounds, the scenario may change. But then if this trend continues, I think they are in a position to. And by the way, this election will be, I think, for two parties, it will be very crucial about their existence and about the future. One is the AIUDF. Because if you recall, there was another party before AIUDF, which was mostly minority based. That was the United Minorities Front. It also had a pretty good run initially, but then after 20 years, it fizzled out.
It is nowhere now. The party got disbanded. Mhm. So I think it shows the trends suggest that the AIUDF is headed the same way, continuing from the Lok Sabha election. And the other party is the AGP. AGP, I think from a major party, it has become a side player of the BJP. And the BJP became a major force after it aligned with the. In fact, it is said that the AGP, cleared the path for the BJP to rule. That was in 2001 election when they aligned with the BJP. I think BJP, AGP started creating the base for the BJP to eventually rule and make it a side player or a smaller partner. And most of the constituencies that the AGP got are all in half of them are in Muslim-dominated states, and the performance of the AGP will, it is very crucial this election. Whether it will remain in the long run, whether in the Assamese belt, in the Assamese areas, where it was supposed to be a major party of the Assamese people or the greater Assamese society. So it has fallen from that plan. Now, whether it will be able to sustain itself, this election result will go a long way. Does it signify a decline in Assamese regionalism? To some extent, yes. Some extent, yes. Like, Because what does it? because some other players have come in, the Rajordol and the AJP. The AJP has not yet shown its electoral because it has not been able to do so electorally. The AGP, the Rajordol did, but only in one seat. If it is able to expand its number, even if it does well, even if it gets 2 to 3 seats, I think Rajordol may be shaping up to be a stronger regional player. And if you remember before the election, the chief minister already said that there will be only in 2029. Is it or the next election? That is 2030, I think. 31. 31. So the main contest between the BJP will be with the Rajordol, because he also said because all the Muslims will come over to the Rajordol from the Congress and the AIUDF. So I think they still have a long way to go. But has Hindutva nationalism overtaken regionalism, Assamese regionalism, like in terms of electoral prospects? Yes, it appears to be, because this society is, whether you like it or not, when you go on the roads, this Mia or the aversion to the Mia, the word, is quite apparent on the streets. So I think, and then you cannot only say Assamese regionalism, because there is a lot of tribes that come in the Barak Valley. So the Hindutva wave is pretty strong in Barak Valley, because the society, it was not so earlier, because the Bengalis and Muslims and the Hindus were not so much divided in Barak Valley. Now you can feel it. They're pretty, there's a line drawn between them. You can, feel that line. And in the Boros, among the Mishings, among the Karbis and the Dimasas, the BJP has also, taken deep roots. So all kinds of nationalism and sub-nationalism, I think the Hindutva has impacted a lot. Like, is it an organic change, or it's like an engineered? It has been engineered over the years, and like now that this change is apparent in the society, or it has been there for like since the after I think it's a blend of both, because in Assam, that anti-outsider, anti-foreigner, anti-immigrant, and anti-Bangladeshi, because the Mia, this Mia word today used to be Bangladeshi at one point of time, and then
foreigner or illegal immigrant. So these are various terms used for the same community. So I think, can you repeat that question? I mean, like, is it an organic change or it has been It's, engineered? it's a blend of both, because this has been, I think, somewhere in the psyche among the indigenous people. Let's not talk about Assamese, or because that word has not been defined yet. So among the indigenous communities, that has been somewhere in the psyche that, this the Muslims, the Bengali speaking Muslims, or the migrant Muslims are taking over the land and the culture, and affecting the culture, taking over. The population is growing. They are, the fear that someday they will outnumber them. This has been, I think, for the last 60, 70 years, this feeling has always been there. I think the BJP has cashed in on that feeling, and then some kind of engineering has come in thereafter. But in terms of numbers, it doesn't look to be the case. But people, it has attracted people that as a poll prospect, mostly in central Assam and maybe upper Assam region. Yes. Because BJP, because apart from this, identity politics, BJP has also, juxtaposed this along with the development agenda. Because when you go to the Muslim areas, in certain areas, it's not that the development has been only one-sided, or maybe only for the Hindu followers of Hindutva or the supporters of Hindutva. In Muslim areas, well, leave apart those areas where people have been evicted, but that's also pretty controversial. Even if you look at it, most of the areas that people have been evicted from are all reserved forests, and there is a certain school of people think that in the first instance, these people had no right to be living there. Anyway, that's debatable. So in Muslim areas, you find roads, you find toilets, you find houses, government houses. So it's not that they have deprived those areas in terms of development. It has been pretty, even or another beneficiaries they have. So these are the things that, I think overall the development factor and the beneficiary factor, these are coming out pretty strong. Like, if we talk about the development factors, has it flown into the Barak Valley region, or there is some sort of a lot of people there seem to feel that there is a stepmotherly treatment towards the region. Yes. Is it a factor now? Well, this Barak Valley has always been treated like that. It is not the first time, but then at the same time, I think there's some kind of development is taking place, because when you talk of the highways or the connectivity, there are certain bridges that are coming up. There are certain institutes that have been granted. This agriculture institute in Hailakandi district. It's not at the same pace as the Barak Valley, but as the Brahmaputra Valley. Sorry, but then certain degree of development is taking place. But at the same time, you will also have to, take into account that after, Santosh Mohan Dev, or maybe after Kavindrapur Kasta or Mission Ranjan Da, BJP has not had very vocal leaders from that region. And to some extent, it also depends on the kind of leaders that they produce. After Parimal Shuklavat, he was the strongest leader out there, but he's now at the center. So, and I think the biggest face now is the Dr. Rajdeep Roy that is coming up from the region. It also depends on how they push the development agenda forward. And how is it in the hills, the Karbi Anglong hills? Karbi Anglong, I think, there is certain kind of degree of development, but then there is also an allegation of corruption, because the money in, and then this is an old
disease, so to say. Compared to Boreland Territorial Council, where the development, you can see the development because maybe it's a plains area, and most parts are connected. And but in Karbi Anglong and Dima Hasao, there are many remote areas where what you do and what you don't do is not always visible, clearly visible. So in capital areas, in the district headquarters areas, you can see some degree of development, but in the remote areas, you don't see anything much. So these are certain issues, but they get money, but then at the end of the day, there are a lot of corruption charges. And, many villages mostly, they are quite backward. They still remain backward. As per the initial trends, Congress, the BJP seems to be cruising ahead. Yes. And the Congress, right now it is in, as per the official records, it's in two seats, and the BJP is leading in 20, and the AGP 3, and the BPF 3. Mhm. Stay tuned to our special coverage. We will return with more. Thank you. Thank you. अभी तो पोस्टल बैलेट चल रहा है, पोस्टल बैलेट का काउंटिंग चल रहा है, और मेरा उम्मीद है कि मैं पहला राउंड से जीतूंगा, और शिवसागर कॉन्स्टिट्यूएंसी में भारी वोटों से मैं जीतूंगा, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा खिलाफ जितना कैंडिडेट्स है, सब लोग जितना वोट मिलेंगे, उससे ज्यादा वोट मिलने का मेरा भरोसा है, तो इसीलिए शिवसागर में तो मैं जीतूंगा। तो सारा असम में हम लोग का उम्मीद है कि इस बार 70 से ज्यादा सीट लेके हम लोग अपोजिशन पार्टीज हम लोग जीतेंगे, और हम लोग जीत के इस बार अपोजिशन अलायंस का हम लोग का गवर्नमेंट होगा। बीजेपी का ऊपर लोग पूरा नाराज है। आप लोग जानते हो कि सिर्फ कम्युनलिज्म के लिए सिर्फ नहीं, लेकिन उस लोगों का जमाना में जो महंगाई जिस जैसे बढ़ गया है, और बीजेपी का जमाना में असम में पूरा डेमोक्रेसी को पूरा खत्म कर दिया। लोगों का कोई हक नहीं है, कोई कुछ नहीं बोल सकता है, पूरा डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर को पूरा ऑटोक्रेटिक एटमॉस्फेयर बना दिया, और लोगों का जो बिजनेस है, ये बिजनेस पूरा खत्म हो चुका है। तो इसीलिए लोग पूरा नाराज है, ये बीजेपी गवर्नमेंट का खिलाफ, बीजेपी का खिलाफ लोग नाराज है, और इसीलिए इस टाइम नरेंद्र मोदी जी का कोई वेव नहीं है, हिमंत बिश्व शर्मा का कोई वेव नहीं है। इसीलिए लगता है कि आज का जो काउंटिंग है, इस काउंटिंग सर, अब तक के रुझानों में आप आगे चल रहे हैं जोरहाट सीट से स्पेशली। देखिए, असम में हम एक
सकारात्मक नतीजे का इंतज़ार कर रहे हैं और अंतिम राउंड तक हम लोगों का जो फीडबैक हमको मिला है वो वोटों के द्वारा उसका जो उभरेगा उसके हम नज़र रखेंगे। हर राउंड पे हम नज़र रखेंगे। पूरे प्रदेश भर में हमने विभिन्न प्रकार के ऑब्जर्वर्स हमने भेजे हैं ताकि कहीं भी अगर किसी भी राउंड में किसी भी क्षेत्र में कोई भी अगर कमजोरी दिखती है प्रशासन की तरफ से तो तुरंत हमको वो इन्फॉर्मेशन वो जानकारी हमें मिलेगी। सर, अब तक के रुझानों में पूरे असम से क्या अपडेट आपके पास है? देखिए अभी पहला राउंड ही हुआ है, इसलिए जहां तक सुबह की बात करें कि स्ट्रांग रूम से जाते काउंटिंग सेंटर तक ले जाते वक्त हमने सारे जो हमारे पार्टी के लोग हैं उनसे हमने जानकारी ली कि क्या ट्रांसपोर्टेशन में कोई कमी तो नहीं रही। हमारे मॉनिटरिंग सेंटर्स हमने हर विधानसभा में, हर जिला में, हर प्रदेश में भी, हमारे प्रदेश के सेंट्रल में भी हमने मॉनिटरिंग सेंटर्स बनाए हैं। क्या मॉनिटरिंग सेंटर्स हमारे अप एंड रनिंग हैं, क्या वहाँ पे लोग हैं, वो भी हम जानकारी ले रहे हैं। तो हमारी पार्टी की तरफ से जो तैयारी है स्ट्रांग रूम से काउंटिंग सेंटर तक और मॉनिटरिंग सेंटर के संपर्क में, वहां तक हमारी पार्टी की तैयारी संतोषजनक है। अगले कुछ घंटों तक सर आपका क्या फॉलोअप रहने वाला है, क्या रूटीन रहने? देखिए हम तो अभी पूरे प्रदेश से भी हम जानकारी लेंगे, खुद का भी विधानसभा है वहां से भी हम जानकारी लेंगे। कहीं अगर कोई कंप्लेंट आई है किसी कैंडिडेट के द्वारा या किसी विधानसभा में तो उस पर भी हमारे केंद्र में जो बैठे हुए हमारी टीम है, जो AICC की भी टीम है, वहां से भी वो तुरंत इलेक्शन कमीशन के साथ संपर्क में रहे। इस प्रकार के पूरे दिन तक हमारा ये तैयारी रहेगी। AICC ने कई जगह कंप्लेंट्स करी है, इलेक्शन कमीशन ने कोऑपरेट नहीं कर रहा है, क्या यहाँ कोई ऐसी कंप्लेंट आप लोग को अभी तक? हाँ, हमने चुनाव के समय में भी हमने किया था। हमने जब चुनाव के हो जाने के बाद, मतदान होने के बाद हमारे जो टीम्स हमने बनाए थे कि जो हर जिलों में जाकर जो स्टोरेज रूम है वहाँ पर किस प्रकार से EVM बॉक्सेस रखे गए हैं, किस प्रकार से अनयूज्ड EVM मशीन्स रखे गए हैं। और जब हमने गए तो कई जगह हमको देखा कि अनयूज्ड EVMs को बिना ताला लगाए हुए एक कमरे में उसको बंद करके रखा हुआ था। तो उस पर भी हमारे लोगों ने वहीं जाकर ऑन द स्पॉट प्रशासन को दोबारा उनको कहा गया कि रूम को सील करे। लेकिन ऐसी नौबत आनी नहीं चाहिए। हमारे जो CLP लीडर है उन्होंने भी देखा है कि कहाँ अनयूज्ड EVMs हो या स्ट्रांग रूम में जिस प्रकार की CCTV की मॉनिटरिंग हो, उन्होंने भी इंडिविजुअल ऐसे कुछ केसेस उन्होंने निकाले हैं। तो कैंपेन से लेके वोटिंग तक, वोटिंग से लेके स्टोरेज रूम में रखे गए EVMs तक कहीं कहीं जगह प्रशासन के रूप में कहीं तो हमने ढील देखी है। But you are satisfied with what's happening today, the process of election commission? Well, today, right now, we are in terms of the counting. We are only at round 1. But overall, if you see the election commission, I mean, you can clearly see that our candidates were assaulted, and yet the election commission took no action. We spoke of various officers who were acting as almost as agents of the BJP government, and yet no action was taken against them. So when you have this kind of environment, I think that does not look good upon the election commission, and that is why the reputation of the election commission is where it is today. Sir, what distinguishes your connect with Jorhat voters than your opponent? As we have seen that you and Hitendranath Goswami both are from Jorhat. So ऐसा क्या डिफरेंस है कि लोग आपको वोट करेंगे और उनको नहीं? ऐसा क्या की इश्यूज है? देखिए, अब तो देखिए वोट मांगने का समय तो खत्म हो गया है। अब तो लोगों ने वोट दे दिया है, अभी काउंटिंग चल रहा है। So we are just looking at round by round what are the results of the different wards of Jorhat town, what is round by round, what is the feedback that we are getting from the rural areas of Jorhat, and that will give us an indication of how and why people have voted. Thank you. नहीं, ये जॉइंट के बाद इंडिविजुअल कैसे हो सकता है? जा ओके, थैंक यू कांग्रेस
দাদা দাদা ঠিক ঠিক হয়ে গেল তো দাদা वैसे माइक बिना माइक की बात करिए दे दो माइक दे दो माइक दे दो बात करना कर लो माइक के लिए माइक के लिए बात कर लो चलो चलो सबसे पहले अपना नाम बताइए। चंद्र दौलदार। आज बीजेपी ऑफिस का जो किचन है गुवाहाटी में हेडक्वार्टर में आइटम क्या क्या है? आज आप सुबह ब्रेकफास्ट है। ब्रेकफास्ट में आपका पूरी सब्जी, आपका बिलाई टॉप, साइज रेटी और अपना आपका मिल्क टी, अब जिलापी भी है, जिलापी है, कचौरी है। और दोपहर में लंच में आपका दाल फ्राई, प्लेन राइस, आपका सब्जी, मिक्स सब्जी, आपका आलू मटर पनीर, आपका हो गया चावल पूरी। हाँ चावल पूरी भी है। राइस, प्लेन राइस, पूरी भी है। मिठाई वगैरह नहीं है। जलेबी कितना बना रहे हैं? मिठाई वगैरह जिलापी है,
जिला पे आपका 3000 आदमी के लिए जिला भी बन रहा है 3000। अभी मैं देख गया हूँ, अभी 8 बजे का बाद शुरू हो गया है। अभी मेन काउंटिंग हॉल में आऊँगा मैं अभी देखने के लिए वहाँ का क्या हाल है। और इस बार तो हम समझते हैं कि बीजेपी ने असम का पब्लिक को धोखा दिया है, जैसे सारा भारत का लोग को दिया है। अच्छा दिन का जगह में बहुत बुरा दिन आ गया है। अभी गैस का दाम बढ़ गया, पेट्रोल का बढ़ गया, एसेंशियल आइटम्स का बढ़ गया। इसीलिए 10 साल का जो वादा था, ये वादा सहन किया है। असम के लिए स्पेशल बताया था, जाति माति भेदी रखूँगा, यहाँ का सही जनगोष्ठी को जनजातिकरण करूँगा, टी गार्डन का वाइजेस दूंगा, अनएम्प्लॉयमेंट सॉल्व करेंगे, बाहर का इशू को टैकल करेंगे। ये कुछ भी नहीं हुआ जो उन्होंने बताया था अपना दृष्टि पत्र में। तो इसीलिए मैं ये जो लगता है अभी जो 10 साल का समय दे दिया था स्टेट गवर्नमेंट को, तो जो उसका वादा था पूरा वादा से अभी टर्न बैक किया है। इसीलिए नया एक सरकार के लिए पब्लिक का उम्मीद है। वही मैं सोचता हूँ कि इस बार विपक्ष का अच्छा होगा। अभी तो पोस्टल बैलेट चल रहा है। पोस्टल बैलेट का काउंटिंग चल रहा है और मेरा उम्मीद है कि मैं पहला राउंड से जीतूंगा और शिवसागर कॉन्स्टिट्यूएंसी में भारी वोटों से मैं जीतूंगा। इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है।
मेरा खिलाफ जितना कैंडिडेट्स है सब लोग जितना वोट मिलेंगे उससे ज्यादा वोट मिलने का मेरा भरोसा है। तो इसीलिए शिवसागर में तो मैं जीतूंगा। तो सारा असम में हम लोग का उम्मीद है कि इस बार 70 से ज्यादा सीट लेके हम लोग अपोजिशन पार्टीज हम लोग जीतेंगे और हम लोग जीत के इस बार अपोजिशन अलायंस का हम लोग का गवर्नमेंट होगा। बीजेपी का ऊपर लोग पूरा नाराज है। आप लोग जानते हो कि सिर्फ कम्युनलिज्म के लिए सिर्फ नहीं, लेकिन उस लोगों का जमाना में जो महंगाई जिस जैसे बढ़ गया है और बीजेपी का जमाना में असम में पूरा डेमोक्रेसी को पूरा खत्म कर दिया। लोगों का कोई हक नहीं है, कोई कुछ नहीं बोल सकता है। पूरा डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर को पूरा ऑटोक्रेटिक एटमॉस्फेयर बना दिया और लोगों का जो बिजनेस है ये बिजनेस पूरा खत्म हो चुका है। तो इसीलिए लोग पूरा नाराज है। ये बीजेपी गवर्नमेंट का खिलाफ, बीजेपी का खिलाफ लोग नाराज है और इसीलिए इस टाइम नरेंद्र मोदी जी का कोई वेव नहीं है, हिमंत बिस्वा शर्मा का कोई वेव नहीं है। इसीलिए लगता है कि आज का जो काउंटिंग है इस काउंटिंग से हम लोग जीत पाएंगे। अपोजिशन अलायंस का 70+ सीट में हम लोग का जयी होने का चांस है और हम लोग गवर्नमेंट बनाएंगे। देखिए, मैं सिर्फ अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी का ही नहीं, सारा असम में मैं खबर कर रहा हूँ। एक सारा असम में जो माहौल है, ये स्पष्ट करते हैं कि बीजेपी का नेतृत्व में ये तीसरा बार लगातार सरकार हो रहे हैं और सारे असम में जैसा खबर आया है, फीडबैक आ रहा है, हम भी मॉनिटर कर रहे हैं और मेरा अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी का काउंटिंग यहाँ हो रहा है। तो ये बस तय हो चुका है कि बीजेपी का नेतृत्व में सरकार होगा यहाँ में। लेकिन बोल रहे हैं कि 3 कोना का होगा तो 2 का बीच फाइट हो सकता है। नहीं, इलेक्शन तो हमेशा ऐसा ही होता है, 3 कोना होता है, 4 कोना होता है, 2 कोना होता है। तो सब्र कीजिए। एग्जिट पोल के अनुसार आप क्या देखते हो अभी आके? एग्जिट पोल का क्या बात है, एग्जिट पोल तो हो ही गया 3-4 दिन पहले। उसके अनुसार जो आपने यहाँ आया उसका क्या देखा? बीजेपी का सरकार आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। हमारा दिल्ली में माता है फेस टू फेस लाइफ लंगा दिलो আহিব একলগ মাইক দিব আমরা তো রাতে গুৱাহাটী চেণ্ট্ৰেল অৰ্থাৎ মধ্য গুৱাহাটী সমষ্টি আৰু এই মধ্য গুৱাহাটী সমষ্টিটো এইখিনি আকৰ্ষণীয় ক্ষেত্ৰত হৈছিল যে এগৰাকী যুৱ প্ৰতিনিধিতাত উপনীত হৈছিল এইবাৰ অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী চৌধুৰীৰ এগেইনষ্টত যিহেতু বিজয় গুপ্তাক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰা হৈছিল আৰু অঞ্চল লাভ কৰিছিল বিজয় গুপ্তাক প্ৰাৰ্থিত্ব আৰু এই
ড্ৰাইভাৰটো কথা নাই, ড্ৰাইভাৰটো এইটো ৰাস্তাত আহিব পাৰিব, এইটো ৰাস্তাত আহিব পাৰিব। এই যি গুৱাহাটী মেট্ৰ' এইটো বেয়া জেগা ৰখি আছে মাছ দিব নোৱাৰা মাথাত কোন অকণমান চাইডত আহিব চিনি নাপাওঁ ऑफिस चले गया ऑफिस का চাইডত নামটো দেখা কৰিলে বেয়া হয় এই পকেটে ইয়াক মই চাইড কৰি দিয়কচোন এই কেতিয়াবা পৰা ৰখি আছে এনেই বেকাৰ চাইড কৰি দিয়কচোন ইয়াত এইটো আগত অকণমান চাইড হৈ দিয়কচোন আমাৰ যিটো কৰিছা সেইটোকে কৰি আছো বাইদেউ হা কাঠখন ৰুমৰ দিয়ে নহয় তই হেল্প কৰিবি তোৰ ফোন মাৰে ভকতা অকণ হেল্প কৰ মই পিন্ধি আহি আছোঁ ডিপেণ্ডি আহি আছোঁ হেল্প কৰি शांतनु बोरा मैं न्यू गुवाहाटी कॉन्स्टिट्यूंसी का कैंडिडेट हूँ कांग्रेस का इस बार असम की जनता चाहती है कि एक क्लीन इमेज के व्यक्ति सीएम बने और कांग्रेस के लीडर गौरव गोगोई जी को वो सीएम देखना चाहते हैं। कांग्रेस का एक सरकार चाहते हैं, एक स्टेबल सरकार, जो सरकार भ्रष्टाचारी ना हो, जो सरकार लोगों के बारे में सोचे, लोगों के मन के बारे में सोचे और लोगों के लिए काम करे। तो वैसा एक सरकार असम की जनता चाहती है। न्यू गुवाहाटी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी कांग्रेस को चाहती है लोगों के बीच हम गए, लोगों को हमने बोला कि हमारा प्लान क्या है गुवाहाटी के लिए और गुवाहाटी के लोग हमें चाहते हैं कि हम आगे बढ़े, हम एक अच्छा सरकार बनाएं और स्टेबिलिटी लाए स्टेट में। एग्जिट पोल ने अपना काम किया है, हम अपना काम कर रहे हैं और लोगों ने अपना काम किया है। एग्जिट पोल ने शायद कोई सैंपल लिया होगा, लेकिन हमें विश्वास है कि इस बार हमारी जीत है। हमारे नेता गौरव गोगोई जी मुख्यमंत्री बनेंगे और एक साफ सुथरी सरकार गुवाहाटी के लोगों को मिलेगा।
कुछ भी बोल सकते हैं। अभी काउंटिंग शुरू होने वाले हैं, तो काउंटिंग के वक्त हमको पता चलेगा कि हम कितने मार्जिन से हम जीते, कहाँ कहाँ हम जीते, और हमें यकीन है कि हमारी सरकार होगी। यही हमारे कॉन्फिडेंस है। आप काउंटिंग हल के बाहर आ रहे थे, आगे आ जाता है प्लीज बड़ा विजय गुप्ता जी, सर कितनी उम्मीद है और मतगणना की प्रक्रिया अभी शुरू हुई नहीं है। हम आश्वस्त पहले भी थे, आज भी हम आश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तृतीय बार सरकार असम में बनने जा रही है। किस आधार पर ऐसा मान रहे हैं? आधार हमारे पास कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा समूह है। हमारे बूथ के अंदर 50-50 लोग होते हैं। एक एक कार्यकर्ता 60 वोट 12 घरों को देखता है। तो हमारे पास एक एक कंस्टिट्यूएंसीज में 3000 लोग हैं और प्राय 4 लाख हमारे पास में ग्राउंड में कार्यकर्ता होते हैं। तो वो असेसमेंट करते हैं, वो भी असेसमेंट करते हैं। जैसे आज मीडिया आज एग्जिट पोल देती है, तो उनका जो साइज है वो छोटा होता है। 10,000 का होगा, 20,000 का होगा, 50,000 का होगा, उससे ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन हमारा जो है एक कंस्टिट्यूएंसीज में 3,000 प्लस है। और उसके अलावा भी हमारे पास में ढेर सारे हमारे भी सर्वे हैं, हमारे पास में भी असेसमेंट्स हैं, विशेषकर हमारे कार्यकर्ता हैं और हमारी भी अपनी एजेंसियां हैं। एग्जिट पोल के हिसाब से क्या लगता है, आप खुद देख के आए? एग्जिट पोल के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी उससे भी ज़्यादा परफॉर्मेंस करने जा रही है। 90 प्लस हमारा विचार, एनडीए की सरकार 90 प्लस। लेकिन लक्ष्य तो आप लोगों ने सर 100 का रखा है। तो अभी तो स्टार्ट है, काउंटिंग स्टार्ट होने जा रहा है। लक्ष्य हमने 100 का रखा है। हम आश्वस्त हैं 90 पर। अगर बैलेट बॉक्स खुलेगा, ईवीएम खुलेगा, तो वो 100 हो भी सकता है। कांग्रेस ने जिस तरीके से आरोप लगाया, क्या लगता है वोटों को प्रभावित कर पाया वो? आरोप, जनता आज के दिन में जागरूक है। वी आर लिविंग इन द एरा ऑफ द कंपटीशन एंड कंपेयर एंड AI। जनता जानती है, जनता देख रही है कि कौन जो है विकास और उन्नयन कर रहा है। जनता देख रही है कौन असम को सुरक्षित रख सकता है। जनता देख रही है कि असम को आत्मनिर्भर कौन बना सकता है। इसलिए जनता हमारे साथ है, इसलिए हम आश्वस्त हैं। आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी में देखा गया तो जेनजी बहुत ज्यादा रहता है, तो आप जेनजी हमारे साथ है। मैंने जब मीटिंग किया तो एक हमने 5 मीटिंग किया, 5 मीटिंग में 500 लोग हमको मिला। 4 में तो बहुत संख्या थी, एक थोड़ी बारिश की वजह से कम हुई थी। तो हमारे पास जेनजी बहुत हैं। हमारे रैलियों में आप देखेंगे तो जेनजी लड़के लड़कियां बहुत अधिक संख्या में हमारे साथ थे। आप अभी जो अंदर में जो अभी आ रहे देख रहे हैं, क्या लगता है कितना सीट में आने का चाहते हैं आपका? 90 से ज्यादा सीट हम असम में लेके आएंगे। कांग्रेस भी बोल रहा है कि 80-90 सीट मिलेंगे सर, इसका ऊपर क्या बताना चाहेंगे? बोलने का उनका अधिकार है, वो बोलते रहेंगे और हम काम करते जाएंगे। वो बोलते हैं और हम काम करते हैं। না আপোনাক লোৱা নাই, আপুনি চিকিউৰিটি চিকিউৰিটি বনাব লাগিব।
Welcome. From the initial trends, it looks like the BJP is cruising ahead. The BJP-led alliance is cruising ahead. What do you make of the initial results? Yeah, right now the early trends, of course, suggest that BJP is cruising ahead, but it still seems to be a contest because at 10 a.m., if we look at the seats, even though BJP is leading in around 91 seats, and opposition is around 25. But if we look at the breakups, and it's really been like the end of the first round in some places, the second round results have come out.
But in most of the constituencies, the difference seems to be between 100 to 1,000. But at the same time, there are some seats, for example, Ting Khong in Upper Assam, where BJP incumbent Minister Bimal Bora is leading by 9,000 votes in 2 rounds. So in those kinds of seats, we can clearly see that BJP is racing ahead. But in many of the seats, like in the hills, in Karbi Anglong, in a couple of seats, the difference is just 80 or 90 votes. So it's actually too early to say which way this is going. In many of the seats, if you look at the breakup, it's a tough contest, but it's been just 2 rounds till now. In many seats, it's just 1 round. So we can't really see, but the early trend, of course, suggests that BJP is racing ahead. From what you have seen during this election season, what is the prospects for the Congress-led opposition in Assam? Rahul, do you want to come in, or should I respond? No, Banajit, this is for you. It's for you. Over to you. Okay. Actually, on the ground, I mean, I spend a lot of time in rural areas, especially in Lower Assam and Central Assam. On the ground, of course, we all know, it's always discussed that the organizational strength and the structure of BJP is very strong, very strong. Whereas the opposition was not really visible on the ground in the rural areas, which is like 84% of Assam. So they were not really visible until a month ago. And there were lots of uncertainties, whether the parties would come together to form an alliance. There were lots of tensions there. The alliance 15 days, I think 2 weeks before the polling date. So they really didn't have time to kind of build momentum in their constituencies, because we saw during the finalization of the opposition alliance that many of the candidates who had spent 2 years, 3 years, 4 years hoping to contest from a particular constituency, but at the last moment they were shifted to a neighboring constituency. So in a span of 10 days or 15 days, it's very difficult for a new entrant to build a kind of even the structure that is required to contest the election effectively. But at the same time, it's not like it was a very rosy picture for BJP. Ended up voting for BJP for various reasons. I mean, we of course know the welfare schemes, and when we looked at the welfare schemes in conjunction with BJP's organizational structure in a village, even in one unit, then we clearly see this connection between the organizational structure playing upon the welfare scheme dynamics and vice versa. So in that kind of a situation, for opposition, even though they were discontent and people were really silent, I mean, when we say silent voters, usually it's a trend which used to be visible in the urban areas, especially among middle class voters. But during this Assam election, it was very peculiar that the rural population was absolutely silent. So there were undercurrents of discontent on various issues, but the opposition really didn't really kind of
build upon those discontents, because they were completely, yeah. So may I ask something? Was the opposition alliance too late to gel as a unit? The opposition alliance, was it very late for them to really appeal to the Hear you people? properly. Yeah, can you hear me? It's a question for Banerjee. Rahul, your voice is breaking up. I couldn't really get what you're saying. Can you hear me now? Can you hear me now? No, I can't really hear you. It's getting Okay. stuck and it's breaking. Yeah, I Rahul, think I have. Yes, I have some uh, network issues. Yeah. uh, like the Arunodaya schemes, have they, like Mhm. the schemes that are targeted towards women, have they created a support base for the for the BJP-led NDA? Like Bonoji, can you hear us? Hello. There seems to be some issue with the network connection. Rahul, are you? I mean, like, am I audible? Yes, you are. Am I audible? Yes, yes. Can you Mhm. talk about the schemes targeted towards women? Like, have they created a support base for the NDA? Yes, they seem to have, because 40 lakh beneficiaries is not a joke in a in a constituency about with around 2.5 crore, and when you have the women in the house, happy to some extent, if you may use that word, I think it has a domino effect on the other members of the family. So I think it is a factor. But one of the factors. So if Banujit can hear me again, I just wanted to know whether the opposition alliance was too late to generate confidence among the people. Am I audible? Yes, you are. Am I audible? Yeah, there seems to be a lag. Manojit, I think, Rahul, I heard you. There seems to be some technical issues. I can't really hear either of you. Okay, now am I audible? Yeah. So as I was asking, was the opposition alliance, formed too late to generate confidence among the people? Yeah. Yeah, exactly. That's what I was trying to indicate towards. I mean, definitely there were discontents over many issues, and that people were kind of waiting for the opposition parties to come together. But like you say, they were too late to kind of show up on the field and build that confidence. Because of all these beneficiary schemes, people really have to feel. I mean, I really saw that sense while talking, heard and got this sense while talking to people, that they really wanted a picture where they will get this confidence that, okay, opposition is within the range of coming to power. Then they would kind of think about voting the opposition. But the opposition alliance, like you said, was not able to
infuse that confidence among the voters. And probably this dynamics explains why this time the voting was so silent in the rural areas. And about the Congress, was it dependent on only one party, one man? Was it seen as a party of one man running the show? That is Gaurav Gogoi. Yeah, if we look at the dynamics that were unfolding, what we could see in the media and in the meetings, backdoor meetings and press conferences in Guwahati, there were lots of talk that Gaurav Gogoi is kind of, he doesn't really have a sense of the ground in Assam. And there were accusations that from other alliance partners, at that time they were not alliance partners, talks were on. There were accusations that he is arrogant and he is running the party in a certain way. And we saw that certain top leaders of Congress jumped ship after the election dates were declared. I mean, the campaign manifesto committee chairperson, Pradut Bardoloi, Congress MP from Nagaon, jumped to BJP and he is contesting from Dispur in Guwahati. So those leaders who jumped ship, they also kind of labeled all these allegations on Gaurav Gogoi. But at the same time, I am not sure how much time Gaurav Gogoi really had to kind of assert his leadership till the mandal level or the panchayat level. I don't think he really had the time to build his leadership ground up as president of State Congress in Assam. Okay. One last question I wanted to ask is, Assam is too yeah, that also suggests organizational weakness of Congress. And we saw that during, yeah. Sure. So can I ask one question? One last question I wanted to ask. Can you hear me now? Can you hear me now? Hello. Yeah, I can hear you. So Assam is too complicated a state to generalize. For example, even the Bengali Hindus of Barak Valley think differently from the Bengali Hindus of Brahmaputra Valley. And then when it comes to Muslims, there are various categories of Muslims, which does not really define the minority or the Muslim, definition elsewhere in the country. So how much of a factor do you think certain regions play? For example, the Barak Valley, the Eastern Assam, because Eastern Assam, generally we have seen whichever party gains hold of the Eastern Assam part from, Kaziranga and beyond, maybe Nagaon and beyond. So they tend to win the election. So how much of these factors, these tribal areas, Barak Valley and the eastern part? Yeah, actually, it's kind of so diverse, the political field in Assam in terms of demography. It's really kind of difficult to give any kind of variations which you talked about. The dynamics in Eastern Assam are completely different from the political dynamics that play out in Central Assam or Lower Assam or BTAD. And Barak Valley is altogether a kind of different political field out there. Like just before the elections, I spent a week or 10 days in Boroland. There, something very interesting I could see on the ground. I mean, I was observing the campaigns of both the leading parties there, UPPL and BPF, of pocket meetings and all. So
Boro People's Front is contesting the election as a part of NDA. And UPPL, which was in alliance with BJP earlier, they are contesting independently. But on the ground, the BPF-BJP alliance looked very fragile. I mean, in some places, they were not even sharing stage. And all kinds of community dynamics plays out there. I mean, delimitation had a huge impact in kind of redrawing the political field in, let's say, Kokrajhar district, which is really the political heartland of Bodoland. So earlier there were 3 seats, now there are 5 seats. 1 seat have been totally packed with minority votes. It's almost close to 95% minority vote in Parbat-Jora. Then Gosaigaon, neighboring Gosaigaon constituency, earlier there were 59,000 Muslim votes, now it has been brought down to 19,000. So the idea behind the delimitation, if you look at the map, it seems that the clear idea is to do a gerrymandering and pack thin and kind of whatever. And the assumption was that it will favor the NDA. But during the campaign phase, what I saw was this 19,000, this reduction from 59,000 to 19,000 in Gosaigaon. The minority votes have become even more central because both BPF and UPPL were pitching their campaign that if you vote for us, then we will be able to protect you from eviction and other kind of political demonization that's been going on in other parts of Assam. And if Congress comes anywhere close to forming government, we are going with them. This was the campaign pitch line of both the UPPL and BPF, which is aligned with BJP, which is contesting as a part of NDA. I mean, in minority areas, their campaign pitch was also this, that vote for us, we will jump to the opposition if they come anywhere near forming the government. So, of course, these were like, grassroots cadres who were saying all these things during the campaign. So this kind of indicates, I mean, that it's the diversity and the demographic complexity makes it very difficult to make some assumptions. Like the assumption is if minority votes have been thinned in a constituency, then their relevance might have gone down. That is the assumption we hold. But this time during the campaign, I saw exactly the opposite dynamics unfolding on the ground. Okay. Yes, Rahul. The initial trends show that the BJP is cruising ahead. We will return with more. Stay tuned. Yeah. Thank you. Yeah. Thank you. Thank you.
अभी मैं देख के आया हूँ। अभी 8 बजे का बाद शुरू हो गया है। अभी मेन काउंटिंग हॉल में आऊँगा मैं अभी देखने के लिए वहाँ का क्या हाल है। और इस बार तो हम समझते हैं कि बीजेपी ने असम का पब्लिक को धोखा दिया है, जैसे सारा भारत का लोग को दिया है। अच्छा दिन का जगह में बहुत बुरा दिन आ गया है। अभी गैस का दाम बढ़ गया, पेट्रोल का बढ़ गया, एसेंशियल आइटम्स का बढ़ गया। इसीलिए 10 साल का जो वादा था, ये वादा सहन किया है। असम के लिए स्पेशल बताया था, जाति माति भेदी रखूँगा, यहाँ का सही जनगोष्ठी को जनजातिकरण करूँगा, टी गार्डन का वाइजेस दूंगा, अनएम्प्लॉयमेंट सॉल्व करेंगे, बाहर का इशू को टैकल करेंगे। ये कुछ भी नहीं हुआ जो उन्होंने बताया था अपना दृष्टि पत्र में। तो इसीलिए मैं ये जो लगता है अभी जो 10 साल का समय दे दिया था स्टेट गवर्नमेंट को, तो जो उसका वादा था पूरा वादा से टर्न बैक किया है। इसीलिए नया एक सरकार के लिए पब्लिक का उम्मीद है। वही मैं सोचता हूँ कि इस बार विपक्ष का अच्छा होगा। अभी तो पोस्टल बैलेट चल रहा है। पोस्टल बैलेट का काउंटिंग चल रहा है और मेरा उम्मीद है कि मैं पहला राउंड से जीतूंगा और शिवसागर कॉन्स्टिट्यूएंसी में भारी वोटों से मैं जीतूंगा। इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा खिलाफ जितना कैंडिडेट्स है सब लोग सबसे पहले आपका नाम बताइए। चंद्र दौलदार। आज बीजेपी ऑफिस के अंदर किचन है गुवाहाटी में हेडक्वार्टर में, आइटम क्या क्या है? आज आप सुबह ब्रेकफास्ट है। ब्रेकफास्ट में आपका पूरी सब्जी, आपका बिलाई टॉप, साइज रेटी और आपका मिल्क टी, और जिलापी भी है। जिलापी है, कचौरी है। और दोपहर में लंच में आपका दाल फ्राई, प्लेन राइस, आपका सब्जी, मिक्स सब्जी, आपका वो आलू मटर पनीर, आपका हो गया चावल पूरी। हाँ, चावल पूरी भी है। राइस, प्लेन राइस, पूरी भी है। मिठाई वगैरह नहीं है। जलेबी कितना बना रहे हैं? मिठाई वगैरह जिलापी है। जिलापी आपका 3000 आदमी के लिए जिलापी बन रहा है। कितना आदमी के लिए? 3000।
दादा सर जॉइंट बाइट एटा जॉइंट बाइट सर अब तक के रुझानों में आप आगे चल रहे हैं जोरहाट सीट से स्पेशली। देखिए असम में हम एक सकारात्मक नतीजे का इंतजार कर रहे हैं और अंतिम राउंड तक हम लोगों का जो फीडबैक हमको मिला है वो वोटों के द्वारा उसका जो उभरेगा उसके हम नज़र रखेंगे। हर राउंड पे हम नज़र रखेंगे। पूरे प्रदेश भर में हमने विभिन्न प्रकार के ऑब्जर्वर्स हमने भेजे हैं ताकि कहीं भी अगर किसी भी राउंड में किसी भी क्षेत्र में कोई भी अगर कमजोरी दिखती है प्रशासन की तरफ से तो तुरंत हमको वो इन्फॉर्मेशन वो जानकारी हमें मिलेगी। सर अब तक के रुझानों में पूरे असम से क्या अपडेट आपके पास है? देखिए अभी पहला राउंड ही हुआ है, इसलिए जहां तक सुबह की बात करें कि स्ट्रांग रूम से जाते काउंटिंग सेंटर तक ले जाते वक्त हमने सारे जो हमारे पार्टी के लोग हैं उनसे हमने जानकारी ली कि क्या ट्रांसपोर्टेशन में कोई कमी तो नहीं रही। हमारे मॉनिटरिंग सेंटर्स हमने हर विधानसभा में, हर जिला में, हर प्रदेश में भी, हमारे प्रदेश के सेंट्रल में भी हमने मॉनिटरिंग सेंटर्स बनाए हैं। क्या मॉनिटरिंग सेंटर्स हमारे अप एंड रनिंग हैं, क्या वहाँ पे लोग हैं, वो भी हम जानकारी ले रहे हैं। तो हमारी पार्टी की तरफ से जो तैयारी है स्ट्रांग रूम से काउंटिंग सेंटर तक और मॉनिटरिंग सेंटर के संपर्क में, वहां तक हमारी पार्टी की तैयारी संतोषजनक है। अगले कुछ घंटों तक सर आपका क्या फॉलोअप रहने वाला है, क्या रूटीन रहने? देखिए हम तो अभी पूरे प्रदेश से भी हम जानकारी लेंगे, खुद का भी विधानसभा है वहां से भी हम जानकारी लेंगे। कहीं अगर कोई कंप्लेंट आई है किसी कैंडिडेट के द्वारा या किसी विधानसभा में तो उस पर भी हमारे केंद्र में जो बैठे हुए हमारी टीम है, जो AICC की भी टीम है, वहां से भी वो तुरंत इलेक्शन कमीशन के साथ संपर्क में रहे। इस प्रकार के पूरे दिन तक हमारा ये तैयारी रहेगी। AICC ने कई जगह कंप्लेंट्स करी है, इलेक्शन कमीशन ने कोऑपरेट नहीं कर रहा है, क्या यहाँ कोई ऐसी कंप्लेंट आप लोग को अभी तक? हाँ, हमने चुनाव के समय में भी हमने किया था। हमने जब चुनाव के हो जाने के बाद, मतदान होने के बाद हमारे जो टीम्स हमने बनाए थे कि जो हर जिलों में जाकर जो स्टोरेज रूम है
वहाँ पर किस प्रकार से ईवीएम बॉक्सेस रखे गए हैं, किस प्रकार से अनयूज्ड ईवीएम मशीन्स रखे गए हैं। और जब हमने गए तो कई जगह हमको देखा कि अनयूज्ड ईवीएम्स को बिना ताला लगाए हुए एक कमरे में उसको बंद करके रखा हुआ था। तो उस पर भी हमारे लोगों ने वहीं जाकर ऑन द स्पॉट प्रशासन को दोबारा उनको कहा गया कि रूम को सील करे, लेकिन ऐसी नौबत आनी नहीं चाहिए। हमारे जो सीएलपी लीडर है उन्होंने भी देखा है कि कहाँ अनयूज्ड ईवीएम्स हो या स्ट्रांग रूम में जिस प्रकार की सीसीटीवी की मॉनिटरिंग हो, उन्होंने भी इंडिविजुअल ऐसे कुछ केसेस उन्होंने निकाले हैं। तो कैंपेन से लेके वोटिंग तक, वोटिंग से लेके स्टोरेज रूम में रखे गए ईवीएम्स तक कहीं कहीं जगह प्रशासन के रूप में कहीं तो हमने ढील देखी है। But you are satisfied with what's happening today, the process of election commission? Well, today, right now, we are in terms of the counting. We are only at round 1. But overall, if you've seen the election commission, I mean, you can clearly see that our candidates were assaulted, and yet the election commission took no action. We spoke of various officers who were acting as almost as agents of the BJP government, and yet no action was taken against them. So when you have this kind of environment, I think that does not look good upon the election commission, and that is why the reputation of the election commission is where it is today. Sir, what distinguishes your connect with Jorat voters than your opponent? As we have seen that you and Hitendranath Goswami both are from Jorat. So ऐसा क्या डिफरेंस है कि लोग आपको वोट करेंगे और उनको नहीं? ऐसा क्या की इश्यूज है? देखिए, आपका एज रहेगा अब तो देखिए वोट मांगने का समय तो खत्म हो गया है। अब तो लोगों ने वोट दे दिया है, अभी काउंटिंग चल रहा है। So we are just looking at round by round what are the results of the different wards of Jorhat town, what is round by round, what is the feedback that we are getting from the rural areas of Jorhat, and that will give us an indication of how and why people have voted. Thank you. नहीं, ये जॉइंट के बाद इंडिविजुअल कैसे हो सकता है? Okay, thank you. कांग्रेस को नंबर बोलो। कांग्रेस को नंबर नहीं बोलो। हाँ, पहले जो आपने देखा ना कॉलेज में, आशा ये था डेरियो बोल बोल। डेरियो बोल। दादा, ठीक है। दादा, ठीक है होई बोल को। होई बोल। दादा। दिया नहीं मैंने। बोलो। वैसे माइक बिना माइक की बात करिए, दे दो माइक दे दो, बात करना तो बाइक के लिए, बाइक के लिए बात कर लो। चलो
बीजेपी आगे हो गई है क्योंकि इस सीट पर अभी फिर से चुनाव हो रहा है तो 93 हो रही है और बीजेपी ने रुझानों में हासिल कर लिया है 10-11 बजते बजते कहा जाता है सेनेटर होने लगते हैं बीजेपी का अब तक जो है जबरदस्त कॉन्फिडेंस दिलीप साथिया जो है और कहीं न कहीं लगातार रुझानों में लगातार बीजेपी आगे चल रही है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये तो जनता जनार्दन का आशीर्वाद है और निश्चित रूप में असम में हम लोग जनता का आशीर्वाद से तीसरी बार सरकार बना पाएंगे और एक हिस्टोरिक मैंडेट असम के जनता ने आज हम सभी को दिए है। ऐसा रुझान जो शुरुआती रुझान है, वो रुझान से यही उम्मीद हम कर सकते हैं। बीजेपी अभी से खुशी मनाएगी, इंतजार करेगी, लगभग 1-1.5 बजे का निश्चित रूप से इंतजार करेंगे। हम इतना उतावल होने का जरूरत नहीं है। हम विनम्रता से आज विजय उत्सव उद्यापन करेंगे। अपने तमाम कैंडिडेट्स को क्या कहेंगे जो इस वक्त काउंटिंग? सभी लोग डटे रहे अपने अपने काउंटिंग सेंटर्स में। जब तक सर्टिफिकेट नहीं मिलता है विनर का, तब तक वो लोग डटे रहे और एक साथ सब लोग काउंटिंग एजेंट सभी हमारे कैंडिडेट्स एक साथ काउंटिंग हॉल से बाहर आए। अब की बार 100 पार आप लोग का नारा था, हो जाएगा? हमारा नारा नहीं था अब की बार 100 पार, जनता जनार्दन ने सोचा था। इस बार हम आशीर्वाद देगा तो दिल खोलकर आशीर्वाद देगा, क्योंकि जनता के लिए हमने जो मुद्दा उठाया था, जो मुद्दे हमने हाथ में लिया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद मार्गदर्शन से और असम के बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जी के नेतृत्व में, उसका आज काम का परिणाम आज चारों तरफ आज देखने को मिला है। बंगाल को लेकर क्या कहेंगे सर? बंगाल को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, बंगाल में भी भाजपा का सरकार होने का पूरा उम्मीद है और जो अभी शुरुआती रुझान है उसमें भाजपा का बहुत बड़ा एक लीड दिखा रहा है। तो हम सोच रहे बंगाल के सनातनी लोग और बंगाल में जो अस्मिता जो खतरे में था, टीएमसी के गुंडाराज, टीएमसी के सिंडिकेट राज, टीएमसी के भ्रष्टाचार, टीएमसी के सनातन विरोधी जो गतिविधियां पिछले 15 साल में बंगाल में उन लोगों ने किया, उसका जवाब बंगाल के जनता ने एक परिपक्वता से मैच्योर्डली एक हिस्टोरिक मैंडेट के साथ दिया है। हिंदी हटा लो, नेशनल वाले हटा दो भाई। क्या है यार, ये कौन है? दादा ये क्या कर रहे हो? मेरा क्या बनता है? यही छोड़ दिया, कमाल हो यार तुम। Total 5 constituencies in Kokrajhar districts. For the 5 constituencies, there are 2 counting centers here. One counting center is in Kokrajhar Higher Secondary, and the second counting center is in Bodoland University. Here in the counting center of Kokrajhar Higher Secondary, we have 3 constituencies: Kokrajhar, Baukungri, and Dotma constituency. In these 3 constituencies, we have started
postal ballot counting at 8 o'clock. And these three constituencies, we have Kokrajhar, we have almost more than 1500 postal ballots. Dotma also we have more than 1000, and Baukungri around 1000 postal ballots are there. So postal ballot counting will be completed in the next 3 hours, and EVM counting we just started at 8:30. So first round will be completed by 9:10 or 9:15, and we will try to provide the result round wise. And security arrangements also, we have already issued order under BNSS section 163, and up to 100 meters we have given the restrictions also. And counting, we are expecting it to be completed by 3 to 4 p.m. for most of the constituencies. And if any, for example, Baukungri and Parbhajara, since the polling stations are in high in number, so it might take some time, but most of the counting part should be completed by 4 p.m. 키우네요. 수이랑 문제를 키우네요.
키우네요. 수령 문제는 키우네요. ভিতৰতো দিয়া নাই এখন কাৰ গাড়ী ইয়াতে হৈছে मा खालामनो सानदों नोङो ভিতৰতো দিয়া নাই এখন কাৰ গাড়ী ইয়াতে হৈছে
मा खालामनो सानदों नोङो? एक साथ ले लो भाई। दिल्ली जी, जिस तरह चुनाव में जो पहले वाले जो रुझान आ रहे हैं, भाजपा एक जबरदस्त लीड ले चुके हैं। क्या कर रहे हैं? ये तो एक्सपेक्टेड लाइन में है, ये कोई नया कोई ये नहीं है। बीजेपी एनडीए पिछले हम चुनाव से पहले भी बोल रहा है, चुनाव के समय भी बोल रहा था, चुनाव के बाद भी बोल रहा था, आज भी बोल रहा हो। ये एक हिस्टोरिक मैंडेट असम के जनता जनार्दन ने बीजेपी के पक्ष में, एनडीए के पक्ष में दिया है और उसका रुझान से उसका पता चलता है। और निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक विजय बीजेपी एनडीए का असम में होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो असम हितैषी जो उनका एक स्वभाव है और असम के प्रति उनका जो संवेदनाएं हैं, साथ में असम के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जी का जो नेतृत्व है, जिस हिसाब से उन्होंने असम को जो विकास के मानचित्र में, देश के विकास के मानचित्र में असम को आगे बढ़ाने का काम किया है। और प्रधानमंत्री जी का भाषा में विकास के साथ विरासत भी, तो हमारे अस्मिता को लेकर के कई सारे अहम मुद्दे थे जिसको बीजेपी सरकार ने, हिमंत बिस्वा शर्मा ने इसको एड्रेस किया, समाधान के तरफ ले जाने का प्रयास किया। तो लोगों के बीच में हमने एक कॉन्फिडेंस देने का काम किया। जो इंडिजिनियस असमीज लोग हैं उनके मन में एक कॉन्फिडेंस आ गया था कि अगर असम सुरक्षित रहना है तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए इज द ओनली अल्टरनेटिव। What do you think is the major drawback for Congress that they are lagging behind? Where are Congress? I told before some days that Assam Pradesh Congress Committee, one M will be added with the APCC, Assam Pradesh Congress Committee. In bracket, there will be a big M. देखिए, जो हमारे 103 विधानसभाएं हैं उसमें हमारा 4-5 विधानसभा में थोड़ा सा फाइट है, लेकिन हमारा उम्मीद है उसमें भी हम लोग जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिलेगा। आखिर तक हम लोग जो हमने चुनाव लड़ा है, आखिर तक सर्टिफिकेट मिलने तक हम लोग डटे रहेंगे काउंटिंग सेंटर्स में। और निश्चित रूप में बीजेपी का, एनडीए का जय जयकार, ये बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेतृत्व के साथ असम के जो जनता है, जो जागृत जनगण है असम का, उन्होंने पहले ही तय कर लिया था कि असम में, असम के विकास और असम की सुरक्षा के लिए हमारे पास में एक ही है शक्ति है, राजनीतिक शक्ति विकल्प है, वो भाजपा है, एनडीए है। Which was the most major factor that came in favor of BJP this time? The most important. The last mile delivery is the most impactful initiative, because you see that the women, the youth, the senior citizens and unemployed youth have been given jobs, more than 170,000 jobs, without paying a single penny. That means in transparency, how a youth of Assam can get job, government job, without paying to anybody. अच्छे से करेंगे, अभी समय आने दीजिए, अभी तो शुरुआत है। तो शुरुआत में सब तरह से जो रुझान आ रहे हैं, वो रुझान से असम में एक हिस्टोरिक
एक विन हमारा होने वाला है और हम विनम्रता पूर्वक इस विजय को मनाएंगे। बीजेपी आगे हो गई है क्योंकि सीट पर अभी फिर से चुनाव हो रहा है तो 293 हो गई है और 107 ने रुझानों में हासिल कर लिया है। 10-11 बजते बजे कहा जाता है कि सेंटर होने लगते हैं। बीजेपी का अब तक जो है जबरदस्त कॉन्फिडेंस दिलीप साथिया जो है और कहीं न कहीं लगातार रुझानों में लगातार बीजेपी आगे चल रही है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये तो जनता जनार्दन का आशीर्वाद है और निश्चित रूप में असम में हम लोग जनता का आशीर्वाद से तीसरी बार सरकार बना पाएंगे और एक हिस्टोरिक मैंडेट असम के जनता ने आज हम सभी को दिए है। ऐसा रुझान जो शुरुआती रुझान है, वो रुझान से यही उम्मीद हम कर सकते हैं। बीजेपी अभी से खुशी मनाएगी, इंतजार करेगी, लगभग 1-1.5 बजे का निश्चित रूप से इंतजार करेंगे। हम इतना उतावल होने का जरूरत नहीं है, हम विनम्रता से आज विजय उत्सव उद्यापन करेंगे। अपने तमाम कैंडिडेट्स को क्या कहेंगे जो इस वक्त काउंटिंग? सभी लोग डटे रहे अपने अपने काउंटिंग सेंटर्स में। जब तक सर्टिफिकेट नहीं मिलता है विनर का, तब तक वो लोग डटे रहे और एक साथ सब लोग काउंटिंग एजेंट सभी हमारे कैंडिडेट्स एक साथ काउंटिंग हॉल से बाहर आए। अब की बार 100 पार आप लोग का नारा था, हो जाएगा? हमारा नारा नहीं था अब की बार 100 पार, जनता जनार्दन ने सोचा था। इस बार हम आशीर्वाद देगा तो दिल खोलकर आशीर्वाद देगा, क्योंकि जनता के लिए हमने जो मुद्दा उठाया था, जो मुद्दे हमने हाथ में लिया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद मार्गदर्शन से और असम के बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा जी के नेतृत्व में उसका आज काम का परिणाम आज चारों तरफ आज देखने को मिला है। बंगाल को लेकर क्या कहेंगे सर? बंगाल को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, बंगाल में भी भाजपा का सरकार होने का पूरा उम्मीद है और जो अभी शुरुआती रुझान है उसमें भाजपा का बहुत बड़ा एक लीड देखा रहा है। तो हम सोच रहे बंगाल के सनातनी लोग और बंगाल में जो अस्मिता जो खतरे में था, टीएमसी के गुंडाराज, टीएमसी के सिंडिकेट राज,
टीएमसी के भ्रष्टाचार, टीएमसी के सनातन विरोधी जो गतिविधियां पिछले 15 साल में बंगाल में उन लोगों ने किया, उसका जवाब बंगाल की जनता ने एक परिपक्वता से मैच्योर्डली एक हिस्टोरिक मैंडेट के साथ दिया है। हिंदी हिंदी हटा दो, नेशनल वाले हटा दो भाई। Total 5 constituencies in Kokrajhar districts. For the 5 constituencies, there are 2 counting centers here. One counting center is in Kokrajhar Higher Secondary, and the second counting center is in Bodoland University. Here in the counting center of Kokrajhar Higher Secondary, we have 3 constituencies: Kokrajhar, Baukungri, and Dotma constituency. In these 3 constituencies, we have started postal ballot counting at 8 o'clock. And these 3 constituencies, we have Kokrajhar, we have almost more than 1500 postal ballots. Dotma also we have more than 1000, and Baukungri around 1000 postal ballots are there. So postal ballot counting will be completed in the next 3 hours, and EVM counting we just started at 8:30. So first round will be completed by 9:10 or 9:15, and we will try to provide the result round wise. And security arrangements also, we have already issued order under BNSS section 163, and up to 100 meters we have given the restrictions also. And counting, we are expecting it to be completed by 3 to 4 p.m. for most of the constituencies. And if any, for example, Baukungri and Palbojara, since the polling stations are in high in number, so it might take some time, but most of the counting part should be completed by 4 p.m. 키우네요. 수이랑 문제는 키우네요. 왜? দাদা আহক
키우는 수령 문제를 키우네요. Kita maklumi ya misi kita 안 된다고 그래가지고 এটা তো দিয়া নাই এখন কাৰ গাড়ী ইয়াতে হৈছে
काफी ट्रेनिंग में है, काफी आगे है बीजेपी अलायंस, क्या कहेंगे? ना देखिए, हर जगह में बीजेपी, हर जगह में 97 में बीजेपी अलायंस आगे है, तो दैट इज एक्सपेक्टेड। तो ये पूरा मेरा भरोसा है असम का लोगों का ऊपर, क्योंकि लोगों ने इस बार एनडीए की सपोर्ट करेंगे, वोट देंगे। एजीपी का काफी लोग आगे है। हाँ, आगे है, आगे है। कितने सीट अब 3 राउंड 4 राउंड ही अभी चल रहा है। तो मैं तो पहले से बोला था कि पहले से हमारा ज्यादा सीट में हमने जीतेंगे इस बार। कितना एक्सपेक्ट करते हैं? देखते हैं, पहले से ज्यादा अहिले नहीं ना। बोलोगे ना कौन बुलाया था? बोलना चलेगा जी, कैसे चलेगा? बोलो बोलो, एक बज जाओ। कब लाया था लगाने के लिए? अब नहीं लगाएंगे। जो डेकोरेशन के सामान का ऑर्डर था पार्टी की तरफ से आया था। हाँ, तो क्या डेकोरेशन होगा नहीं होगा, क्या बोला है? नहीं होगा, बोले कल बोला होगा। अच्छा, कल बोला था लगाने के लिए। हाँ, तो क्या बोला था कि आज लगाना है? क्या क्या ऑर्डर था? क्या क्या ऑर्डर दिया गया था? लाइट, तार, राइस, लाइट और ये सब सारा सब कुछ। म्यूजिक बॉक्स वगैरह भी आने वाला था? ना नहीं। अच्छा, लाइट और इसमें क्या क्या है बताओ, सामान क्या क्या है? राइस है, हाँ, एलईडी पर, हाँ, तार। तो ये आज लगना था, कितने दिन के लिए बोला था लगाने? कितने दिन? 3 दिन। 3 दिन। तो अब क्या बोला? नहीं लगेगा बोले। अब नहीं लगेगा। नाम बताओ अपना। सोमनाथ दास। तुम यहीं से, मतलब गुवाहाटी से लेके आए हो? ठीक। सोमनाथ इधर अच्छे से बोलना। पहले से आप लाके रखते थे, आज लगाना था। बोला कल लगाने के लिए, बोला आज लगाने के लिए बोला था, लेकिन अब बोल रहा है नहीं लगाना है। यही ना मिलेगा। Vamos a ver, See you there means see you in Ranchi or see you here? Ranchi, not here. Okay, all well, now take care. Take care. Okay, see you there.
काफ़ी लीड दिख रहा है वेस्ट बंगाल में बीजेपी अनएक्सपेक्टेड बोले या जो भी है लाइक हालांकि बीजेपी पहले से बोलते आई कि सत्ता हमारी बनेगी तो आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए सबसे पहले तो मैं पूरी वेस्ट जो पांचों राज्यों की जो जनता है जो वोटर्स हैं उनको बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ बधाई देता हूँ कि जो लोकतंत्र की जो ये महाकुंभ है उन्होंने भाग लिया और अपनी पसंदीदा सरकार उन्होंने चुना है। और ख़ासकर पश्चिम बंगाल के मैं वोटर्स को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने जो सही निर्णय लिया। जो पश्चिम बंगाल में जो 15 साल से जो एक गलत तरह का शासन चल रहा था और जिस तरह से हम लोग देख रहे थे कि वहाँ पे पहले हम लोग बंगाल को हम लोग एक रोल मॉडल स्टेट के हिसाब से जानते थे, लेकिन जिस तरह से उसका डिक्लाइन हुआ है, चाहे वो आप इंडस्ट्री में कहिए, एंटरप्राइज में कहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में कहिए, तो बंगाल की जनता एक परिवर्तन चाह रही थी जो अभी सफल होने को दिख रहा है। अभी जो मेरे पास जो आंकड़े अभी हैं 128 सीटों पे जो एनडीए की लीड है, जबकि टीएमसी की लीड उससे आधा से भी कम, लगभग 50 सीटों में उनकी लीड दिख रहा है। और असम में भी जैसे मैंने पहले ही कहा है, मैं कई बार कह चुका हूँ क्योंकि मैं खुद तो असम में था लगभग 1.5 महीना, कि वन साइडेड लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी एनडीए की। और हम लोग 90 एनी नंबर बिटवीन 90 to 100 टारगेट किए थे और वो ज़रूर फुलफिल होगा। अभी 60 में तो लीड है ही अभी, लेकिन 90 से ऊपर हमारा ज़रूर होगा असम में भी। तो दूसरी तमिलनाडु का रिजल्ट भी सरप्राइजिंग हो रहा है, बीच में टीवी के एडीएम को ये कर दे रहा है। जी तो ये तो एक मतलब ये जो एक एक्सिस का सर्वे जो टीवी को 100 सीटें दे रही थी, ये तो सबके लिए चौंकाने वाली बात थी। और न्यू कमर होते हुए इतनी बड़ी डिस्ट्रप्शन इंडियन पॉलिटिक्स में वो कर रहे हैं वो, तो ये एक जो जहाँ तक मेरे पास खबर है यूथ वोटर्स, मैक्सिमम यूथ वोटर्स उनके तरफ गए हैं, तो ये अच्छी संकेत है कि यूथ दे आर लुकिंग फॉर समथिंग डिफरेंट। तो देखिए लोकतंत्र के लिए अच्छा है कि ज़्यादा पार्टियां रहें और एक मजबूत विपक्ष रहे। और लोग इस बार देखिए हर जगह पे बहुत भारी मतदान हुआ है, बंगाल असम में तो 90% के आसपास भी हुआ है, तो ये बहुत ही अच्छा संकेत है। और लेट द बेस्ट पार्टीज विन। और मैं असम और बंगाल का रिजल्ट को देख के भारतीय जनता पार्टी के सांसद होने के नाते मैं बहुत ही खुश हूँ। एक सर ले लो भाई। दिल्ली जी, जिस तरह चुनाव में जो पहले वाले जो रुझान आ रहे हैं, भाजपा एक जबरदस्त लीड ले चुके हैं, क्या कर रहे हैं? ये तो एक्सपेक्टेड लाइन में है, ये कोई नया कोई ये नहीं है। बीजेपी एनडीए पिछले हम चुनाव से पहले भी बोल रहा है, चुनाव के समय भी बोल रहा था, चुनाव के बाद भी बोल रहा था, आज भी बोल रहा हो। ये एक हिस्टोरिक मैंडेट असम के जनता जनार्दन ने बीजेपी के पक्ष में, एनडीए के पक्ष में दिया है और उसका रुझान से उसका पता चलता है। और निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक विजय बीजेपी एनडीए का असम में होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो असम हितैषी जो उनका एक स्वभाव है और असम के प्रति उनका जो संवेदनाएं हैं, साथ में असम के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जी का जो नेतृत्व है, जिस हिसाब से उन्होंने असम को जो विकास के मानचित्र में, देश के विकास के मानचित्र में असम को आगे बढ़ाने का काम किया है। और प्रधानमंत्री जी का भाषा में विकास के साथ विरासत भी, तो हमारे अस्मिता को लेकर के कई सारे अहम मुद्दे थे जिसको बीजेपी सरकार ने, हिमंत बिस्वा शर्मा ने इसको एड्रेस किया, समाधान के तरफ ले जाने का प्रयास किया। तो लोगों के बीच में हमने एक कॉन्फिडेंस देने का काम किया। जो इंडिजिनियस असमीज लोग हैं उनके मन में एक कॉन्फिडेंस आ गया था कि अगर असम सुरक्षित रहना है तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए इज द ओनली अल्टरनेटिव। What do you think is the major drawback for Congress that they are lagging behind? Where are Congress? I told before some days
that Assam Pradesh Congress Committee, one M will be added with the APCC, Assam Pradesh Congress Committee. In bracket, there will be a big M. आपको क्या लगता है जैसे कॉन्स्टिट्यूएंसी के अभी सेकंड राउंड के बाद कौन से कॉन्स्टिट्यूएंसी में थोड़ा सा टक्कर का मुकाबला होगा? देखिए, जो हमारे 103 विधानसभाएं हैं उसमें हमारा 4-5 विधानसभा में थोड़ा सा फाइट है, लेकिन हमारा उम्मीद है उसमें भी हम लोग जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिलेगा। आखिर तक हम लोग जो हमने चुनाव लड़ा है, आखिर तक सर्टिफिकेट मिलने तक हम लोग डटे रहेंगे काउंटिंग सेंटर्स में, और निश्चित रूप में बीजेपी का, एनडीए का जय जयकार, ये बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेतृत्व के साथ असम के जो जनता है, जो जागृत जनगण है असम का, उन्होंने पहले ही तय कर लिया था जो असम में असम के विकास और असम की सुरक्षा के लिए हमारे पास में एक ही है शक्ति है, राजनीतिक शक्ति विकल्प है, वो भाजपा है, एनडीए है। Which was the most major factor that came in favor of BJP this time? The most important. The last mile delivery is the most impactful initiative, because you see that the women, the youth, the senior citizens and unemployed youth have been given jobs, more than 170,000 jobs, without paying a single penny. That means in transparency, how a youth of Assam can get job, government job, without paying to anybody. अच्छे से करेंगे, अभी समय आने दीजिए, अभी तो शुरुआत है, तो शुरुआत में सब तरह से जो रुझान आ रहे हैं, वो रुझान से असम में एक हिस्टोरिक एक विन हमारा होने वाला है, और हम विनम्रतापूर्वक इस विजय को मनाएंगे। बीजेपी आगे हो गई है, क्योंकि एक सीट पर अभी फिर से चुनाव हो रहा है, तो 293 हो गई है, और बीजेपी ने रुझानों में हासिल कर लिया है 10-11 बजते बजते कहा जाता है बीजेपी सेंट्रल होने लगते हैं।
रुझानों में लगातार बीजेपी आगे चल रही है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये तो जनता जनार्दन का आशीर्वाद है और निश्चित रूप में असम में हम लोग जनता का आशीर्वाद से तीसरी बार सरकार बना पाएंगे और एक हिस्टोरिक मैंडेट असम के जनता ने आज हम सभी को दिए है। ऐसा रुझान जो शुरुआती रुझान है, वो रुझान से यही उम्मीद हम कर सकते हैं। बीजेपी अभी से खुशी मनाएगी, इंतजार करेगी, लगभग 1-1.5 बजे का निश्चित रूप से इंतजार करेंगे। हम इतना उतावल होने का जरूरत नहीं है। हम विनम्रता से आज विजय उत्सव उद्यापन करेंगे। अपने तमाम कैंडिडेट्स को क्या कहेंगे जो इस वक्त काउंटिंग? सभी लोग डटे रहे अपने अपने काउंटिंग सेंटर्स में। जब तक सर्टिफिकेट नहीं मिलता है विनर का, तब तक वो लोग डटे रहे और एक साथ सब लोग काउंटिंग एजेंट सभी हमारे कैंडिडेट्स एक साथ काउंटिंग हॉल से बाहर आए। अब की बार 100 पार आप लोग का नारा था, हो जाएगा? हमारा नारा नहीं था अब की बार 100 पार, जनता जनार्दन ने सोचा था। इस बार हम आशीर्वाद देगा तो दिल खोलकर आशीर्वाद देगा, क्योंकि जनता के लिए हमने जो मुद्दा उठाया था, जो मुद्दे हमने हाथ में लिया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद मार्गदर्शन से और असम के बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जी के नेतृत्व में, उसका आज काम का परिणाम आज चारों तरफ आज देखने को मिला है। बंगाल को लेकर क्या कहेंगे सर? बंगाल को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, बंगाल में भी भाजपा का सरकार होने का पूरा उम्मीद है और जो अभी शुरुआती रुझान है उसमें भाजपा का बहुत बड़ा एक लीड देखा रहा है। तो हम सोच रहे बंगाल के सनातनी लोग और बंगाल में जो अस्मिता जो खतरे में था, टीएमसी के गुंडाराज, टीएमसी के सिंडिकेट राज, टीएमसी के भ्रष्टाचार, टीएमसी के सनातन विरोधी जो गतिविधियां पिछले 15 साल में बंगाल में उन लोगों ने किया, उसका जवाब बंगाल के जनता ने एक परिपक्वता से मैच्योर्डली एक हिस्टोरिक मैंडेट के साथ दिया है। हिंदी हटा दो, नेशनल वाले हटा दो भाई। Total 5 constituencies in Kokrajhar districts. For the 5 constituencies, 4 hours of counting, and the BJP seems to have maintained a considerable lead. It's leading in 79 seats, the Congress in 25, the BPF in 10, the AGP in 9, the AIUDF in 2, and the Rajya Dal in 1. If you look at the map, the BJP seems to be dominating in the Upper Assam, Central Assam, and North Assam regions, while the Congress-led opposition is leading in the Lower Assam and Barak Valley regions. Rahul, would you explain the results to our viewers? Yes, what I can see is in areas which are not Muslim dominated, that is, the Hindu and other faiths who dominate, there's been a clear preference for BJP and its allies. While in the so-called Muslim-dominated, or the word that we use here is Mia for Bengal origin or Bengali-speaking origins. In most of these constituencies, the shift has been largely from the AIUDF to the Congress, because going by the trends I see around up to 8 rounds have been counted. So
Because if you look at the Congress leads, out of 24, I think 19 of them are all mostly in these constituencies, in Muslim-dominated constituencies. So there's a clear trend that the division is pretty wide. The polarized result is pretty wide, and the biggest, what do you call, whether you call it a setback or I don't have a term for it. The three Gogois who are supposed to be the pillars of the opposition alliance, three of them are trailing, and two major leaders who are trailing include the leader of the opposition, Debojit Saikia. So he is leading. He is trailing in Nazira constituency, which has been with his family since 1972, barring a 7-year gap. And the other major person who is trailing is Rajdeep Roy in Silchar. So these are two bigger, major upsets. If the trend is mentioned, I think this will be two upsets. So over to you, Monojit and Rajkamal. Yeah, this looks like a setback for the AIUDF too. Manojit, Absolutely. it looks like the AIUDF is trailing in the Barak Valley and Lower Assam regions. Is it due to the 2023 delimitation? Like is 2023 delimitation a factor? For AIUDF's performance, you mean? Yes. Like in the 2024 election, we saw minority voters moving towards the Congress. Has it sustained in that way? Yeah. I don't think AIUDF's performance, because AIUDF is right now, the trend is showing them in a really bad position. I mean, a while ago they were leading in 2 seats, but this decline had started even before the delimitation. In fact, AIUDF's decline had created a vacuum in the minority belt, which actually impacted upon the opposition party coming into an alliance, because Raijordal had also kind of tried to fill up that vacuum that AIUDF's decline had created. But at the same time, Congress also wanted to reclaim that space in the minority belt. So that was one of the major point of conflict, why it took so long for Akhil Gogoi's Raijordal and Congress to agree on a seat sharing formula. So I don't think AIUDF's performance is because of the delimitation. Their decline had started much earlier, actually, even before the Lok Sabha. Because like Rahul had pointed out here, the term Mia is used by political parties, especially the ruling party and its allies. The term is used Mia. So it was kind of very visible from around 2022, 2023 that there was a shift happening in Mia majority areas. Even before the Lok Sabha elections were declared, people used to say that
they don't have any option but to stand behind Congress, because there is also this fear of citizenship and questions of citizenship, and the general atmosphere across the country that they see every day on television. There is this sense of insecurity. So the Mia community, they preferred to shift towards a party which will have a national impact, which has a national footprint. So the shift towards Congress was already visible before. But Raijordol, building up on their earlier grassroots organization of Krishak Mukti Sangram Samiti, the Raijordol also tried to penetrate organizationally in some of these minority dominated constituencies in Lower Assam, and that became a bone of contention. Especially Mondia, former MP, former MLA and Congress leader Abdul Khalek is contesting for them there. But former Congress MLA Sherman Ali, who had shifted to Raijordol, he was also a claimant, and that seat became a bone of contention. And for around 10 days, there were several rounds of discussions, but they couldn't come up with a formula. Congress was not ready to let go that seat, and Raijordol also was initially adamant. So this AIUDF's decline and this vacuum that both Congress and Raijordol tried to fill up actually hampered the formation of alliance, and that led to substantial delay. Has the BJP strengthened its dominance in Upper Assam, going by the results? Seems so. Yeah, going by the Rahul, you want to pitch No, in no, here? you carry on, carry on. It seems so. That's what I say. Yeah, yeah. Upper Assam, it's already been, I think, 8th or 9th round of counting. It seems BJP has, in fact, managed to strengthen on its earlier position. It was already kind of very dominant in Upper Assam in 2021, as we see in the 2021 results. But they seem to have moving towards improvement. Congress's number might actually reduce in absolute terms. In alliance terms, it might be the same as what Congress got last time. Also, what is surprising is the much talked about three Gogois, the three prominent Ahom leaders of the opposition alliance, Gaurav Gogoi, Raijordol's Akhil Gogoi, and Assam Jatiya Parishad's Lurin Gogoi. Gaurav Gogoi has been consistently trailing. Lurin Gogoi was also trailing, but his now margin is expanding. Earlier he was trailing in hundreds. Now he is trailing, I think, by 6,000 votes or something. So we see that even actually the BJP wasn't claiming much that these guys, the three Gogois, will not win. The CM, in fact, had said that Dibrugarh is going to be, Sibsagar, Akhil Gogoi's seat is going to be very tough for them. He had acknowledged on camera. So I would say it's kind of unexpected. Even Akhil Gogoi is not in the trend doesn't show that he is in a comfortable position. Probably right now he is leading by few hundred votes. Earlier in the morning, few rounds ago, he was actually trailing. So it seems that BJP has managed to even better its
position in Eastern Assam than last time. Even in North Bank of Upper Assam, BJP seems to be in a very comfortable position. Even former APCC President Bhupen Bora, who actually switched to BJP just before the elections, he is, I mean, generally what was being reported in local media was that Bhupen Bora will not be able to win, but it seems he is in the contest. He's been leading and trailing by few hundreds since morning. And then coming to a very high profile seat in Guwahati. It was generally being reported and talked about that the Congress candidate Meera Borthakur will be in a leading position, but it seems Pradyut Bordoloi, who had shifted from Congress just a week ago before elections, he's leading by comfortable margin. Then we also saw lots of infighting within BJP, which was very unusual. Generally, BJP is known for party discipline, but there were visible rebellion and there were rebel candidates. Dispur is one such constituency where Jayanto Das, veteran BJP leader who was a claimant of the constituency, he was not given the seat. Pradyut Bordoloi was brought in, so he was contesting independent, and Congress, the opposition had hoped that Jayanto Das will take away substantial BJP vote, because this ex-Congress BJP and old BJP, as it was kind of labeled in local media, this rift was very prominent. But it seems now, looking at the trend, that that also did not had much impact, though it was talked about a lot in the local media. So may I ask something? May I ask Manojit a question? Yeah, sure. See, the T tribe or the Adivasi voters are a very major factor in the eastern and northern belt, in the tea growing belt. Yeah. So there was one party from this Jharkhand Mukti Morcha, which contested more than 20 seats. So do you think the Jharkhand Mukti Morcha eroded the vote base among the Congress, among the Adivasis, rather than the BJP? Actually, right now, even though we really have to look at the breakups, which probably we'll be able to do by the evening, but right now what we have been hearing is that it seems that the JMM has actually helped the NDA, I mean, leading in many of the constituencies. In fact, one of the JMM candidate was leading for a while in one of the eastern BTAD seats, Phergaon. So in one of the constituencies in Kokrajhar district also, it seems after 5 or 6 rounds, the Congress candidate had got only 500 votes. Traditionally, in Western Assam, Adivasis have traditionally voted for Congress. I mean, even after 2014 and 16. But the JMM candidate seems to be going to second position, then again slipping back to third position. So the JMM has kind of, it seems they have eaten into UPPL and Congress's share of the Adivasi vote there. And a similar phenomenon is being seen in Phergaon and Majbat. So I don't really have the trends of the Upper Assam seats, but looking at the general trend, it seems that
I mean, there were these talks that JMM might eat into BJP's vote bank, vote share. And generally, there was also this talk and hope that this time probably a section of T-tribe votes would shift towards the opposition. But it seems that that really hasn't happened. BJP has been able to hold on to their bases in that community. Has the government grants worked in BJP's favor? Like government grants, the level line land and the other schemes targeted towards tea tribes helped the BJP government? It would help but in gardens and places where such distribution of pattas and establishment of high schools and stuff and other schemes where it has taken place. But the implementation of those schemes on the ground is actually very, very uneven. So yeah, in pockets where those schemes were implemented, yeah, of course, there it seems it has helped the NDA, but that is very uneven across the tea garden belt and even in the Adivasi belt of the BTAD region. Sandeep Phukan has joined us from New Delhi. Welcome, Sandeep. Hello, welcome to all, Rahul, Mr. Hussain, and to you, Raj. If you look at the Upper Assam results, does it signify a further decline of the AGP in terms of alliance partner? Yes, I mean, quite clearly, I think in these elections, we've done a story. I think our colleague Abdus had done a story that, look, BJP started as a junior partner of the AGP when they had the first alliance. But, a lot of water has flown down the Brahmaputra since then. It's completely opposite now. AGP is no longer the party that actually came to power riding on the back of a popular movement, what is called as the Assam agitation. They emerged out of that. It was the biggest regional party, twice in power on their own, as in twice in government on their own. From that to being a very junior partner of the BJP now, it's quite clear. And the BJP barely accommodated some of their old timers, and a lot of the minority candidates were accommodated in terms of alliance. What this signifies is that to me it looks like two things. One is that Himanta Biswa Sarma, knowing how he sort of carries out his politics, I think he would have been wanting to improve upon his predecessor, Mr. Sonowal. So, they, correct me if I'm wrong, Rahul, I think they had 75 seats, NDA, in 2021. Yes. So this is way above. And this is the first time that, the Himanta Biswa Sarma is the main face of the BJP. Yes, he's going to an leading, election. He's leading the campaign. Last time around, he was not the face. Sonowal was the sitting chief minister. In 2016, it was a Congress government that was in power. Sonowal was the president of the party. So this is the time when Mr. Sharma is leading the campaign. So he would certainly want to improve upon. So, he would certainly want to improve upon their previous record. It's showing now, the numbers are showing the way they have performed. The second thing that has clearly emerged is that, and this is something that I have privately told many people, that, the Congress alliance looked formidable on paper. But many of these parties actually do not, they have they have their own pockets of influence. In fact, the AJP hasn't done well at all. Lurin hasn't performed well in his previous outings in elections. Akhil Gogoi has been a good activist, but as an MLA, he wasn't,
we heard that he hadn't really delivered as an MLA. He's very spirited when it comes to taking on the government. But, beyond taking on the government, people also want certain things done from your MLA. Whether or not he's been able to deliver that, that's an open question. Even in Jorhat, for example, Gaurav Gogoi had a spectacular win in the 2024 Lok Sabha elections. But since then, there were reports that, the local people of Jorhat town, that's also his father's hometown. That his father came from there. Accessibility, these kind of issues have come up in the past. Not to forget that his opponent, Hiten Goswami, has been with the AGP. He's been around since 1985. So he was no pushover either. So all in all, I think the alliance didn't work for the Congress. The welfare politics of the BJP, they were banking heavily on that. And you were a little while ago, you were asking Mr. Hussain about the T tribe, and I do feel that because I was speaking earlier, much before the elections, I don't know what is the fate of his son, but Mr. Pawan Singh Ghatwar, he's a tall leader from the tea garden community. His son is contesting from Lahual Chabua on a Congress ticket. And he, at that point of time, was telling me that it is very difficult to make an inroad or reclaim. This used to be a Congress bastion. To reclaim our bastion because, or our constituency, because the government has paid, on some ground or the other, every family has received some kind of cash transfer. Which helps, which makes the government popular among them. But the Congress seems to be gaining in its former stronghold of Silchar, which comes as a surprise. The sitting MLA is trailing now. Yes. Can you talk us through the results in the Barak Valley? How the Congress has performed there? Well, actually, Congress gaining there. Rahul would be better placed. He'd gone there. But Congress gaining there would be interesting because there was a lot of support for the BJP. There was support, especially among the Bengali Hindus, for the CAA, and Congress was opposed to the CAA. So Congress gaining ground. So we'll have to. Immediately, I don't have the map in front of me in terms of which are the seats they are gaining in and where the BJP. But if the sitting BJP candidate is losing, then it could be a simple case of. He's not the sitting BJP candidate anyway. So the thing is, may I interject? So the thing is, in Barak Valley, the issue is the delimitation portion. That the delimitation played a major part, because when I visited that area ahead of the elections, I have even spoken to some RSS activists, hardcore Hindus. They were not very happy that the region lost 2 assembly seats. It had 15 seats, and then it now has 13 seats. And what delimitation has done is the BJP out there, the local BJP workers were very confident that they would get at least 10 seats, because these seats are where all the Hindus have been packed in, while most of the Muslims have been packed into three other constituencies. So if they had, suppose a constituency, this Algapur Katlichera, I think, Algapur. So these are constituencies where, suppose they had, before the delimitation, had 1 lakh Muslim. Now after the delimitation, they have 2.5 lakh Muslims. So this is how the entire delimitation map was worked out. But even in those Hindu areas, there was this anger that,
the region will have fewer MLAs to represent the region, and which meant that fewer funds in terms of MLA development funds. So these all things, worked. I think to some extent the BJP may pay for it. Also, I think Rahul, I mean, there was also a lot of anger against the chief minister in particular. I think for some of his comments, I do remember interacting with, they're not politicians, but they were activists, advocates, and he did tell me that, the chief minister almost sort of made us redundant, the way he talks, that as if we don't matter. So in some way, do you think that also would have played a role? Yes, to a large extent. And then the language politics has also worked, because in some way or the other, a message has gone that, in the overall picture, the Bengali language doesn't matter much, particularly the Barak Valley. So this is one of the leads. And then over a period of time, the kind of leaders that used to come out from Barak Valley, they had a lot of voice. So now, the general feeling is that the leaders that are chosen, because after Parimal Shuklavadya, the main face of the BJP was Rajdeep Roy. Yes. So if he loses, then and then of course some other leaders have come from the Congress. I cannot recall his name right now. Anyway, so these leaders have come in, but at the same time, what happens is there is a general feeling that the kind of MLAs or candidates that the BJP has now, they do the bidding of their counterparts in Barak Valley or maybe the chief ministers. They cannot speak for themselves. This is the general feeling that they have, and maybe this may also work against the party to some extent. And one more question, Rahul. What about Sushmita Dev? Because clearly her father was one of the tallest leaders of Barak and from Assam, actually. Been a central minister. Sushmita herself was a very promising MP, and she, of course, chose to separate from the Congress over the issue of CA. And then I think this time around, Trinamool has also tried to contest. What do you think? I mean, do you think she would have been better off if she had herself contested? Yes, but I think she would have been better off had she remained in the Congress, because now I think people see her more as a West Bengal leader than more of a Barak Valley leader, since she's an MP from Bengal. So, but she does raise her voice off and on. Her Rajya Sabha term is ending, and she's not being repeated. Okay. So anyway, but that's how, because the ground on which she is playing, I think that is quite different from where she grew up. So I have one more question to Mr. Hussain, that, I mean, it's still a little early to call the elections, but we're 15 minutes past 12. Unless something miraculous happens, I don't think that the Congress is going to bounce back. So this means that it's a third straight loss to the Congress. What does it do to the organization on the ground? Because Kerala and Assam were the two states where Congress had some kind of organization. In Kerala, hopefully they will form the government. But in Assam, 3 straight defeats, what does it do to the party and to the leadership? Actually, already this time going into this election, even though kind of Congress had the organizational presence in terms of their own, party structure of committees and this and that, but they really didn't had much mobilization and groundwork. That disconnect was already very visible on the ground. And that had deteriorated since 21 election.
because I live in Nalbari, in one of the village, and I have seen in our region also, this time they were unable to appoint booth president until 1 month before the elections. So organizationally, Congress was already in a very weak position. But after this result, if this trend holds, which it seems it will hold, the kind of gap might reduce a bit by maybe 5 seats or so. But after this election, it will be very, very difficult for Congress to hold on to their organizational structure, the remaining organizational structure that they have on the ground. We don't know what will happen. Will it shift towards BJP, the party cadres and on the ground and things like, or one of these other parties will be able to capture some of the vacuum that will be created. So we really have to wait and see, but definitely Congress will face a huge challenge after this election to hold on to its party structures on the ground. That's for sure. Yeah. Right now, the BJP is leading in 80 seats. Does this indicate a stronger Himanta wave compared with 2021? I mean, like that year, the campaign was led by Sonowal. So, is Himanta the only face in BJP now, the most prominent face in the BJP now? Is that to me? Yeah, absolutely. Yeah. Okay. No, Sandeep. Sandeep? Yeah, surely. I mean, there's no doubt about it. I mean, as I just in my opening remarks, as I said that, Mr. Sharma wants to do everything his way, and one thing he would want to do is to improve upon his predecessor. This is as Rahul pointed out, this is the election where he is leading. He's the face. He's the sitting chief minister. He's leading the campaign. So quite clearly, this is it almost looks like a wave election. I don't know. I've been only watching I don't know the breakup individually, but last time around, BJP had, I think, stopped just short of a majority of their own. I think 60 they had got. 60. So, both elections, 60. Yeah. So so first thing, as I had said on another network earlier, the first thing he would want to do is to get a majority on his own, quite clearly. Then secondly, he would want to improve much more than what his predecessor had done. So you're saying about 80. So this, I think at some point in one of the interviews, he had mentioned 90 as the figure. He said that we should be able to comfortably reach 90. So they must be looking at that figure. Third, I would say that, he would like to interpret this as a wave election in his favor. Because there was also, as Mr. Hussain was pointing out, that BJP normally is a very disciplined party, and one doesn't see too many people talking out or speaking out against the leadership, etc. But in this election, in some of the seats, we did see Pradyut Bordloy was brought in or was paratrooped as the last-minute choice for Dispur constituency, a high-profile constituency. So there, a former BJP Karyakarta, Jayanta Das, he contested on his own. He completely focused his attack on the chief minister personally. It was a very personal attack on the chief minister. There were many others who were working behind the scenes, who were with the RSS. Again, unusual for RSS functionaries to come out and speak openly against it.
In fact, there was this talk that many of these leaders, BJP leaders in Assam, are actually all former Congress leaders, be it Piyush Hajarika, be it Jayanta Malla, Pradyut Bardoloi now, Bhupen Bora. So there are so many, so it's like a Congress A team and a Congress B team. So many of the old-time BJP people were hoping to sort of make that a point, should the BJP go down. So Himanta Biswa Sarma will also prove a point that whoever I have brought in, I have delivered. So it's entirely his election. The victory is also his. It's entirely his election. I mean, should these numbers hold? We have to be careful because these are all, at the moment, it's only sort of trends and leading positions. But yeah, it's unlikely that, we are almost close to 12:30. It's unlikely that there'll be a major reversal. A few seats may go up and down, but unlikely that there'll be a major reversal. So if I may interject, I think Himanta Biswa Sarma, apart from Assam, also played a major role in countering the fish narrative in West Bengal. Yes, yes. And he has been campaigning very widely. I think he was one of the main BJP leaders to have campaigned there. And the results, as the trend is showing, the results are showing. It's a sweep. The last time I saw, I mean, it's like a landslide victory, Rahul, in Bengal. I think last time I saw it was 190. I mean, these are, of course, all leading and trends. But on one channel, I saw it was 190. So, I mean, obviously that was a wave election. I mean, in Assam also, if they call it wave election, in Bengal also, there'll be a wave election. Bonojit, could you take us through the resurgence of the BPF in the BTR region? Yeah. So it seems BPF until now only in one constituency UPPL was leading in Bijni. Other than that, it's in 2 seats BJP was leading, and in rest of the 9 seats BPF was leading a while ago. This particular election is very important for Hagrama Mohilari and BPF in a way, because they swept the council election just few months ago, 5-6 months ago. Out of 40, they won 28. But if we actually kind of look at the breakups, demographic breakups, general trends, who voted for BPF and who voted for UPPL, it's very clear that BPF had come. BPF's slogan during the council election was also BJP Hatao, BTC Bachao. So the minority community of Muslims of East Bengal origin, which they constitute the second largest community in Boroland. It's like 27%. Boros constitute around 29%. The minority votes went to BPF decisively during the council election. So this time around, one of the anxieties that was very visible among BPF cadres, especially in Kokrajhar and Chirang district, the seats there, one of the major worry was how to hold on to the minority votes. So as I had mentioned in earlier in the morning also, the campaign at the pocket level, at the kind of village pocket meetings, the pitch was that nothing has happened in BTAD until now. Evictions are going on across Assam, and Hagrama Mohilari has ensured that evictions has not happened inside BTAD. So people should not worry. Hagrama Mohilari will provide that protection.
because among the minorities, it was absolutely clear in BTC that this election was seen as an election of security and survival of their habitat. That feeling was overwhelming. So there was also massive in-migration from places like Lucknow and all. There are many in numbers are in thousand who live in those places in Uttar Pradesh, Bihar. But usually they don't come back to vote. But this time they came as if this election will matter for their citizenship. So it was a very tricky kind of situation for BPF, and now it seems BPF is moving towards a kind of overwhelming mandate inside Bodoland once again. So how they will kind of, if this trend holds and Himanta Biswa Sarma government comes to power for the BJP government comes to power for the third time, then it would be interesting to observe how Hagrama Mohilari balances this arithmetic of his minority vote bank and the larger pressure which would come from the state government for eviction inside BTAD. That would be something which would be interesting to observe in coming months. Just to add, I think Hagrama will position himself as the only one who can take on the leadership of the BJP. And how does the results leave Pramod Boro of the UPPL? Pramod Boro's, he personally, he has already been elected to the Rajya Sabha. But in the earlier council election, even though UPPL still retains a substantial section of the Boro vote because of there is also this Christian Hindu divide, NDFB BLT divide, and APSU being close to UPPL. But in the earlier to the last council election, when UPPL had come to power in BTC in alliance with BJP, the kind of mass basis they had built, the minorities played a major role in that also, in bringing UPPL to power. But we saw that in last election, I mean, as anxieties about eviction and other things kept increasing, as people kept witnessing evictions in various regions of Assam, uh, inside BTAD, there was a major shift organizationally in terms of cadres. There was a major shift back to BPF. So when they went into these elections, I mean, UPPL is contesting a couple of other seats outside BTAD also. But while coming to this election, they were already entering the election with a very weak organizational structure. So if they don't manage, and it seems UPPL Supremo Pramod Boro is trailing substantially in Tamilpur. So we'll have to wait and see if UPPL will be able to remain a major power even within BTA after these elections, if they don't manage to at least win 3 seats. Thank you everyone for. We will stay tuned to our live coverage. We will later. Thank you. Thank you. Thank Thank you. you. Thank you.
काफी ट्रेनिंग में है, काफी आगे है बीजेपी अलायंस, क्या कहेंगे? ना देखिए, हर जगह में बीजेपी, हर जगह में काफी ट्रेनिंग में है, काफी आगे है बीजेपी अलायंस, क्या कहेंगे? ना देखिए, हर जगह में बीजेपी, हर जगह में 97 में बीजेपी अलायंस आगे है, तो दैट इज एक्सपेक्टेड। तो ये पूरा मेरा भरोसा है असम का लोगों का ऊपर, क्योंकि लोगों ने इस बार एनडीए की सपोर्ट करेंगे, वोट देंगे। एजीपी का काफी लोग आगे है। हाँ, आगे है, आगे है। कितने सीट अब 3 राउंड 4 राउंड ही अभी चल रहा है। तो मैं तो पहले ही से बोला था कि पहले से हमारा जिला से ज्यादा सीट में हमने जीतेंगे इस बार। कितना एक्सपेक्ट करते हैं? देखते हैं, पहले से ज्यादा अहिले नहीं ना। बोलोगे ना, कौन बुलाया था? तब ना चलेगा जी, ऐसे कैसे चलेगा? बोलो, बोलो एक बज जाओ। कब लाया था लगाने के लिए? अब नहीं लगेगा। जो डेकोरेशन के सामान का ऑर्डर था पार्टी की तरफ से आया था। हाँ, तो क्या ये डेकोरेशन होगा नहीं होगा, क्या बोला है? नहीं होगा बोले, कल बोला होगा। अच्छा, कल बोला था लगाने के लिए। हाँ, तो क्या बोला था कि आज लगाना है? हाँ, क्या क्या बोला ऑर्डर था। था? क्या क्या ऑर्डर दिया गया था? लाइट, तार, राइस, लाइट और ये सब सारा सब कुछ। म्यूजिक बॉक्स वगैरह भी आने वाला था? ना नहीं। अच्छा, लाइट और इसमें क्या क्या है बताओ, सामान क्या क्या है? राइस है। हाँ, एलईडी पर। हाँ, तार। तार। तो ये आज लगना था, कितने दिन के लिए बोला था लगाने? कितने दिन? 3 दिन। 3 दिन। 3 दिन। तो अब क्या बोला? नहीं लगेगा बोले। अब नहीं लगेगा। नाम बताओ अपना। सोमनाथ दास। तुम यहीं से मतलब गुवाहाटी से लेके आए हो? ठीक। सोमनाथ इधर अच्छे से बोलना। पहले से आप लान के करते थे, आज लगाना था। बोला कल लगाने के लिए बोला, आज लगाने के लिए बोला था, लेकिन अब बोल रहा है नहीं लगाना है। यही नहीं मिलेगा। Vamos a ver, vamos.
Not here. Okay. All well, no? Take care. Take care. Okay, sir. Yes, sir. सर रिजल्ट तो आने लगा है, रुझान आने लगा है, हालांकि शुरुआती रुझान बोल रहे हैं बट काफ़ी लीड दिख रहा है वेस्ट बंगाल में बीजेपी अनएक्सपेक्टेड बोले या जो भी है लाइक हालांकि बीजेपी पहले से बोलते आई कि सरकार हमारी बनेगी, तो आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं पूरी वेस्ट जो पांचों राज्यों की जो जनता है, जो वोटर्स हैं, उनको बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि जो लोकतंत्र की जो ये महाकुंभ है उन्होंने भाग लिया और अपनी पसंदीदा सरकार उन्होंने चुना है। और ख़ासकर पश्चिम बंगाल के मैं वोटर्स को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने जो सही निर्णय लिया। जो पश्चिम बंगाल में जो 15 साल से जो एक गलत तरह का शासन चल रहा था और जिस तरह से हम लोग देख रहे थे कि वहाँ पे पहले हम लोग बंगाल को हम लोग एक रोल मॉडल स्टेट के हिसाब से जानते थे, लेकिन जिस तरह से उसका डिक्लाइन हुआ है, चाहे वो आप इंडस्ट्री में कहिए, एंटरप्राइज में कहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में कहिए, तो बंगाल की जनता एक नई एक परिवर्तन चाह रही थी जो अभी सफल होने को दिख रहा है। अभी जो मेरे पास जो आंकड़े अभी हैं 128 सीटों पे जो एनडीए की लीड है, जबकि टीएमसी की लीड उससे आधा से भी कम, लगभग 50 सीटों में उनकी लीड दिख रहा है। और असम में भी जैसे मैंने पहले ही कहा है, मैं कई बार कह चुका हूँ क्योंकि मैं खुद तो असम में था लगभग 1.5 महीना, कि वन साइडेड लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी एनडीए की। और हम लोग 90 एनी नंबर बिटवीन 90 to 100 टारगेट किए थे और वो ज़रूर फुलफिल होगा। अभी 60 में तो लीड है ही अभी, लेकिन 90 से ऊपर हमारा ज़रूर होगा असम में भी। तो दूसरी ये हो गई तमिलनाडु का रिजल्ट भी सरप्राइजिंग हो रहा है, बीच बीच में टीवी के एडीएमके को ये कर दे रहा है। जी जी, तो ये तो एक मतलब ये जो एक एक्सिस का सर्वे जो टीवी को 100 सीटें दे रही थी, ये तो सबके लिए चौंकाने वाली बात थी। और न्यू कमर होते हुए इतनी बड़ी डिस्रप्शन इंडियन पॉलिटिक्स में वो कर रहे हैं वो, तो ये एक जो जहाँ तक मेरे पास खबर है यूथ वोटर्स, मैक्सिमम यूथ वोटर्स उनके तरफ गए हैं, तो ये अच्छी संकेत है कि यूथ दे आर लुकिंग फॉर समथिंग डिफरेंट। तो देखिए, लोकतंत्र के लिए अच्छा है कि ज़्यादा पार्टियां रहें और एक मजबूत विपक्ष रहे। और लोग इस बार देखिए हर जगह पे बहुत भारी मतदान हुआ है, बंगाल असम में तो 90% के आसपास भी हुआ है, तो ये बहुत ही अच्छा संकेत है। और लेट द बेस्ट पार्टीज विन। और मैं असम और बंगाल का रिजल्ट को देख के भारतीय जनता पार्टी के सांसद होने के नाते मैं बहुत ही खुश हूँ। एक सर ले लो भाई। दिल्ली जी, जिस तरह चुनाव में जो पहले वाले जो रुझान आ रहे हैं, भाजपा एक जबरदस्त लीड ले चुके हैं, क्या कर रहे हैं? ये तो एक्सपेक्टेड लाइन में है, ये कोई नया कोई ये नहीं है। बीजेपी एनडीए पिछले हम चुनाव से पहले भी बोल रहा है, चुनाव के समय भी बोल रहा था, चुनाव के बाद भी बोल रहा था, आज भी बोल रहा हो। ये एक हिस्टोरिक मैंडेट असम के जनता जनार्दन ने बीजेपी के पक्ष में, एनडीए के पक्ष में दिया है और उसका रुझान से उसका पता चलता है। और निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक विजय बीजेपी एनडीए का असम में होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो असम हितैषी जो उनका एक स्वभाव है और असम के प्रति उनका जो संवेदनाएं हैं, साथ में
जो बोलना हो रहा है काफी ट्रेनिंग में है, काफी आगे है बीजेपी अलायंस, क्या कहेंगे? ना देखिए, हर जगह में बीजेपी, हर जगह में 97 में बीजेपी अलायंस आगे है, तो दैट इज एक्सपेक्टेड। तो ये पूरा मेरा भरोसा है असम का लोगों का ऊपर, क्योंकि लोगों ने इस बार एनडीए की सपोर्ट करेंगे, वोट देंगे। एजीपी का काफी लोग आगे है। हाँ, आगे है, आगे है। कितना सीट अब 3 राउंड 4 राउंड ही अभी मैच चल रहा है। तो मैं तो पहले से बोला था कि पहले से हमारा जिला से ज्यादा सीट में हमने जीतेंगे इस बार। कितना एक्सपेक्ट करते हैं? देखते हैं, पहले से ज्यादा अहिले नहीं ना। बोलोगे ना कौन बुलाया था? तब ना चलेगा जी, ऐसे कैसे चलेगा? बोलो और बुलाइए जाओ। कब लाया था लगाने के लिए? अब नहीं लगाएंगे। जो डेकोरेशन के सामान का ऑर्डर था पार्टी की तरफ से आया था। हाँ, तो क्या डेकोरेशन होगा नहीं होगा, क्या बोला है? नहीं होगा बोले, कल बोला होगा। अच्छा, कल बोला था लगाने के लिए। हाँ, तो क्या बोला था कि आज लगाना है? क्या क्या बोला ऑर्डर था? क्या क्या ऑर्डर दिया गया था? लाइट, तार, राइस, लाइट और ये सब सारा सब कुछ। म्यूजिक बॉक्स वगैरह भी आने वाला था ना? अच्छा, लाइट और इसमें क्या क्या है बताओ, सामान क्या क्या है? राइस है, हाँ, एलईडी पर, तार। तो ये आज लगना था, कितने दिन के लिए बोला था लगाने? कितने दिन? 3 दिन। 3 दिन। तो अब क्या बोला? नहीं लगेगा बोले। अब नहीं लगेगा। नाम बताओ अपना। सोमनाथ दास। तुम यहीं से मतलब गुवाहाटी से लेके आए हो? ठीक। सोमनाथ किधर? अच्छे से बोलना। बताओ क्या बोला? नहीं था, पहले से आप लान के करते थे, आज लगाना था। ये सब वापस सामान लाए। बोला कल लगाने के लिए बोला, आज लगाने के लिए बोला था, लेकिन अब बोल रहा है नहीं लगाना है। यही ना अब मिलेगा। Vamos a ver, vamos. Sir, see you there means see you in Ranchi or see you here? Ranchi, not here. Okay. All well, now take care. Take care. Okay, sir. See you, sir. रिजल्ट तो आने लगा, रुझान आने लगा है। हालांकि शुरुआती रुझान बोल रहे हैं, बट काफ़ी लीड दिख रहा है। वेस्ट बंगाल में बीजेपी अनएक्सपेक्टेड बोले या जो भी है, लाइक हालांकि बीजेपी पहले से बोलती आई कि सरकार हमारी बनेगी, तो आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं पूरी वेस्ट जो 5 राज्यों की जो जनता है, जो वोटर्स हैं, उनको बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि जो
लोकतंत्र की जो ये महाकुंभ है उन्होंने भाग लिया और अपनी पसंदीदा सरकार उन्होंने चुना है। और ख़ासकर पश्चिम बंगाल के मैं वोटर्स को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने जो सही निर्णय लिया। जो पश्चिम बंगाल में जो 15 साल से जो एक गलत तरह का शासन चल रहा था और जिस तरह से हम लोग देख रहे थे कि वहाँ पे पहले हम लोग बंगाल को हम लोग एक रोल मॉडल स्टेट के हिसाब से जानते थे, लेकिन जिस तरह से उसका डिक्लाइन हुआ है, चाहे वो आप इंडस्ट्री में कहिए, एंटरप्राइज में कहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में कहिए, तो बंगाल की जनता एक परिवर्तन चाह रही थी जो अभी सफल होने को दिख रहा है। अभी जो मेरे पास जो आंकड़े अभी हैं 128 सीटों पे जो एनडीए की लीड है, जबकि टीएमसी की लीड उससे आधा से भी कम, लगभग 50 सीटों में उनकी लीड दिख रहा है। और असम में भी जैसे मैंने पहले ही कहा है, मैं कई बार कह चुका हूँ क्योंकि मैं खुद तो असम में था लगभग 1.5 महीना, कि वन साइडेड लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी एनडीए की। और हम लोग 90 एनी नंबर बिटवीन 90 to 100 टारगेट किए थे और वो ज़रूर फुलफिल होगा। अभी 60 में तो लीड है ही अभी, लेकिन 90 से ऊपर हमारा ज़रूर होगा असम में भी। तो दूसरी ये हो गई है, तमिलनाडु का रिजल्ट भी सरप्राइजिंग हो रहा है, बीच में टीवी के डीएमके को ये कर दे रहा है। जी जी, तो ये तो एक मतलब ये जो एक एक्सिस का सर्वे जो टीवी को 100 सीटें दे रही थी, ये तो सबके लिए चौंकाने वाली बात थी। और न्यू कमर होते हुए इतनी बड़ी डिस्रप्शन इंडियन पॉलिटिक्स में वो कर रहे हैं वो, तो ये एक जो जहाँ तक मेरे पास खबर है यूथ वोटर्स, मैक्सिमम यूथ वोटर्स उनके तरफ गए हैं, तो ये अच्छी संकेत है कि यूथ दे आर लुकिंग फॉर समथिंग डिफरेंट। तो देखिए लोकतंत्र के लिए अच्छा है कि ज़्यादा पार्टियां रहें और एक मजबूत विपक्ष रहे। और लोग इस बार देखिए हर जगह पे बहुत भारी मतदान हुआ है, बंगाल असम में तो 90% के आसपास भी हुआ है, तो ये बहुत ही अच्छा संकेत है। और लेट द बेस्ट पार्टीज विन। और मैं असम और बंगाल का रिजल्ट को देख के भारतीय जनता पार्टी के सांसद होने के नाते मैं बहुत ही खुश हूँ। एक साथ ले लो भाई। दिल्ली जी, जिस तरह चुनाव में जो पहले वाले जो रुझान आ रहे हैं, भाजपा एक जबरदस्त लीड ले चुके हैं। क्या कर रहे हैं? ये तो एक्सपेक्टेड लाइन में है, ये कोई नया कोई ये नहीं है। बीजेपी एनडीए पिछले हम चुनाव से पहले भी बोल रहा है, चुनाव के समय भी बोल रहा था, चुनाव के बाद भी बोल रहा था, आज भी बोल रहा हो। ये एक हिस्टोरिक मैंडेट असम के जनता जनार्दन ने बीजेपी के पक्ष में, एनडीए के पक्ष में दिया है और उसका रुझान से उसका पता चलता है। और निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक विजय बीजेपी एनडीए का असम में होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो असम हितैषी जो उनका एक स्वभाव है और असम के प्रति उनका जो संवेदनाएं हैं, साथ में असम के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जी का जो नेतृत्व है, जिस हिसाब से उन्होंने असम को जो विकास के मानचित्र में, देश के विकास के मानचित्र में असम को आगे बढ़ाने का काम किया है। और प्रधानमंत्री जी का भाषा में विकास के साथ विरासत भी, तो हमारे अस्मिता को लेकर के कई सारे अहम मुद्दे थे जिसको बीजेपी सरकार ने, हिमंत बिस्वा शर्मा ने इसको एड्रेस किया, समाधान के तरफ ले जाने का प्रयास किया। तो लोगों के बीच में हमने एक कॉन्फिडेंस देने का काम किया। जो इंडिजिनियस असमीज लोग हैं उनके मन में एक कॉन्फिडेंस आ गया था कि अगर असम सुरक्षित रहना है तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए इज द ओनली अल्टरनेटिव। What do you think is the major drawback for Congress that they are lagging behind? Where are Congress? I told before some days that Assam Pradesh Congress Committee, one M will be added with the APCC, Assam Pradesh Congress Committee. In bracket, there will be a big M. आपको क्या लगता है जैसे कॉन्स्टिट्यूएंसी के अभी सेकंड राउंड के बाद कौन से कॉन्स्टिट्यूएंसी
देखिए, जो हमारे 103 विधानसभाएं हैं उसमें हमारा 4-5 विधानसभा में थोड़ा सा फाइट है, लेकिन हमारा उम्मीद है उसमें भी हम लोग जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिलेगा। आखिर तक हम लोग जो हमने चुनाव लड़ा है, आखिर तक सर्टिफिकेट मिलने तक हम लोग डटे रहेंगे काउंटिंग सेंटर्स में। और निश्चित रूप में बीजेपी का, एनडीए का जय जयकार, ये बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेतृत्व के साथ असम के जो जनता है, जो जागृत जनगण है असम का, उन्होंने पहले ही तय कर लिया था जो असम में असम के विकास और असम की सुरक्षा के लिए हमारे पास में एक ही है शक्ति है, राजनीतिक शक्ति विकल्प है, वो भाजपा है, एनडीए है। Which was the most major factor that came in favor of BJP this time? The most important. The last mile delivery is the most impactful initiative, because you see that the women, the youth, the senior citizens and unemployed youth have been given jobs, more than 1,70,000 jobs, without paying a single penny. That means in transparency, how a youth of Assam can get job, government job, without paying to anybody. सेलिब्रेशन किस प्रकार से करेंगे आज? अच्छे से करेंगे, अभी समय आने दीजिए, अभी तो शुरुआत है। तो शुरुआत में सब तरह से जो रुझान आ रहे हैं, वो रुझान से असम में एक हिस्टोरिक एक विन हमारा होने वाला है, और हम विनम्रतापूर्वक इस विजय को मनाएंगे। सीटों पर अब बीजेपी आगे हो गई है, क्योंकि एक सीट पर अभी फिर से चुनाव हो रहा है, तो 293 हो गई है और 147 बीजेपी ने रुझानों में हासिल कर लिया है। 10-11 बजते बजते कहा जाता है बीजेपी सेटल होने लगते हैं। बीजेपी का अब तक जो है जबरदस्त कॉन्फिडेंस दिलीप साथिया जो है और कहीं न कहीं लगातार रुझानों में लगातार बीजेपी आगे चल रही है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये तो जनता जनार्दन का आशीर्वाद है, और निश्चित रूप में असम में हम लोग
जनता का आशीर्वाद से तीसरी बार सरकार बना पाएंगे और एक हिस्टोरिक मैंडेट असम के जनता ने आज हम सभी को दिए है। ऐसा रुझान जो शुरुआती रुझान है, वो रुझान से यही उम्मीद हम कर सकते हैं। बीजेपी अभी से खुशी मनाएगी, इंतजार करेगी, लगभग 1-1.5 बजे का निश्चित रूप से इंतजार करेंगे। हम इतना उतावल होने का जरूरत नहीं है। हम विनम्रता से आज विजय उत्सव उद्यापन करेंगे। अपने तमाम कैंडिडेट्स को क्या कहेंगे जो इस वक्त काउंटिंग? सभी लोग डटे रहे अपने अपने काउंटिंग सेंटर्स में। जब तक सर्टिफिकेट नहीं मिलता है विनर का, तब तक वो लोग डटे रहे और एक साथ सब लोग काउंटिंग एजेंट सभी हमारे कैंडिडेट्स एक साथ काउंटिंग हॉल से बाहर आए। अब की बार 100 पार आप लोग का नारा था, हो जाएगा? हमारा नारा नहीं था अब की बार 100 पार, जनता जनार्दन ने सोचा था। इस बार हम आशीर्वाद देगा तो दिल खोलकर आशीर्वाद देगा, क्योंकि जनता के लिए हमने जो मुद्दा उठाया था, जो मुद्दे हमने हाथ में लिया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद मार्गदर्शन से और असम के बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जी के नेतृत्व में, उसका आज काम का परिणाम आज चारों तरफ आज देखने को मिला है। बंगाल को लेकर क्या कहेंगे सर? बंगाल को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, बंगाल में भी भाजपा का सरकार होने का पूरा उम्मीद है और जो अभी शुरुआती रुझान है उसमें भाजपा का बहुत बड़ा एक लीड देखा रहा है। तो हम सोच रहे बंगाल के सनातनी लोग और बंगाल में जो अस्मिता जो खतरे में था, टीएमसी के गुंडाराज, टीएमसी के सिंडिकेट राज, टीएमसी के भ्रष्टाचार, टीएमसी के सनातन विरोधी जो गतिविधियां पिछले 15 साल में बंगाल में उन लोगों ने किया, उसका जवाब बंगाल के जनता ने एक परिपक्वता से मैच्योर्डली एक हिस्टोरिक मैंडेट के साथ दिया है। हिंदी हटा लो, नेशनल वाले हटा लो भाई। क्या है यार, ये कौन है? दादा ये क्या कर रहे हो? मेरा भाई तो रहा यही छोड़ दिया। लो यार तुम। Back after 5 hours of counting, the trend looks in favor of the BJP. The BJP is leading in. It's leading in close to 80 seats. The Congress in 24, the BPF in 10, the AGP in 9, and the AIUDF in 2. Joining us from Delhi is senior political editor Nistullah Hebbar. Nistullah, welcome. Thank you, Rajkamal. If I ask you the first question, has the Sure. BJP focus on direct benefit transfers like Arunodaya created a loyal base of women voters that now transcends traditional ethnic or religious voting blocks? No, I think it's a combination of all kinds of factors, Rajkamal, which has led to this kind of a verdict. And they have been, in fact, when I was talking to a lot of people in the party in the run-up to the election, I was told that basically demography, community patterns, support patterns, and the way the party has drawn its alliances. It jettisoned the NPP and got the the other Bodo People's Front back. Everything kind of, and the fact that, they have a huge amount of support among the T tribes, the way that they broke some of the old veterans of the Congress party and got them over to join. So there was a lot of morale issue as well in the opposition ranks. All of this, plus of course, continuity in terms of governance
and all these other transfers, benefit transfers, BJP has, in terms of being in government, a pretty good track record of what used to be said was true for the southern parties, which was like the last mile connectivity in terms of giving out these welfare measures. But BJP has got, over the last few years, a good track record with regard to that. So all of it has contributed to this situation. There was a bit of a scatter among the opposition as well. So all of it, it didn't look at any point of time, Rajkamal, that Himanta Biswa Sarma's government was in any kind of jeopardy. I had done an interview for The Hindu with Mr. Jay Panda. He's the Lok Sabha MP from Odisha, Kendrapada. And he was the party in charge, BJP in charge for polls in Assam. This was the second time he'd been given that responsibility. And the BJP was fighting on 89 seats. The rest were being fought by its allies. And after the interview, in fact, he told me off record, he said, look, I don't want to sound like I'm boasting, but I feel we'll be going over 90 seats in this election, and we'll talk after the results are out. So I don't think that at any point there was any doubt among the party leaders as well as workers that the BJP was coming back. Take us through the Himanta factor. Himanta factor, like well, the Himanta factor, of course, is a huge factor. He's become a phenomenon of how also, you know, you do as a party when you're trying to get into a space or a political field which possibly is not your organic sort of a space, you do get a little help from opposition leaders who are disgruntled. You know, it's very, very open, and Himanta Biswa Sarma has said it many times in the past that, you know, he was aiming for the top job after the, you know, exit of Tarun Gogoi, and that didn't seem to be happening. The Congress High Command had not supported him in that view as well. And he found a convenient situation to move to the BJP. They welcomed him with open arms. They knew, like DK Shivkumar in Karnataka Congress, or Mukul Roy used to be for Mamata Banerjee in that 2009-11 election till 16 election as well. He and he also moved to the BJP, as you remember. So these were the organization men of their parties who knew where each man was, how the electoral and party machinery, organizational machinery of the party worked in that state, where favors were owed, where you could collect on IOUs. So his exit from the Congress was a big, big blow to that party, I feel. That was the point at which the downward slide of the party began, Congress party began, because he brought all of that insight and a lot of the loyalty that party workers may owe to him personally, because he was the organization man and he was keeping together the people. You know, what is organization? You keep people together, right? Who you inspire should go and work hard for the party and help elect leaders. So you do a few favors, you also get that loyalty in return. So a lot of them were personally loyal to him. So a lot of that machinery moved with him. And in the first round, when BJP won 2016, it was made very clear through the election campaign that Sarbananda Sonowal is a tribal leader. He was a student leader from ASU, and he was the guy who had filed a petition in the Supreme Court against the IMDT Act, which was extremely unpopular in Assam and tied in with all the migrants and the NRC issue. He was the guy who had done it. He was longer in the BJP, so he was given that chance to be chief minister. But yes, in the 2021 election, you saw that Sarbananda was moved to the center, and Himanta Biswa Sarma finally got the chief minister's chair. He has managed to hold on to it. He's a 24/7 politician, quite in the manner of his mentor Amit Shah and BJP. And in fact, after the Jharkhand election, where he was in charge and the party could not win, there was a lot of silence from his end. You know, that he did not give too many TV interviews. You know, he was a very gregarious sort of a guy. He would talk to a lot of people. He would pick up phone calls. He would answer messages. He'd stop doing all that.
So during this campaign, a few of us spoke to him and we said, why haven't you been picking up the phone? He said, because I realized that I just need to put my head down and see through this election in the best way I can. I have to work on the ground. I don't want to talk to the media. So I think he also got warnings throughout this period that he had to work hard to preserve his ground. Rahul, it was a very vitriolic campaign this time, like the BJP attacking the Congress, and then the Congress later targeting individuals. Did it have a role in the results, or it was uncalled for? It works both ways, whether it has because a direct impact is difficult to, but then such kind of name calling or maybe personal attacks was not there in earlier elections. However, grim the situation was, however, volatile the situation was. So this may have had an impact, but it's too early to say, I think. And then there are two other factors I may add, which may have helped the BJP is the development aspect, because there are corruption involved in every projects and everything. But then compared to the Congress regime, the development is showing. There are, whether it's good roads, even in the rural areas, even in Muslim-dominated areas, there has been no discrimination, because I have traveled to many areas, because there had been no discrimination when it came to giving them toilets or houses or other benefits or land even. So these are the factors. The BJP may be, going against, maybe very verbal against the Miyas or the Bengali original Muslim, but on the ground, these areas have not also been deprived of various development projects. So these are certain factors. And then there's another factor. They promised, to deliver this many jobs, maybe 1 lakh jobs, and they did it. They have increased the target to 2 lakh jobs for this time. So maybe these are some of they may be smaller factors, but then these have worked to some extent. Nistula, with the BJP's spectacular result this time, will the party eventually subsume its allies? I mean, will it be in a position to do that in Assam? I really don't know. I think that question is for Rahul to answer. But in terms of for the Bodo People's Front and what's happening in Bodoland, BJP actually jettisoned one ally in favor of the other. And I don't see the specifically very ethnic areas, unless they throw up organically BJP leaders, it'll be a little difficult. Among the T tribes that happened, but here I don't know. And BJP, in terms of the larger view of the party, it plays a very long game. Because it can't afford to play a very short game in terms of swallowing its allies, because after that nobody will want to ally with you, because they will be staring at annihilation. So softly catchy monkey is the situation with regard to BJP and its allies. It allies with you. It gives you a lot of respect when you're in that alliance. It gives you a lot of other things, other benefits, prizes that you require, maybe an odd Rajya Sabha seat here, there, whatever, and also reads the way that you operate among particular your section of the voters, and then kind of takes it on. If you see what happened in Odisha, where it was the ally of the Biju Janata Dal and now finally has beaten it, or in some other part, like some other parts of in Karnataka, they were allies of the JDS much before the first time that they had an alliance with them for government, and now they are the dominating party. Their JDS is barely in that space. Then you have the Shiv Sena, which actually they did not want to have a problem with, but Shiv Sena walked out in the 2014 Assembly elections, and after having fought the election with BJP. So there they had a casus belli, so to finally split that party and put it into an existential quandary. So it depends individually in terms of what party, what section of the population,
and what are the demographic and sociological particularities of that. As I said, if they get a homegrown BJP leader who appeals to that particular section of society, they might just jettison their allies. But till that happens, they remain pretty stuck with their allies. Even with the Akalis, they were the oldest allies of the BJP, in fact. And they were finally jettisoned only during the farmers' agitation because the Akalis walked out of that alliance. Because in Punjab, the political field is that, it's the only state where a Sikh can be a chief minister. So that particular point, you have a Sikh Panthik party and a Hindu party getting together. It's also very good for social harmony, etc., etc. So they held on to that alliance also for many other reasons than just electoral politics. So whether or not they jettison their allies now, they've jettisoned the BPF earlier, then they got them back. So they will see if they require, they will keep them on. They are such a dominant political force at the moment that a lot of the alliance partners have no choice at the moment, actually. So the thing is, when you talk about the regional players, I don't see maybe in the near future BJP, subsuming them, because this region is very complicated geographically and demographically, and that's what I was saying now. Unless they have their own leadership there, they cannot do it. And then religion also plays a major factor. See, the fate of the BJP in the other northeastern states is linked very much to the outcome of Assam. So if you go to the last election, the second last election in Tripura, BJP had an alliance with its IPFT, the tribal alliance. But BJP got a majority on its own, but they still stuck to that alliance. So, and they continued in the next election, they continued despite getting a majority. So because there are many Christian dominated states. These states usually, support the party at the center because they are dependent on the central funds. So BJP also keeps in, I think, as Nistula said, is a long-term player. So maybe because situation out here is quite different from. And the perception most people have about that party of being a North Indian party, etc., etc. They're very aware of that, and the latecomers sort of image that they have in these areas. They need some time to develop their own organic leadership. In Odisha, that was possible because 1998 onwards, they had a decent party unit. There was Dharmendra Pradhan, his father before him, he was a union minister. And the party had an organization. RSS had a lot of work that they had done, and they could build up on it with Biju Janata Dal. They were, for a spot, they were in the government with the Biju Janata Dal as well. Our current president was a minister in that government, President Murmu. So, and it took them some time to build. Organizations, party organizations grow because of ideology, also share in power. So there many things that go into building a party organization in a particular state. And of course, organic leadership, which brings with it support from communities. And societies are very compartmentalized in the Northeast. No problem. Like the BJP has very superior organizational machinery. So will going forward, the other parties simply, will they find it difficult to compete with it on the ground, like due to lack of manpower or other reasons? Well, this is Rajkumar. This is a story that has been happening since 2014. I don't know how many times I have written copies on how the BJP organizationally managed this election. Of course, every victory has organization behind it. The party takes you to victory. Party workers take you to victory. But also you need a charismatic leadership. You need some narratives and stories which appeal to the electorate. The electorate should feel like coming out and voting for you. There are a lot of reasons which go in. But yes, one of the biggest strengths of the BJP is that they have a lot of electoral muscle. They can deploy people. They have booths. They have counting agents in most states. And they're very, very focused on that. And every time they win an election, and there have been many elections that they have won, I think now
Since 2014, I don't know, we must have crossed 3 figures now, the number of elections that they have won across the board. But all these stories have been written in the past. We need to know whether the opposition has taken those lessons on board. The one lesson that they took on board, and I think that particular arc is coming to an organic end, is of these consulting companies. So IPAC, which grew out of the Citizens for Accountability and Governance, which was working with the BJP's 2014 campaign, which propelled Prime Minister Modi to the Prime Minister's post, they broke away and they formed the IPAC. And they were, so some parties thought, okay, so this consultancy can help us, in terms of whatever. And they had a good record. It's not like they didn't. And there are lots of many other consultancies that have come up in the same time. But when push comes to shove, you cannot replace party organization and your own party's people, a thinking leadership, a leadership which is long-term, short-term, thinks strategically and tactically, and has an ideology. A lot of the opposition parties, you don't know what they stand for. If you say, okay, you are from so-and-so party, with the BJP, if you ask them what do you stand for, they say we stand for, integral humanism and cultural nationalism. It just comes out of your mouth. And we don't want Article 370, we don't want special this thing for Kashmir, we want UCC and we want Ram Mandir. The very, very quickly it comes out of you, you're just completely drained. A lot of political parties are not like that. If you think you're, with a charismatic leader and a consultancy firm, you can hire workers on the day to go in and work for you during that time. I think the West Bengal elections certainly have proven that that cannot be the case. So whether or not the opposition parties take this on board, we don't know, because organizational restructuring is a hard slog. It's an unpopular job. And you need people who are not interested in electoral prizes to sit back and say, okay, I will build the party. All right. So there are a lot of things that go into it. I don't know if the opposition parties have that mettle to do that. If I may add, the thing is, the Assam election is a big example. The opposition alliance, after yes and no, then they finally forged the alliance a few days ahead of the election. They hardly had any time to go to the field and give the people the impression that they are a cohesive unit. But the BJP, before the election, they have already started planning for the next election. So they are going ahead, because I believe more than Assam, Tripura was a bigger bastion to break for the BJP, but they had been working there for 4 or 5 years. They cultivated leaders. They put up a face who could have been a young face. Well, he turned controversial later on, but then they put up a face and they worked around him and they did the trick, and it did the trick for the party. So this is how the party works. And I think whether a party has a Hindutva ideology or whatever ideology, I don't think there is any harm in learning from any party and build upon it. I think the opposition or the Congress has to outthink the BJP to succeed in Assam or anywhere in the Northeast. As the convener of NEDA, will Sharma use this mandate to export the Assam model to other neighboring states, like aggressive identity politics combined with rapid infrastructure? Will he be able to do it? It will be difficult, except for Tripura maybe. It will be difficult so the BJP is smart enough, so it doesn't play the lead party in the other states, apart from the Tripura and Arunachal Pradesh, because Arunachal Pradesh, it's possible there. But I don't think it's possible. That kind of approach is possible in
Nagaland, Mizoram, Meghalaya, and even to some extent Manipur, because Manipur, that Hindutva ideology may work only in certain pockets of the Imphal Valley. Otherwise, in the hills, it will not work. So they find a balancing act. Mistula, can you talk us through the delimitation debate? With regard to Assam? Yes. Well, Assam had an interesting delimitation. It had it a bit late. It was later than the other states of India, as you know, because of the special circumstances prevailing there and in Jammu and Kashmir. And we had the first outing, I think, of that delimitation in 2021 election. And basically, the big headline point of that delimitation was that in seats, there was a redrawing of seats which saw the decrease of the number of seats where minority population would have a decisive say on who wins that particular seat. It came down from, say, 35 to about 21 or even less. I don't know. Rahul will have the correct sort of numbers with regard to 22. Came down to 22. That did, of course, contribute to the party's growth and the registration of victories and things like that. But Rajkamal, my simple point here is that delimitation, it has happened, you've accepted it. To fight an election, you have to strategize with the field that you have been given, with the electorate that you have been given. So I don't know why it has taken a second election and a defeat in the second election to again bring up the delimitation. You should have made peace with that and also strategized in a way that you win. You can win these polls. It's not like it was only because of the minority support that the Congress won, 3 consecutive victories under Tarun Gogoi. So obviously there is something wrong with the way that you are strategizing for the state, the way that you are talking to the electorate, what your perception is, and certainly in terms of organization and leadership. So we had a very senior member of the Congress move over to the BJP on the eve of the election. And a lot of journalists went to meet him when he came to Delhi. He's an MP and he came to Delhi, and several of our colleagues also went and met him. They knew him from before. And he was showing WhatsApp messages to the Congress leadership which went unanswered, telephone calls which were unanswered, and meetings that were not held. He kept asking for some FaceTime. He had some issues that needed to be sorted out. And that's the work of basically an organizational general secretary or party leader. And that was not done. The thing is to keep your people together, so whatever field you're given, you have to work in that. The 2016 election, BJP worked in the old field, right? The old delimitation. They still managed to win. So you have to take lessons from all of these. But I find all these alibis a little difficult to take, because if you're in the business of fighting elections, the first thing you have to do is make peace with the fact that there is a certain electorate. You can't elect the electorate has to elect you. Right. You have to do a lot of analysis, yes. Proper analysis. And take the electorate with you. Mm-hmm. And give them something new, or something that is different from what the others are offering, and something better, that is. The BJP focused heavily on specific ethnic groups like Moran, Motak, Rabhas. Did this rainbow coalition of smaller indigenous groups neutralize the Congress's attempt at broader regionalist narrative? See, Rajkamal, I can talk only very broadly about these things in terms of comparing what the Congress has been doing in other states.
In Haryana, it seemed like it put all its eggs in the Jat basket, which is a very dominant community in that state, and therefore the rest of them coalesced in favor of the BJP. In some other states, again, they did the same thing. In Assam, they had the three Gogois, which is the Ahoms and, the Upper Assam core group. I really don't know how much they worked on the ground because I didn't travel much. That Rahul will be better able to help you. But certainly, from 2014 onwards, a lot of the politics on the ground has changed in terms of the way that communities are relating to political parties. There was a time when there was a hoary chestnut that there's nothing like a consolidated Hindu vote. That was broken. Then there was a time when everybody said that the backward classes and the Dalits would never vote for the BJP. That issue was broken. Non-Jats in Haryana and a non-Maratha chief minister in Maharashtra were unthinkable. Those things happen. I get the feeling that nobody really goes into the depths of how it happened before going into the polls. And the BJP constantly thinks on those terms only. So if, say, Rajkamal doesn't want to vote for me, but he's very dominating and he's the leader of his group and all of those things. In that department, everybody listens to Rajkamal. What can I do? I'll go to the next guy whom Rajkamal has shouted at and whose copy Rajkamal has decided to completely slash and say, you don't know anything. And say, look, I will come, let's have a cup of tea. And, and then I build an alliance with that person. And at some point when Rajkamal is isolated, and I move around the department like that, isolate Rajkamal, and the behemoth that is Rajkamal would come down. So that is the game. And it's very obvious to say somebody like you and me that this is what is happening. So I don't know why this isn't obvious to the opposition parties. Mhm. Yes. Rahul, you want to add something? So I think it's fine. You have. Yeah, thank you, Nistullah. Thank you, Rahul. It was a lively Thank you. discussion. Thank Stay you, tuned. Rajkamal. We will return for more. Thank you.
काफी ट्रेनिंग में है, काफी आगे है बीजेपी अलायंस, क्या कहेंगे? ना देखिए, हर जगह में बीजेपी, हर जगह में 97 में बीजेपी अलायंस आगे है, तो दैट इज एक्सपेक्टेड। तो ये पूरा मेरा भरोसा है असम का लोगों का ऊपर, क्योंकि लोगों ने इस बार एनडीए की सपोर्ट करेंगे, वोट देंगे। एजीपी का काफी लोग आगे है। हाँ, आगे है, आगे है। कितना सीट अब 3 राउंड 4 राउंड ही अभी चल रहा है। तो मैं तो पहले से बोला था कि पहले से हमारा ज्यादा सीट में हमने जीतेंगे इस बार। कितना एक्सपेक्ट करते हैं? देखते हैं, पहले से ज्यादा अहिले नहीं ना। करता हूँ और सभी को आने वाला समय में, आने वाला 5 साल में असम वासियों का जो आशाएं है, आकांक्षाएं है, उसको पूरा करने के लिए हम हर कोशिश करेगा। और असम के जो इश्यूज है, असम के जो विकास का मुद्दा है, सुरक्षा का मुद्दा है, सभी विषय को हम, जैसे हमने प्रॉमिस किया था संकल्प पत्र में, एक एक संकल्प पत्र का बिंदु हम इसको कार्यकारी करेंगे। और निश्चित रूप से असम में जो जीत है, ये जीत केवल साधारण जीत नहीं है, ये ऐतिहासिक है। ये असम के विकास और सुरक्षा के प्रति असम का जनता जनार्दन का बहुत बड़ा भरोसा है बीजेपी एनडीए के ऊपर। तो देखा गया कि बंगाल में भी बवाल हो गया कि निश्चित रूपत আমি মই বাৰে বাৰে কৈছো, বুথৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলোতে আমাৰ मैंडेट के लिए असम के जनता, बंगाल के जनता जो the people of Assam, and they have accepted our leadership under the dynamic leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, and also the dynamic leadership in the state of Dr. Himanta Biswa Sarma ji. So this double engine government has made all the reformations like possible, and because of that, Assam become one of the fastest growing state in the country. Yeah, Bengal, this is also a historic visit, and particularly I am sincerely grateful to the people of West Bengal, and they know that if there will be BJP government, then there will be progress and peace and also dignified living, and that can be given only by Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. So what does this mandate mean for India, sir? What does this mandate mean for India, sir? Because this is a message to the people of the country that BJP is always there to take the leadership from the front with credibility and commitment for the cause of the country, and BJP can protect the nation. BJP can take the nation to a great height of progress in the global scenario. बाहर जाते हैं, सेम के लिए रुके रहते हैं।
करता हूँ और सभी को आने वाला समय में, आने वाला 5 साल में असम वासियों का जो आशाएं है, आकांक्षाएं है, उसको पूरा करने के लिए हम हर कोशिश करेगा। और असम के जो इश्यूज है, असम के जो विकास का मुद्दा है, सुरक्षा का मुद्दा है, सभी विषय को हम, जैसे हमने प्रॉमिस किया था संकल्प पत्र में, एक एक संकल्प पत्र का बिंदु हम इसको कार्यकारी करेंगे। और निश्चित रूप से असम में जो जीत है, ये जीत केवल साधारण जीत नहीं है, ये ऐतिहासिक है। ये असम के विकास और सुरक्षा के प्रति असम का जनता जनार्दन का बहुत बड़ा भरोसा है बीजेपी एनडीए के ऊपर। तो देखा गया तो बंगाल में भी बवाल हो गया कि निश्चित रूपत আমি মই বাৰে বাৰে কৈছো বুথৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলোতে আমাৰ मैंडेट के लिए असम के जनता, बंगाल के जनता जो the people of Assam, and they have accepted our leadership under the dynamic leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, and also the dynamic leadership in the state of Dr. Himanta Biswa Sarma ji. So this double engine government has met all the reformations like possible, and because of that, Assam become one of the fastest growing state in the country. Yeah. Bengal. This is also a historic visit, and particularly I am sincerely grateful to the people of West Bengal, and they know that if there will be BJP government, then there will be progress and peace and also dignified living, and that can be given only by Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. Sir, what does this mandate mean for India, sir? What does this mandate mean for India, sir? Because this is a message to the people of the country that BJP is always there to take the leadership from the front with credibility and commitment for the cause of the country, and BJP can protect the nation. BJP can take the nation to a great height of progress in the global scenario. बाहर जाते हैं, रुके रहते हैं।
करता हूँ और सभी को आने वाला समय में, आने वाला 5 साल में असम वासियों का जो आशाएं है, आकांक्षाएं है, उसको पूरा करने के लिए हम हर कोशिश करेगा। और असम के जो इश्यूज है, असम के जो विकास का मुद्दा है, सुरक्षा का मुद्दा है, सभी विषय को हम, जैसे हमने प्रॉमिस किया था संकल्प पत्र में, एक एक संकल्प पत्र का बिंदु हम इसको कार्यकारी करेंगे। और निश्चित रूप से असम में जो जीत है, ये जीत केवल साधारण जीत नहीं है, ये ऐतिहासिक है। ये असम के विकास और सुरक्षा के प्रति असम का जनता जनार्दन का बहुत बड़ा भरोसा है बीजेपी एनडीए के ऊपर। तो देखा गया तो बंगाल में भी बवाल हो गया कि निश्चित रूपत আমি মই বাৰে বাৰে কৈছো বুথৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলোতে আমাৰ मैंडेट के लिए असम के जनता, बंगाल के जनता जो the people of Assam, and they have accepted our leadership under the dynamic leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, and also the dynamic leadership in the state of Dr. Himanta Biswa Sarma ji. So this double engine government has made all the reformations like possible, and because of that, Assam become one of the fastest growing state in the country. Yeah. Bengal. This is also a historic visit, and particularly I am sincerely grateful to the people of West Bengal, and they know that if there will be BJP government, then there will be progress and peace and also dignified living, and that can be given only by Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. Sir, what does this mandate mean for India, sir? What does this mandate mean for India, sir? Because this is a message to the people of the country that BJP is always there to take the leadership from the front with credibility and commitment for the cause of the country, and BJP can protect the nation. BJP can take the nation to a great height of progress in the global scenario.
करता हूँ और सभी को आने वाला समय में, आने वाला 5 साल में असम वासियों का जो आशाएं है, आकांक्षाएं है, उसको पूरा करने के लिए हम हर कोशिश करेगा। और असम के जो इश्यूज है, असम के जो विकास का मुद्दा है, सुरक्षा का मुद्दा है, सभी विषय को हम, जैसे हमने प्रॉमिस किया था संकल्प पत्र में, एक एक संकल्प पत्र का बिंदु हम इसको कार्यकारी करेंगे। और निश्चित रूप से असम में जो जीत है, ये जीत केवल साधारण जीत नहीं है, ये ऐतिहासिक है। ये असम के विकास और सुरक्षा के प्रति असम का जनता जनार्दन का बहुत बड़ा भरोसा है बीजेपी एनडीए के ऊपर। तो देखा गया तो बंगाल में भी बवाल हो गया कि निश्चित रूपत আমি মই বাৰে বাৰে কৈছো বুথৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলোতে আমাৰ मैंडेट के लिए असम के जनता, बंगाल के जनता जो the people of Assam, and they have accepted our leadership under the dynamic leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, and also the dynamic leadership in the state of Dr. Himanta Biswa Sarma ji. So this double engine government has made all the reformations like possible, and because of that, Assam become one of the fastest growing state in the country. Yeah. Bengal. This is also a historic visit, and particularly I am sincerely grateful to the people of West Bengal, and they know that if there will be BJP government, then there will be progress and peace and also dignified living, and that can be given only by Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. So what does this mandate mean for India, sir? What does this mandate mean for India, sir? Because this is a message to the people of the country that BJP is always there to take the leadership from the front with credibility and commitment for the cause of the country, and BJP can protect the nation. BJP can take the nation to a great height of progress in the global scenario.
Assam. It's leading in 89 seats. Joining us is Rahul Karmakar and Sandeep Hukans. Sandeep, hi. Can you take Hi. us through the results? Well, I mean, it'll be third time around that the BJP will form the government. And most interestingly, they will catch up with Congress's own record. Congress has had a record of having returning to power 3 consecutive times from 2001 to 2016. That's when they lost power to the BJP. And now the BJP will sort of equal that record and form the government. They've also improved upon their previous score of 75 seats. Now they are leading, as you said, they are leading on 89 seats. 79. 79, yeah. So that's 4 from the 75. But I actually saw one of the online sites, not the Election Commission, but on another online site where they were showing 97. So that will be remarkable if they actually touch that 3-digit figure. Will be a remarkable. It'll be a spectacular result for the BJP. Of course, as Rahul had earlier pointed out, that this was the first election where Mr. Himanta Biswa Sarma was leading from the front and was also the face of the NDA alliance. So, obviously it is going to be, it is going to be a big moment for him. Also partially because, in the run-up to the elections, there were some voices coming out from within the BJP camp. There was some rebel factor, some voices coming out that BJP is increasingly becoming a dumping ground for former Congress leaders. One case in point was Pradyut Bordoloy, who resigned as a sitting Lok Sabha member to contest from Dispur constituency, where a BJP rebel also contested. So, given all these factors, if they touch that 3-digit figure, that will be remarkable. It also puts a question mark on the future of the Congress organization on the ground, question mark on the leadership of Mr. Gaurav Gogoi, but most certainly the All India Congress Committee in charge, Mr. Bhavar Jitendra Singh. Just to give you an example, and I'm sure Rahul is aware that they were so cut off from the ground reality, and they were so confident that Congress is going to come to power, return to power, that they had actually, the Karnataka Deputy Chief Minister, the former Chief Minister of Mr. D.K. Shivkumar, the former Chief Minister of Chhattisgarh, Mr. Bhupesh Baghel, all of them were stationed there, almost in anticipation of a Congress victory. Absolutely. I agree. And they also overdid the Zubin Garg issue, because every leader who came in, every other local leaders, they made it a point to be seen around that, around the family of the late singer and the place where he was cremated. So I think they overdid it because, fine, it's an issue with many people, with his fans, mostly the new, whatever you call it, Gen Z or Gen Alpha. I am not very sure about which age they belong to. But the thing is, it did have some impact, but mostly as things turn out now, mostly on social media platforms rather than on the ground. So these are the things I think the Congress, maybe they did not have too many issues and they latched onto it, thinking that this could be the trump card. Also, I would say that the last press conference, though it was very sensational by Mr. Pawan Khera, yes, it just, come to think of it, that this is a party which has been around for so long, since 1885, and then you have a national spokesperson of the party who's relying on what is now being considered as a completely forged document. It took them barely 2 hours to find out how a company can be made. I mean,
And to top it all, Mr. Khera had also said that they had done due diligence. And after all that due diligence, it took barely a few hours for the BJP to puncture or to punch holes in that narrative. And then the next day, I think early morning, the chief minister did a press conference and showed how a company can be set up in Wyoming and in the US. So it doesn't give a very good impression. It shows that as if the party is desperate. I think, in my opinion, they should have avoided, unless they were sure of that their allegations will test the scrutiny of courts and they had done enough due diligence. I mean, you are talking about a constitutional functionary, so. I mean, they should have been a little careful about that. I mean, having said that, of course, a lot has been said about also the response of the chief minister and how he reacted, the kind of language that he used. But yeah, I mean, it was a rather bitterly fought elections this time around. Yes, very unlike Assam elections of the past, because things have been really. This used to be very gentle, like opposition candidates respecting each other and hugging each other, touching each other one's feet, the elders' feet. So this was always the case in Assam, whether it's in Barak Valley or in Lower or Upper Assam. It used to be very cordial. This time it was a bit acrimonious, very bitter. And then, if I may add, there's another factor. This Congress slogan of Notun Board Assam, it actually did not gel, because they did not have because the BJP was very focused, development and identity. So these were the two issues they were very focused on, and they were very particular about protecting the indigenous community from the infiltrators or the so-called Miyas, Bengal origin Muslims. And the Congress had this vague concept of Notun Board Assam, which was more like Akhand Bharat. When you think of Board Assam, so then they talked about inclusive politics, and then this was something that the BJP turned around, because when it comes to inclusive, then the Mia, and then the BJP portrayed it as an olive branch for the or maybe the approach. The word escapes me. Even outreach to the Mia or the Muslims. So this is one factor. And then Board Assam, when you call a Board Assam used to be, much of the northeast minus Manipur and Tripura maybe. Yeah. So these were all these things. So it was not very clearly conceived, this Notun Board Assam, this concept. And at the same time, the Congress, as we had discussed earlier, the Congress was too late in strategizing in its policy and organizing its allies and working in the ground, because going to the ground and doing field level work is quite different from making statements at press conferences and using social media. In fact, I would say that here I must say one thing, Rahul, that damned if you do, damned if you don't. There was an opinion within the Congress that they should go alone, and that section of the Congress believed that, and perhaps rightly so in hindsight. In hindsight, we are all wiser. That section believed that both Jatiya Parishad, Assam Jatiya Parishad, and Riser Dol of Akhil Gogoi and Lurunjiti Gogoi's AJP, they are essentially, they're paper tigers. They have presence more, in terms of media coverage for the past, for their past records, what they have done. Akhil Gogoi himself, for example, was facing a lot of anti-incumbency. I mean, sure, he's a very spirited fighter in terms of taking on the chief minister. He speaks fearlessly, but at the same time, your constituents also expect certain things to be delivered from the local MLA. I'm not sure whether or not he was actually being able to do that.
That was one perception that was given to me by a section of the Congress leaders. And they believe that maybe they should have just gone alone and they should have done things differently. As someone who covers or writes on the Congress party from Delhi, I must say one thing. It actually completely sort of, I don't get why Mr. Bhavar Jitendra Singh, other than the fact that he's quite close to the top leadership, why was he continued there? Why did they not try a fresh pair of eyes? Sometimes, like we do, even as journalists, when we write a copy, if it's a complicated copy, we want a fresh pair of eyes to take a look at it and find out what's, how is the copy doing? Have I put in everything or not? I mean, this is nothing personal against Mr. Singh, but he's not performed well. He was there as the in charge in 2021 Assembly elections. He didn't perform well in the 2024 Lok Sabha election. So I'm not sure why he was continued. Why they did not give someone else, anybody else in his place who could have approached the state perhaps with a fresh pair of eyes is all I can say. And if I may add, the BJP, rather the chief minister, played a psychological warfare. It's almost like the, psychological battle that goes on when Indian cricket team goes to Australia. The Australian media keeps on, and the players keep on making certain statements to play on the minds of the cricketers. I think chief minister, ahead of the election, he played down the Congress. He said it's Congress, and maybe in the next election, the fight of the BJP will not be with the Congress. It will rather be with the Rajor Dal. And he played up the Rajor Dal. And this will be the party where all the Muslim, because the Congress is reduced to, he said that Congress is reduced to the Muslim areas. And the Rajor Dal will be the party where all the Muslims will go. I think he killed two birds with one stone. So this is a psychological warfare that worked more than the parties. It worked on maybe on the voters. True. I mean, they didn't have. I don't know on what. And also let me. Another aspect that strikes me: this Gogoi Troika, the three Gogois. While that may have been a good slogan to project, the dominance of the Ahom leadership. But it also helped BJP polarize the non-Ahom voters. And it's not as if that all the Ahom voters were backing only Congress. They had backed the BJP in the previous elections. So I think that also may have played a part. I don't know. We'll have to see how it goes. But that could have been that was also perhaps an avoidable thing, I would say. Absolutely. Because, most of the candidates that are winning in the Upper Assam, many of them are Ahoms for the BJP. Yes. So it doesn't mean that, if three Gogois or if you coin certain slogans and you think all the Gogois are with you, then it also gives an impression, a different kind of impression, that, the party is catering only to the Ahom. So non-Ahom vote. It's a very polarizing narrative, So on the one hand, you say that we believe in inclusivity. And then if you focus on a polarizing, so there is a contradiction somewhere there. That you're focusing on a polarizing narrative, we are also giving a slogan of inclusivity. So I think it's time for the Congress to go back to the drawing board. It will be a big challenge for them and also for Gaurav, who perhaps didn't get enough time to steer this election. I would have, if they had to make him the chief ministerial face and the APCC president, then in my opinion, they should have done it immediately after he had won that very impressive victory in Jorhat Lok Sabha elections in June 2024. Soon after that, if he was made the face, then he would have had all the time to deal with the defections, to setting a narrative, to build his own team.
all this happened, it almost seemed to me that he was firefighting from one crisis to another in the run-up to the elections. Yes. And he was virtually the only face of the Congress around this time. Well, there Yes. was the Dhubri MP, Mr. Raqibul Hussain, but then he does not generate that kind of a impression among the larger sections of the, across Assam, across all communities, than Gaurav Gogoi. But then if you go by because now it has become very clear that the voters of Upper Assam, or maybe the Jorhat area, which is considered one of the most educated belts in Assam and most knowledgeable and most culturally rich belt. So I think they have given a message that you are fit, fit for us to represent us in Delhi, because the way you carry about the issues on a larger scale, and maybe not yet mature enough for us at the lower level, maybe at the assembly level. So But this might be it was always going to be a tough seat. Yes. This Jorhat Lok Sabha was always going to be a tough seat. Congress also, they've had a strongman in Rana Goswami who he had his own support base. Rana Goswami also shifted to BJP. I mean, in fact, he was the one who was organizing, I think, Bharat Jodo Yatra for Rahul Gandhi through in that route. That route going through Jorhat was in Upper Assam was organized by Rana Goswami, a former MLA, and then he goes and joins the BJP. And Mr. Hiten Goswami has been around, since his AGP days, and he's generally an accessible, seen to be an accessible person. And I recall Rahul's copy that they had a very cordial sort of meeting. Both Gaurav Gogoi and this thing, while they were campaigning, they exchanged, and that is how it is generally. That is how it is in Assam. That usually the campaign is fairly cordial. I mean, both sides stick to their positions, but they're not very bitter or acrimonious or allegation. Nothing like what we've seen in the recent past. Yes. And then there's, like the Assam, the chief minister had painted the Congress as a party of the Muslims only. He said that it will be reduced to a party that is relevant only in the Muslim-dominated or the minority-dominated areas. So I think the results, all the trend till I can see here up to 15 rounds have been counted. So I can see 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 out of 23 are all Muslims. Candidates who are leading. So, in a way, I think the Congress has to get out of this mold. Yes. Because it cannot afford to be painted as a Muslim-only party. Because Assam is too diverse for that. Absolutely. And the fact that BJP has also managed to win, in tribal pockets, in other places, that's a very worrying sign for the Congress, that they are reduced to only the minority-dominated seats. In fact, one of the major contributors to the BJP's victory in 2016 and 2021 was how the tribal areas had voted. Apart from we talk about the Muslims and the T tribe, so-called the Adivasis as being the largest en bloc voters. But then the tribal areas also played a major part. So they have been. So I think Congress has a long way to go, and it has to really work hard to get back that base, because it's a huge base. It's not 15 seats in Boroland, maybe around 10 odd more in the two other hill districts. So it's quite a lot. 25, 26 seats. It matters in an assembly of 126 members. Right. If I may ask Sandeep. Yes.
if Gaurav loses, what does this mean for the Tarun Gogoi legacy that anchored the party for 2 decades? Like, Well, it'll be a setback if he loses most certainly, if he loses the assembly elections. To begin with, it was a tough seat. See, a Lok Sabha and a assembly seat, very different. So he was taking on the incumbent, though there was an element of anti-incumbency against Mr. Goswami, but he is a formidable opponent. He's very accessible. He's been the speaker, very knowledgeable, highly political person. So if Gaurav loses the seat, as Rahul put it quite accurately, that maybe the message was that you represent us, you are a powerful voice in parliament, you represent us in parliament, you raise the issues of the state in parliament, but you will still have to do some homework to win our trust, to be our MLA. So it is going to be a challenge for him to continue in his position. If he loses his own election, it is going to be a challenge to continue in his position as the APCC chief. Because first of all, this is going to be one of the poorest shows, I think, Rahul, if I Yes. remember correctly, this will be one of the... Jorhat has just been declared. Hitendranath Goswami has won by 23,100, margin of 23,182 votes. So that is a massive victory, massive victory. So from here on, Rajkamal, it's very difficult, first of all, to justify his position. No, somebody who could not win his own state, who led the party and did fairly poorly. So, I mean, first, he could not win his own seat. Second, he is leading the party, which is performing quite miserably. So it will be difficult for him to continue in his current position as APCC chief. But even if he were to continue, to build a team and to inspire confidence, it's going to be difficult. Because, see, you have to give it to Mr. Sharma, and you have to give it to his brand of politics, that whether they lose, they win, whatever they do, they're constantly on the ground, constantly at it, which is not the case with the Congress. Congress protests have also become very event-centric. It shouldn't happen. That should not happen. I mean, the chief minister makes very controversial statements, we all know. But on the ground, we know, and I'm sure Rahul can add to it, that there are, at least for the indigenous, Muslims don't complain that they are not getting Arunodaya scheme or other schemes, the welfare schemes, at least for the indigenous Muslims. So even the non-indigenous Muslims also get it. That's what I came to know. So all his public statements are also part of a rhetorical construct that is aimed more nationally, perhaps to make him the number 2, 3 Hindutva leader, whatever, not number 2, 3, but maybe 4, 5, but among the top 5 leaders, chief ministers. I mean, come to think of it, Rajkamal, that there are so many chief ministers, but after the top leadership of the BJP, when you think of chief ministers now, you think of Yogi Adityanath, you think of Himanta Biswa Sarma. There's a Fadnavis, there's a Pramod Sawant, there's Bhajanlal Sharma, there's Mohan Yadav. There are so many, Vishnu Dev Sai. There are so many of them who are traditional BJP leaders who've grown from risen from the ranks. But I think that that is another aspect that his government has been able to deliver, at least in terms of the welfare schemes on the ground. Yes. That no one denies. Most. Lastly, Sandeep,
if we talk about the Zubin Garg factor, how did the absence of Zubin Garg impact the intensity of opposition's campaign? Yeah, that's actually a very interesting question because Zubin Garg had actually led the anti-CAA protests when they were happening. But then in the middle of it, he uh, became very seriously unwell and he went away. And at that point of time, in fact, the then Chief Minister, Mr. Sonowal, had almost remained invisible and had stayed very silent. It was only Himanta Biswa Sarma, who was the number 2 then, health minister and finance minister and all that. He was leading the BJP's charge on the CA Citizenship Amendment Act. But after and most of the other artists who had joined Zubin Garg had eventually dropped their opposition to the BJP. Many of them rejoined the BJP, and BJP successfully won the election in 21, and before that the Lok Sabha. This time around, we saw unprecedented scenes. Unprecedented. I've never seen. The only other occasion when we saw such mass outpouring of grief was when Bhupendra had died. But Bhupendra had died, under normal circumstances, in the sense that he died of old age ailments. Zubin's death also was controversial. He died far away in Singapore. So given that, given the circumstances around Zubin's death, there was a lot of anger out on the streets. I think for a few days, perhaps it would not be an exaggeration to say that people had almost become lawless. But from there to come around, and as Rahul said, that opposition may have played up the Zubin factor a little bit. Clearly, I, for one, believe that the youth and the younger generation was angry against the BJP. But I think Congress, Rahul, I would say they were, I'm told that they did not go all out to make it a political issue because the family of Zubin Garg did not want it to be a political issue. That's what a very senior Congress leader told me. And that's why they did not go the whole hog. But they kept saying that we will justice for Zubin in the manifesto, and within 100 days, Rahul Gandhi mentioned that in his speech. But clearly, that anger had dissipated over time, and it wasn't. Congress also did not. I think they stopped somewhere in between. They did not make it a fully political issue. But they also wanted to make a talking point so leaders would visit Zubin Khetra, his memorial, or meet the family. But it didn't work. It didn't have a resonance with the voters. Yes, it didn't. And finally, Rahul, go ahead. No, as I said earlier, things on the ground was quite difficult, quite different from what you got to hear and see and read on social media and other platforms. And even on the studios, because everything in the studios or before the camera happens within the 45-degree angle. Beyond that, there's hardly anything. Sandeep, finally, the Congress leader will have a lot to think about after this results. What do you think will be the first thing they would want to change in Assam? It's been 3 terms. Yes. Yeah, go ahead. Yeah. No, I think the first thing they should do is to fix accountability. I think accountability should start at the top. So in my opinion, the General Secretary in charge of Assam, the Congress General Secretary in charge of Assam, he shouldn't even wait, for leadership to tell him anything. He should immediately resign, step down. Number one. Number two,
they should also, and I mean, I'm sure they will be analyzing the reasons why they lost. I mean, it's not even easy for you to argue that, look, it's in an election where the government is in power and where they are giving you so many SOPs, welfare schemes. How do you match those welfare schemes? You can only promise that you will improve upon those schemes. But if you're getting in hand, then people tend to stay with them. But that narrative did not work in Bengal. In Bengal, it was the BJP who was promising, and Mamata Banerjee's government was giving them. Actually, Lakhi Bhandar and all others, Rupashri, Kanyashri. And yet, the last I saw, they were not touching 3-digit. So, what I'm saying is that they will have to analyze and build a narrative which is better than just latching on to a few emotional issues. I think they will have, and also, I say this again and again, that they will have to, they can't have to wait for a time that people will get fed up with this government and vote us in. That may or may not happen, because BJP currently, under the current leadership, they are great disruptors. By the time they complete next 5 years, they will bring up something else that will completely change the rule of the game. So they, to improve, to match the Congress, to match the BJP, the Congress has to do something better than the BJP. So I think first is accountability. Second, you'll have to be on the ground, visible, build a next generation of leadership, and just be on the ground. Absolutely, I agree. Can it match the BJP's organizational skills? Like, it will have to start afresh. Rahul, why don't you take that question? Can you come again, please? Can the Congress match the BJP's organizational prowess, is what Rajkamal is asking. It's at this point in time, I think it seems pretty difficult, but see, nothing is impossible in this world. If you have a better idea, sometimes even a one man can make a lot of difference. So they have to plan. In Tamil Nadu. Yes, Vijay. So I think, but the thing is, they have to outthink the BJP and some of its leaders all the time, and then they have to plan, because what BJP does, I think, as I said earlier, BJP has before this election, maybe from today itself, they have started planning for the next 2 elections. So this is how they work. So I think Congress has to learn something from the party, and not. The way I see it, the way the Congress works is like the, survey agencies, like people, they come, they meet 12 people in a city and another 10 people in another city, and not go to the rural, and then they draw an average of this many. So many people in Assam think that, they'll have some certain questions, and they'll draw inference from a few people that they interview. So I think that's the way the Congress is working at this moment. I think they have to really go to the ground and, touch base and, deal with people. And like what the BJP does, they have this Prista Pramukh, a person in charge of all the voters on one page of the electoral roll. And they do it quite regularly. They touch base. Even if they don't have anything to say, they just meet people like that. I think that's how they are always in the picture. So the Congress has to learn something from it and not just sit idle. Thank you, Sandeep. Thank you, Rahul. For now, it looks like a BJP sweep and the BJP hat trick. Stay tuned. We'll return with more. Thank you. Sure. Thank you. करता हूँ और सभी को आने वाला समय में, आने वाला 5 साल में असम वासियों का जो आशाएं है, आकांक्षाएं है, उसको पूरा करने के लिए हम हर कोशिश करेगा। और असम के जो इश्यूज है, असम के जो विकास का मुद्दा है, सुरक्षा का मुद्दा है, सभी विषय को हम, जैसे हमने
प्रॉमिस किया था संकल्प पत्र में, एक एक संकल्प पत्र का बिंदु हम इसको कार्यकारी करेंगे और निश्चित रूप से आसाम में जो जीत है, ये जीत केवल साधारण जीत नहीं है, ये ऐतिहासिक है। ये आसाम के विकास और सुरक्षा के प्रति आसाम का जनता जनार्दन का बहुत बड़ा भरोसा है बीजेपी एनडीए के ऊपर। तो देखा गया कि बंगाल में भी बवाल हो गया कि निश्चित रूप जैसा वैसा कर लीजिए। क्या कहेंगे जो रुझान आए हैं? देखिए, रुझान तो असम में संतोषजनक बिल्कुल नहीं है। जो हमारी आशा थी उसके प्रतिकूल है। अभी भी राउंड्स बाकी हैं और हम अपने सारे दलों के जितने भी हमारे प्रतिनिधि हैं, प्रत्याशी हैं, हमारे दल के जितने भी कर्मी हैं, सबको ही हम अनुरोध करें कि जब तक अंतिम वोट की गणना नहीं होती है, हम सबको चौकन्ना रहना है, हमको काउंटिंग सेंटर्स में रहना है। बहुत से ऐसे विधानसभाएं हैं जहां पर मार्जिन चाहे लीडिंग का हो चाहे ट्रेलिंग का हो, मार्जिन बहुत ही कम है। तो पूरा हमें चौकन्ना रहना है और निश्चय ही संपूर्ण जब रिजल्ट आने के बाद हम आने वाले समय की कैसे हम तैयारी करेंगे, कैसे हम आगे बढ़ेंगे, उसको लेकर निश्चय दल के अंदर असम के लोगों के साथ और हमारे केंद्रीय नेतृत्व के साथ विचार विमर्श करेंगे। अगले इलेक्शन के लिए आप लोगों का क्या प्लान है? नहीं, बिल्कुल हमारे अगला जो हमारा म्यूनिसिपैलिटी हमारे इलेक्शंस आ रहे हैं और हमको अभी से ही वैसे हमने पहले से ही शुरुआत कर लिया था प्रचार के समय ही कि आने वाले लोकसभा चुनाव में हमें किस प्रकार से आगे बढ़ना है। जो सारे रिजल्ट्स आने दीजिए, जो हमको सीख लेनी है वो निश्चय हम सीखेंगे। कांग्रेस पार्टी एक बहुत मजबूत पार्टी है और हर विजय या हर पराजय से कैसे आगे बढ़ना है, कैसे हमको सबक लेना है, यह पार्टी हमारी बहुत अच्छी। जोरहाट में यू आर ट्रेलिंग as of now counting is still going on. The results, booth wise results are not yet out, and obviously once the results are out, once the numbers are out, we will be able to make a better analysis. But no doubt overall trends are extremely disappointing. Nonetheless, because counting is still undergoing, we have requested all our candidates, all our party workers to be watchful, to make sure that every vote is counted fairly and transparently. And once the entire result sheet is out, booth-wise result is out, no doubt we would go into our analysis. One message for the people of Assam, sir? No, I think, as I said, through this campaign, we've got a lot of love and a lot of support from the people of Assam. Even today, many people have called us to express their disappointment. For all those who have voted for us, we express our gratitude towards them. All the workers who have worked so hard, we're expressing, and they continue to work hard in the counting centers. So we express our gratitude to them. And as I said, we would take the right lessons forward. As of now, counting is still undergoing, so we would pay attention to make sure that
till the last round, every vote is counted fairly and transparent. Thank you. You are the Thank you. Congress face. Will you Thank take you. responsibility for this? Thank you. Sir, फटाफट निकाल देते हैं तो उनका पीछे चलाएगा नहीं ये प्रमोद जी को बोलो TP6 आसाम हाँ हाँ ये लाइट फ्रेम देखा आसाम में ठीक है निकल रहा है TP6 ठीक है अभी निकलेंगे गुरु भाई ये कनेक्ट हो गई बच्चे को मार दो लाल हो गया देखो हो गया लाइव नहीं तो फिर वही है शाम का ही है ठीक है उधर ज़्यादा सही रहता है ना वो कह रहे हैं इधर पता नहीं क्या कह रहे हैं नहीं सही है ना वो छोड़ेंगे नहीं होंगे नहीं वो प्रॉब्लम होगा तो बाहर से चले जाएंगे নহ'লে এইফালে নোলাই বেলেগ ফালে গুচি যাব আমাৰ একো নহ'ব নলাই দিয়ক অঁ निकालने के लिए टाइम है इस रास्ते से नहीं जाएगा दूसरे रास्ते से जाने से हम लोग का बर्बाद ही हो जाएगा है कि नहीं पूरा यहाँ जब आएगा हम लोग को मालूम पड़ जाएगा बैग लो बैग और बैग और नालागे गाइस मिनिटा करना पड़ा जाओ
जी हाँ रिसीवर टू से लाइव है मैं सीएम आवाज के वहाँ पे सही कर रहा है कि जा चुके ना अपना फोन ಕೋಟೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ರಿ ಅದು 12,000 ಲೀಡ್ ಇದೆಯಪ್ಪ ದಾವಣಗೆರೆನೂ 12,000 ಲೀಡ್ ಇದೆ ನಾನು ಲೈನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ 12,196 ವೋಟು 13ನೇ ರೌಂಡ್ಗೆ ಲೀಡ್ ಇದೆ. ಬಟ್ SDPI ವೋಟು ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಡೇಂಜರ್ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಅಷ್ಟು ವೋಟು ಕ್ರಾಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬಿಗ್ ಸೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್. SDPIಗೂ 12,000 ವೋಟು ಆಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿದೆ.
ಎಲ್ಲ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಏನು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು CM ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನೇನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಜನ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಚೆನ್ನಾಗೇ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಜನರ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ಗಳು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾರಣ. ಇನ್ನು 7 ರೌಂಡ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ರೌಂಡಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ UDF ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಅಲ್ಲೇನೋ ನಿಮ್ಮ ಮೈತ್ರಿ ಅಧಿಕಾರಿಕ ಪರ್ವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇರಳ ನಮಗೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇತ್ತು. ಲೋಕಲ್ ಬಾಡಿ ಎಲೆಕ್ಷನಲ್ಲೂ ಜನ ವೋಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. 10 ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಬದಲಾವಣೆ ಬೇಕು ಅಂತಿತ್ತು. ನಾವೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಹೋದಾಗ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಜನ ಭಾಳ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು. ಸೊ ಇವತ್ತು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬೆಂಬಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಬಟ್ ನಮಗೆಲ್ಲ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ತಮಿಳುನಾಡು ಒಂದು ಹೊಸ ಯುಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು DMK ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಜನರ ನಿರೀಕ್ಷೆನೇ ಬೇರೆ. ಸೊ ನಾವು ರೀಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಲೀಡರ್ಸು ಹೇಳಿದರು. ಬಟ್ ಆದರೆ ನಮ್ಮ 40 ವರ್ಷದ ಸಂಬಂಧ ನಂಟಿಸ್ತಾನೆ ಹೆಂಗೆ ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗ್ತದೆ? ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಕಾರಣ ಏನಾಗ್ತಾಯಿತ್ತು ಸರ್? ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ನಾನು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಪಾರ್ಟಿ ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ನಾನು ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಬಟ್ ಈ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲವೂ ವೋಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಮರ್ಶೆಗಳು ಬಂದಿತ್ತು. ಅವು ಒಂದು 30-40% ವೋಟು ಮುಟ್ತದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾವು. ಬಟ್ ಇಷ್ಟು ಮೇಜರ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ರೀಡಿಂಗ್ ವಾಸ್ ರಾಂಗ್. ನಾನು ಈ ನಮ್ಮ ಬಾರ್ಡ್ಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ನಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿದ್ದೆ ನಾನು. ಸರ್, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯ ನೀವು ಅಸ್ಸಾಂಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೈ ಹಿಡಿಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮತದಾರ. ಉಸ್ತುವಾರಿ ಇಲ್ಲ ರೀ, ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನೇನು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಏನಿರಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಬೀಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ, ಹೋಗೋದು ಬರೋದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿ, ಪಾರ್ಟಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಇರ್ತದೆ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ನಾವು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಸೀಟ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಒಂದು 50ವರೆಗೂ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು. ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಅವರು 50 ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯಿತು? ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಬೇರೆ, ಆದರೂ ಆಗಿದ್ದೇ ಬೇರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನ್ಗೆ ಭಾಳ ಪ್ಲ್ಯಾಂಡಾಗಿ ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಎಲ್ಲ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರದ್ದೇ ಅಂತ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಮಿಷನ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಿಷನ್, ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಮಿಷನ್ ಎಷ್ಟು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇತರ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಯಾಕೆ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇದೆ? ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆಗಿಲ್ಲ. ಈಗೆಲ್ಲ ಆಗಿ ವೋಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ 2 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು. ಏನಪ್ಪ? ಹಲೋ, ಹೌದಾ? ಕೆಳಗಡೆ ಹಿಡಿತಾ? ಹಲೋ, ಓಕೆ, ಆಯಿತು. 8,800 ಚಿಲ್ಲರೆಗೆ ನಿಂತಿದ್ದಂತ ಅವನು. ಇನ್ನು 5 ರೌಂಡ್ ಆಗಿದೆ. 8,000 ಆಗಿದೆ ಅಂತ ರೆಡಿ ಜೊತೆಗೆ. 12 ಇತ್ತು ಅಂದರು, 8,000 ಅಂತ.
ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 20,000 to 30,000 ಲೀಡ್ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಏನು 20,000-30,000 ಇವೆಲ್ಲ ಗೊಂದಲ ಆದಮೇಲೆ 20,000 ನಾವೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಚುನಾವಣೆ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿ ಗೆಲ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ. ಇವೆಲ್ಲ ನಾನು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ಬೆಳಗ್ಗೆ CM ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಿ ವಾಪಸ್ ಏನು ಮಾಡೋದು. ಆದಂತ ಎಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಿಗೂ ಒಂದು ರೀತಿ ಕೈಗನ್ನಡಿ ಅಂತ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಸರ್. ಸದ್ಯದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೈಗನ್ನಡಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮತಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಈಗ SDP ಏನು ಲೈಟಾಗಿ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. SDP ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಗೊಂಡು ಕೆಲವೊಂದು ನಾಯಕರು ಮುಸ್ಲಿಂ ನಾಯಕರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಥರ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು 15,000 ನಾನೇನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡಿದೆ. ನಮಗೆಲ್ಲ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ನಾನು ತರೋದು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆಗು ಹೋಗೋಣ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕೋದೇ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಸರ್ ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ ಏನಾದರೂ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಆವಾಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಲೀಡರ್ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೋಲು ಗೆಲುವು ಎಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಅದೆಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಾ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡೋಷ್ಟು ಮೂರ್ಖ ನಾನಲ್ಲ. ನೀವು ನನ್ನ ಯಾರೋ ರೋಡಲ್ಲಿ ಏನೋ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ನನಗೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ 5 ರಾಜ್ಯದ ಚುನಾವಣೆ, ರಾಜ್ಯದ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಎಲ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಏನಾಗಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಎಲ್ಲ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕೆಲವು ಬೇಜಾರಾಗ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದವು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆಯಿತು, ನಿನ್ನೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ. ನಿನ್ನೆ ಏನು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಶೃಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆದಿದೆ, ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಾದರಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಕ್ರೈಮ್. ಏನು ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಗಿದ್ದಂಥ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದಂಥ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಪೇಪರ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೆಲವನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ ವೋಟ್ ಮೇಲೆ, ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗೆ ಬಿದ್ದಂಥ ವೋಟ್ ಮೇಲೆ, ವೋಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟೈರ್ ಬಂಡ್ಲುಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಂತ ಡಿಸಿಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೋಟನ್ನು ಕೂಡ ತೋರಿಸಿರ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ರಾಜೇಗೌಡರು ಬಿದ್ದಿದೆ, ಜೀವರಾಜ್ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ವೋಟ್ನ ತೋರಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕೂಡ ನಡೆದಿರ್ತದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಬಂಡ್ಲ ಆದಮೇಲೆ, ಬಂಡ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾ ಟ್ಯಾಂಪರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಷ್ಟು ವೋಟ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ವೋಟ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದೊಂದು ಇದನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೋರ್ಟಿಂದ ಆರ್ಡರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತನಿಖೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ನಾನು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಹತ್ರ ಅವರು ಕೂಡ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಮೊದಲು ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಯವರು ಕೂಡ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನನಗೆ ತಂದು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಬ್ಯಾಲೆಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಯವರು ಕೂಡ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ತಿರ್ಗಾ ಬಂದಾಗ ಒಂದೊಂದು ವೋಟ್ನ ಒಬ್ರಿಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದ ವೋಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದೊಂದು ವೋಟ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಅವರು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ಆಫೀಸರು. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ಯಾರಿದ್ರು, ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಇದ್ದರು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಸು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ. ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೋ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಲೀಡ್ರು, ಹೆಸರು ಹೇಳೋದು ಬೇಡ, ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಪೇಪರ್ನ ನುಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ನನಗೆ ನೆನಪಿದೆ, ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆಟ್ನ ಯಾವುದೋ ಮಿಲ್ಕ್ ಯೂನಿಯನ್ ಎಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ. ಈಗ ಈ ರೀತಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ
ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಥರ ಮಾಡಿ ಈ ಕುತಂತ್ರ ನಡೆಸಿ ಈ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಇರೋಂಥ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿರೋದು. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಫೈಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನು ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಲೀಗಲಿ ಏನು ಫೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಗೆದ್ದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಗೆದ್ದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಡೇ ಒನ್ನಿಂದನೂ ಕೂಡ ರಾಜೇಗೌಡರ ಮೇಲೆ ಅವನ ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ BJP ಅಂತ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಸೋಲ್ತಾರೆ ಅದು ಬೇರೆ ವಿಚಾರ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಶಾಕಿಂಗ್ ಇದು. ನಾವು ಬೇರೆ ಓಟ್ ಬಂದಾಗ ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ನಾನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಂಚ್ ಥರ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ನಮಗೆ ಈ ಥರ ಅನುಮಾನ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೋ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಲೆ. ಈಗ ಅವರು ಗಾಯತ್ರಿ ಶಾಂತನಗೌಡದು ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಆಯಿತು. ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಕೂಡ 1 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಇನ್ನೂ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಬರೀ 12 ಓಟಲ್ಲಿ ಸೌಮ್ಯ ರೆಡ್ಡಿದ್ದು ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅದೊಂದು ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಮಾತ್ರ ಹೆಂಗೆ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತದೆ? ಎಲ್ಲ ಮೂವ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಇದನ್ನ ವಿಚಾರ ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸರ್, ಈಗ JDS ಅವರು ಅಂದರೆ ಈಗ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಪೇಪರ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಫಲಿತಾಂಶ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಶೃಂಗೇರಿರು ಮುಂದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಚುನಾವಣೆ ಅಂತ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತಾಡೋಣ ಬಿಡಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ಆಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಬಿಡ್ತಾರೋ, BJP ಜೊತೆ ಮರ್ಜ್ ಆಯ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲ ನೋಡೋಣ ಫಸ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, JDS ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದಮೇಲೆ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ರಾಜ್ಯಗಳು ಅಂದರೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಕೇರಳ ಹೆಂಗೋ UDF ಬಂತು, ಬಟ್ ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ BJPಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಇವಾಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಒಂದು ತೆರಿಗೆ ವಿಚಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಭಾಷೆ ವಿಚಾರವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಬಟ್ ಈಗ BJP ಲೀಡರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡೋಣ, ನಡೀರಿ, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ.
जैसा वैसा कर दीजिए So what will be? कहेंगे जो रुझान आए हैं देखिए, रुझान तो असम में संतोषजनक बिल्कुल नहीं है। जो हमारी आशा थी उसके प्रतिकूल है। अभी भी राउंड्स बाकी हैं और हम अपने सारे दलों के जितने भी हमारे प्रतिनिधि हैं, प्रत्याशी हैं, हमारे दल के जितने भी कर्मी हैं, सबको ही हम अनुरोध करें कि जब तक अंतिम वोट की गणना नहीं होती है, हम सबको चौकन्ना रहना है, हमको काउंटिंग सेंटर्स में रहना है। बहुत से ऐसे विधानसभाएं हैं जहां पर मार्जिन चाहे लीडिंग का हो चाहे ट्रेलिंग का हो, मार्जिन बहुत ही कम है। तो पूरा हमें चौकन्ना रहना है और निश्चय ही संपूर्ण जब रिजल्ट आने के बाद हम आने वाले समय की कैसे हम तैयारी करेंगे, कैसे हम आगे बढ़ेंगे, उसको लेकर निश्चय दल के अंदर असम के लोगों के साथ और हमारे केंद्रीय नेतृत्व के साथ विचार विमर्श करेंगे। अगले इलेक्शन के लिए आप लोगों का क्या प्लान है? नहीं, बिल्कुल हमारे अगला जो हमारा म्यूनिसिपैलिटी हमारे इलेक्शंस आ रहे हैं और हमको अभी से ही वैसे हमने पहले से ही शुरुआत कर लिया था प्रचार के समय ही कि आने वाले लोकसभा चुनाव में हमें किस प्रकार से आगे बढ़ना है। जो सारे रिजल्ट्स आने दीजिए, जो हमको सीख लेनी है वो निश्चय हम सीखेंगे। कांग्रेस पार्टी एक बहुत मजबूत पार्टी है और हर विजय या हर पराजय से कैसे आगे बढ़ना है, कैसे हमको सबक लेना है, यह पार्टी हमारी बहुत अच्छी है। जो जोरहाट में यू लूज ट्रेलिंग as of now counting is still going on. The results, booth wise results are not yet out, and obviously once the results are out, once the numbers are out, we will be able to make a better analysis. But no doubt overall trends are extremely disappointing. Nonetheless, because counting is still undergoing, we have requested all our candidates, all our party workers to be watchful, to make sure that every vote is counted fairly and transparently. And once the entire result sheet is out, booth-wise result is out, no doubt we would go into our analysis. One message for the people of Assam, sir? No, I think, as I said, through this campaign, we've got a lot of love and a lot of support from the people of Assam. Even today, many people have called us to express their disappointment. For all those who have voted for us, we express our gratitude towards them. All the workers who have worked so hard, we're expressing, and they continue to work hard in the counting centers. So we express our gratitude to them. And as I said, we would take the right lessons forward. As of now, counting is still undergoing, so we would pay attention to make sure that till the last round, every vote is counted fairly and transparent. Thank you. You are the Thank you. Congress face. Will you Thank take you. responsibility for this? Thank you. Sir, फटाफट निकाल देते हैं। हेलो, ये प्रमोद जी को बोलो TP6 असम हाँ ये लाइट
ये लाइव फ्रेम देखा आसाम में, ठीक है, निकल रहा है, ठीक है, अभी निकलेंगे। गुरु भाई, ये कनेक्ट हो गई, बच्चे को मार दो, लाल हो गया देखो, हो गया लाइव नहीं तो फिर वही है, शाम का ही है। ठीक है, उधर ज़्यादा सही रहता है ना, वो कह रहे हैं इधर पता नहीं क्या कह रहे हैं, यहीं पर ही है ना, वो छोड़ेंगे नहीं, वो प्रॉब्लम होगा तो वहाँ से चले जाएंगे। निकालने के लिए टाइम है, इस रास्ते से नहीं जाएगा, दूसरे रास्ते से जाने से हम लोग का बर्बाद नहीं हो जाएगा, ठीक है कि नहीं? पूरा यहाँ जब आएगा हम लोग को मालूम पड़ जाएगा। बैग लो, बैग और नालागे गाइस मिलता को ना पकड़ जाओ। रिसीवर टू से लाइव है, मैं सीएम आवाज के वहाँ पे।
सही कर रहा है कि जांच उठ पे ना अपना फोन ಕೋಟೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್, ಮತ್ತೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ರಿ. ಅದು 12,000 ಲೀಡ್ ಇದೆಯಪ್ಪ. ದಾವಣಗೆರೆನೂ 12,000 ಲೀಡ್ ಇದೆ. ನನ್ನ ಲೈನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. $12,196 ವೋಟು 13ನೇ ರೌಂಡ್ಗೆ ಲೀಡ್ ಇದೆ. ಬಟ್ SDPI ವೋಟು ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಡೇಂಜರ್ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಅಷ್ಟು ವೋಟು ಕ್ರಾಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬಿಗ್ ಸೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್. SDPIಗೂ 12,000 ವೋಟು ಆಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿದೆ. ಯಾರೇ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಏನು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು CM ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನೇನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಜನ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಚೆನ್ನಾಗೇ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಜನರ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ಗಳು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾರಣ. ಇನ್ನು 7 ರೌಂಡ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ರೌಂಡಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ UDF ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಅಲ್ಲೇನೋ ನಿಮ್ಮ ಮೈತ್ರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಪರ್ವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇರಳ ನಮಗೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇತ್ತು. ಲೋಕಲ್ ಬಾಡಿ ಎಲೆಕ್ಷನಲ್ಲೂ ಜನ ವೋಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. 10 ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಬದಲಾವಣೆ ಬೇಕು ಅಂತಿತ್ತು. ನಾವೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಹೋದಾಗ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಜನ ಭಾಳ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು. ಸೊ ಇವತ್ತು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬೆಂಬಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಬಟ್ ನಮಗೆಲ್ಲ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ತಮಿಳುನಾಡು ಒಂದು ಹೊಸ ಯುಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು TMK
DMK ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಜನರ ನಿರೀಕ್ಷೆನೇ ಬೇರೆ. ಸೊ ನಾವು ರೀಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಲೀಡರ್ಸು ಹೇಳಿದರು. ಬಟ್ ಆದರೆ ನಮ್ಮ 40 ವರ್ಷದ ಸಂಬಂಧ ನಂಟಿಸ್ತಾನ ಹೆಂಗೆ ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗ್ತದೆ? ಒಟ್ಟಾಗಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಕಾರಣ ಏನಾಗ್ತಾ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ನಾನು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಪಾರ್ಟಿ ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ನಾನು ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲವೂ ಓಟ್ देखिए, रुझान तो असम में संतोषजनक बिल्कुल नहीं है। जो हमारी आशा थी उसके प्रतिकूल है। अभी भी राउंड्स बाकी हैं और हम अपने सारे दलों के जितने भी हमारे प्रतिनिधि हैं, प्रत्याशी हैं, हमारे दल के जितने भी कर्मी हैं, सबको ही हम अनुरोध करें कि जब तक अंतिम वोट की गणना नहीं होती है, हम सबको चौकन्ना रहना है, हमको काउंटिंग सेंटर्स में रहना है। बहुत से ऐसे विधानसभाएं हैं जहां पर मार्जिन चाहे लीडिंग का हो चाहे ट्रेलिंग का हो, मार्जिन बहुत ही कम है। तो पूरा हमें चौकन्ना रहना है और निश्चय ही संपूर्ण जब रिजल्ट आने के बाद हम आने वाले समय की कैसे हम तैयारी करेंगे, कैसे हम आगे बढ़ेंगे, उसको लेकर निश्चय दल के अंदर असम के लोगों के साथ और हमारे केंद्रीय नेतृत्व के साथ विचार विमर्श करेंगे। अगले इलेक्शन के लिए आप लोगों का क्या प्लान है? नहीं, बिल्कुल हमारे अगला जो हमारा म्यूनिसिपैलिटी हमारे इलेक्शंस आ रहे हैं और हमको अभी से ही वैसे हमने पहले से ही शुरुआत कर लिया था प्रचार के समय ही कि आने वाले लोकसभा चुनाव में हमें किस प्रकार से आगे बढ़ना है। जो सारे रिजल्ट्स आने दीजिए, जो हमको सीख लेनी है वो निश्चय हम सीखेंगे। कांग्रेस पार्टी एक बहुत मजबूत पार्टी है और हर विजय या हर पराजय से कैसे आगे बढ़ना है, कैसे हमको सबक लेना है, यह पार्टी हमारी बहुत अच्छी। जो जोरहाट में यू लूज ट्रेलिंग as of now counting is still going on. The results, booth wise results are not yet out, and obviously once the results are out, once the numbers are out, we will be able to make a better analysis. But no doubt overall trends are extremely disappointing. Nonetheless, because counting is still undergoing, we have requested all our candidates, all our party workers to be watchful, to make sure that every vote is counted fairly and transparently. And once the entire result sheet is out, booth-wise result is out, no doubt we would go into our analysis. One message for the people of Assam, sir? No, I think, as I said, through this campaign, we've got a lot of love.
and a lot of support from the people of Assam. Even today, many people have called us to express their disappointment. For all those who have voted for us, we express our gratitude towards them. All the workers who have worked so hard, we're expressing, and they continue to work hard in the counting centers. So we express our gratitude to them. And as I said, we would take the right lessons forward. As of now, counting is still undergoing. So we would pay attention to make sure that till the last round, every vote is counted fairly and transparent. Thank you. You are the Thank Congress you. base. Will you Thank take you. responsibility for this? Thank you. Sir, फटाफट निकाल देते हैं तो उनका पीछे चलाएगा नहीं हेलो ये प्रमोद जी तो बोलो टीवी6 आसाम हाँ ये लाइव फ्रेम देखा आसाम में ठीक है निकल रहा है ठीक है अभी निकलेंगे गुरु भाई ये कनेक्ट हो गई बच्चे को मार दो लाल हो गया देखो ठीक है लाइव नहीं तो फिर वही है शाम का ही है ठीक है उधर ज़्यादा सही रहता है ना वो कह रहे हैं इधर पता नहीं क्या कह रहे हैं यहीं पर ही है ना वो खोलेंगे नहीं वो प्रॉब्लम होगा तो बाहर से चले जाएंगे নহ'লে এইফালে নোলাই বেলেগ ফালে গুচি যাব আমাৰ একো নহ'ব পলাই দিয়ক অঁ निकलने टाइम है इस रास्ते से नहीं जाएगा दूसरे रास्ते से जाने से हम लोग का बर्बाद हो जाएगा है कि नहीं पूरा यहाँ जब आएगा हम लोग को मालूम पड़ जाएगा बैक लो बैक
रिजल्ट तो लाइव है मैं सीएम आवाज के वहाँ पे ಕೋಟೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ರಿ ಅದು 12,000 ಲೀಡ್ ಇದೆಯಪ್ಪ. शानदार विजय हुई है हेमंत बिस्वा जी के नेतृत्व में। आप चारों तरफ का माहौल देख सकते हैं और इतनी ही शानदार विजय इस बार बंगाल में हुई है। जो कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की है और असम की जनता ने, बंगाल की जनता ने, पांडिचेरी की जनता ने जो भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अमित शाह जी ने जो मेहनत की है और स्थानीय कार्यकर्ताओं ने और यह हेमंत बिस्वा में जो विश्वास व्यक्त किया है असम की जनता ने, वो शानदार है। और जो काम किया है उस काम पर लोगों ने अपना विश्वास व्यक्त किया। राजू जी का बाइट ले ले।
मेरा नाम अंजन राजकुआ। मैं सोडोनाम वार्ड में रहता हूँ और मेंबर हूँ, एक्टिव मेंबर हूँ बीजेपी का। आज हितन गोस्वामी का जो जय है ये अभूतपूर्व जय है। ये हम लोग तो पहले से मालूम है जितेंद्र इस बार जीतेगा, लेकिन कुछ मेरा नाम रातुल दास है। एक बात सुनिए, जितना हम लोग का जोरहाट डिस्ट्रिक्ट का आदमी है ना, सब लोग एक ही बात सोचता है कि यहाँ में जो बीजेपी सरकार आएगा ना तो वही कुछ कर सकता है। ये कांग्रेस का कोई भेटी नहीं है यहाँ पे, डेवलपमेंट का थोड़े के नहीं है। और हितन गोस्वामी है ना, बहुत काम किया है, हिमंत बिश्व शर्मा ने काम किया है ना, और बहुत ये कि हमारा जोरहाट डिस्ट्रिक्ट के लिए बहुत अच्छा है। और एक बात सही है कि जितना ये लोग है ना, सब सनातन का धर्म का आदमी है और हिंदू का आदमी है। हम लोग का इसलिए एक बार बोले बंगाल में भी हमारा सरकार आ रहा है। हाँ, ममता दीदी का इसका सफाई हो रहा है, ममता दीदी का इस बार सफाई हो रहा है। हम लोग का बीजेपी सरकार आ रहा है, ममता दीदी का इस बार सब लोग नकार रहा है। और इतना जो ये लोग है ना, सब हिंदू का धर्म मिलेगा। हम लोग है हिंदुस्तान का, हम लोग का हिंदू का एक ही धर्म है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हम लोग होली खेलेगा, पार्टी भी करेगा कुछ। हाँ, हम लोग को कुछ नाच गाना भी होगा। हाँ, लेकिन बहुत मस्ती में हम रहेगा। हाँ, जो गोरखपुर के कैंडिडेट है ना, वो नकामा आदमी है, उसको कोई नकार है, दो कार वोट दे रहे, जुआर का कोई काम कर नहीं रहा है। हितन गोस्वामी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हितन गोस्वामी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हितन गोस्वामी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या कहेंगे जो सेलिब्रेशन कर रहे हैं उसके बारे में क्या कहेंगे? मामा जिंदाबाद, मामा का जिंदाबाद है। जय श्री राम। सब खुश है। দুই বছর একো কৰা নাই আমি চোৱাই নাই, ৰাইজে একো চোৱা নাই। গৌৰৱ হিতেন নাই আমাৰ মামা সব কাম কৰিছে, ডেভেলপমেণ্ট ৰাইজৰ কি লাগে, ডেভেলপমেণ্ট লাগে। আৰু এতিয়া আমি সবে মিলি কওঁ মনৰ পৰা যে জয় জুবিন দা, জয় জুবিন দা। সিহঁতে ৰাজনীতি কৰিছে, আমি ৰাজনীতি নকৰো, আমি জুবিনৰ নাম কম, জুবিন দা, জয় জুবিন দা, জয় জুবিন দা। देखिए, रुझान तो असम में संतोषजनक बिल्कुल नहीं है। जो हमारी आशा थी उसके प्रतिकूल है।
अभी भी राउंड्स बाकी हैं और हम अपने सारे दलों के जितने भी हमारे प्रतिनिधि हैं, प्रत्याशी हैं, हमारे दल के जितने भी कर्मी हैं, सबको ही हम अनुरोध करें कि जब तक अंतिम वोट की गणना नहीं होती है, हम सबको चौकन्ना रहना है, हमको काउंटिंग सेंटर्स में रहना है। बहुत से ऐसे विधानसभाएं हैं जहां पर मार्जिन चाहे लीडिंग का हो चाहे ट्रेलिंग का हो, मार्जिन बहुत ही कम है, तो पूरा हमें चौकन्ना रहना है और निश्चय ही संपूर्ण जब रिजल्ट आने के बाद हम आने वाले समय की कैसे हम तैयारी करेंगे, कैसे हम आगे बढ़ेंगे, उसको लेकर निश्चय दल के अंदर असम के लोगों के साथ और हमारे केंद्रीय नेतृत्व के साथ विचार विमर्श करेंगे। अगले इलेक्शन के लिए आप लोगों का क्या प्लान है? नहीं, बिल्कुल हमारे अगला जो हमारा म्यूनिसिपैलिटी हमारे इलेक्शंस आ रहे हैं और हमको अभी से ही वैसे हमने पहले से ही शुरुआत कर लिया था प्रचार के समय ही कि आने वाले लोकसभा चुनाव में हमें किस प्रकार से आगे बढ़ना है। जो सारे रिजल्ट्स आने दीजिए, जो हमको सीख लेनी है वो निश्चय हम सीखेंगे। कांग्रेस पार्टी एक बहुत मजबूत पार्टी है और हर विजय या हर पराजय से कैसे आगे बढ़ना है, कैसे हमको सबक लेना है, यह पार्टी हमारे बहुत अच्छे जो जोरहाट में यू लूज ट्रेलिंग as of now counting is still going on. The results, booth wise results are not yet out, and obviously once the results are out, once the numbers are out, we will be able to make a better analysis. But no doubt overall trends are extremely disappointing. Nonetheless, because counting is still undergoing, we have requested all our candidates, all our party workers to be watchful, to make sure that every vote is counted fairly and transparently. And once the entire result sheet is out, booth-wise result is out, no doubt we would go into our analysis. One message for the people of Assam, sir. No, I think, as I said, through this campaign, we've got a lot of love and a lot of support from the people of Assam. Even today, many people have called us to express their disappointment. For all those who have voted for us, we express our gratitude towards them. All the workers who have worked so hard, we're expressing, and they continue to work hard in the counting centers. So we express our gratitude to them. And as I said, we would take the right lessons forward. As of now, counting is still undergoing, so we would pay attention to make sure that till the last round, every vote is counted fairly and transparent. Thank you. You are the Thank you. Congress face. Will you take responsibility for this? Thank you. Sir, So, this victory is a victory of people of Assam. It's a victory of the visionary leadership of Pradhan Mantri Narendra Modi ji, Amit Shah ji, Nitin Nabin ji, and our State President Dilip Saikia, Honorable Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma. Their leadership's victory, because you see, Assam has witnessed unprecedented, remarkable development. It's unprecedented. So people voted for development. People, Assam has come across insurgency. We just a couple of years ago we saw how insurgency engulfed us. But now, peace and harmony and good, law and order situation is prevailing here in Assam. So people have witnessed this. So that is why they have blessed us and they have given us a clear mandate to serve the state for the third consecutive term. So as a citizen, as a member of my party, I wholeheartedly again, thank
the people of Assam for their blessings and support, and especially our 6.5 million karyakartas who have tirelessly, relentlessly dedicating themselves for the growth, for the strengthening the organization in our state. So this is a victory of those samarpit karyakartas. This is the victory of our 3.4 crore people, and this is victory of our leadership. And I think yes, people of India are marching towards the Viksit Bharat 2047 as envisioned by Paramadharina Pradhan Mantri Narendra Modi ji. So like Assam, the people of the other states, our neighboring West Bengal, Puducherry, there is change in Tamil Nadu also. So all people of India are marching towards the path of prosperity, progress, peace and harmony. So that is why we are getting mandate, blessings, cooperation from all the other parts of India also, including Assam. So we are really, it's a great day for our BJP and NDA karyakartas. So I think people of West Bengal were deprived from development. So corruption was corruption was plaguing there in West Bengal. So because of that, people actually outstayed the Mamata Banerjee's TMC. Now we are very much optimistic. We are sure that under the able visionary leadership of Paramadharina Pradhan Mantri Narendra Modi ji, double engine Sarkar will definitely bring back the development of West Bengal to the right track. So let's celebrate. Thank you. शानदार विजय हुई है हेमंत बिस्वा जी के नेतृत्व में। आप चारों तरफ का माहौल देख सकते हैं और इतनी ही शानदार विजय इस बार बंगाल में हुई है। जो कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की है और असम की जनता ने, बंगाल की जनता ने, पांडिचेरी की जनता ने जो भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अमित शाह जी ने जो मेहनत की है और स्थानीय कार्यकर्ताओं ने और यह हेमंत बिस्वा में जो विश्वास व्यक्त किया है असम की जनता ने, वो शानदार है। और जो
काम किया है, उस काम पर लोगों ने अपना विश्वास व्यक्त किया। राजू जी का बाइट ले ले। मैं सोडोनाम वार्ड में रहता हूँ और मेंबर हूँ, एक्टिव मेंबर हूँ बीजेपी का। आज हितेंद्र गोस्वामी का जो जय है ये अभूतपूर्व जय है। ये हम लोग तो पहले से मालूम है जितेंद्र इस बार जीतेगा, लेकिन
मेरा नाम रातुल दास है। एक बात सुनिए, जितना हम लोग का जोहाट डिस्ट्रिक्ट का आदमी है ना, सब लोग एक ही बात सोचता है कि यहाँ में जो बीजेपी सरकार आएगा ना तो वही कुछ कर सकता है। ये कांग्रेस का कोई भेटी नहीं है यहाँ पे, डेवलपमेंट का थोड़े के नहीं है। और इतने गुस्सा में है ना, बहुत काम किया है हिमंता बिस्वा शर्मा ने, काम किया है ना, और बहुत ये कि हमारा जोहाट डिस्ट्रिक्ट के लिए बहुत अच्छा है। और एक बात सही है कि जितना ये लोग है ना, सब सनातन का धर्म का आदमी है और हिंदू का आदमी है। हम लोग का इसलिए एक बार बोले, बंगाल में भी हमारा सरकार आ रहा है। हाँ, ममता दीदी का इसका सफाई हो रहा है, ममता दीदी का इस बार सफाई हो रहा है। हम लोग का बीजेपी सरकार आ रहा है, ममता दीदी का इस बार सब लोग नकार रहा है। और इतना जो ये लोग है ना, सब हिंदू का धर्म मिलेगा। हम लोग है हिंदुस्तान का, हम लोग का हिंदू का एक ही धर्म है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हम लोग होली खेलेगा, पार्टी भी करेगा कुछ। हाँ, हम लोग को कुछ नाच गाना भी होगा। हाँ, लेकिन बहुत मस्ती में हम रहेगा। हाँ, जो गोरखपुर का कैंडिडेट है ना, वो नकामा आदमी है, उसको कोई नकार है, दो कार वोट दे रहे, जुआर का कोई काम कर नहीं रहा है। मामा जिंदाबाद, मामा का जिंदाबाद है। सब खुश है। নিকা নিযুক্তি পৰীক্ষা থিয়া দিছে। আমাক বিজেপি চৰকাৰ লাগে, মোদী চৰকাৰ জিন্দাবাদ। গৌৰৱ গগৈ 2 বছৰ একো কৰা নাই, আমি চোৱাই নাই, আমি একো চোৱাই নাই, ৰাইজে একো চোৱা নাই। গৌৰৱ গগৈ হিতেন নাই, আমাৰ মামা সব কাম কৰিছে। ডেভেলপমেণ্ট ৰাইজৰ কি লাগে? ডেভেলপমেণ্ট লাগে। আৰু এতিয়া আমি সবে মিলি কওঁ মনৰ পৰা যে জয় জুবিন দা, জয় জুবিন দা। সিহঁতে ৰাজনীতি কৰিছে, আমি ৰাজনীতি নকৰো। আমি জুবিনৰ নাম কম, জুবিন দা, জয় জুবিন দা, জয় জুবিন দা। देखिए, रुझान तो असम में संतोषजनक बिल्कुल नहीं है। जो हमारी आशा थी उसके प्रतिकूल है। अभी भी राउंड्स बाकी हैं और हम अपने सारे दलों के जितने भी हमारे प्रतिनिधि हैं, प्रत्याशी हैं, हमारे दल के जितने भी कर्मी हैं, सबको ही हम अनुरोध करें कि जब तक अंतिम वोट की गणना नहीं होती है, हम सबको चौकन्ना रहना है, हमको काउंटिंग सेंटर्स में रहना है। बहुत से ऐसे विधानसभाएं हैं जहां पर मार्जिन चाहे लीडिंग का हो चाहे ट्रेलिंग का हो, मार्जिन
बहुत ही कम है, तो पूरा हमें चौकन्ना रहना है और निश्चय ही संपूर्ण जब रिजल्ट आने के बाद हम आने वाले समय की कैसे हम तैयारी करेंगे, कैसे हम आगे बढ़ेंगे, उसको लेकर निश्चय दल के अंदर असम के लोगों के साथ और हमारे केंद्रीय नेतृत्व के साथ विचार विमर्श करेंगे। अगले इलेक्शन के लिए आप लोगों का क्या प्लान है? नहीं, बिल्कुल हमारे अगला जो हमारा म्यूनसिपैलिटी हमारे इलेक्शंस आ रहे हैं और हमको अभी से ही वैसे हमने पहले से ही शुरुआत कर लिया था प्रचार के समय ही कि आने वाले लोकसभा चुनाव में हमें किस प्रकार से आगे बढ़ना है। जो सारे रिजल्ट्स आने दीजिए, जो हमको सीख लेनी है वो निश्चय हम सीखेंगे। कांग्रेस पार्टी एक बहुत मजबूत पार्टी है और हर विजय या हर पराजय से कैसे आगे बढ़ना है, कैसे हमको सबक लेना है, यह पार्टी हमारी बहुत अच्छी है। जोरहाट में you are trailing as of now counting is still going on. The results, booth wise results are not yet out, and obviously once the results are out, once the numbers are out, we will be able to make a better analysis. But no doubt overall trends are extremely disappointing. Nonetheless, because counting is still undergoing, we have requested all our candidates, all our party workers to be watchful, to make sure that every vote is counted fairly and transparently. And once the entire result sheet is out, booth-wise result is out, no doubt we would go into our analysis. One message for the people of Assam, sir. No, I think, as I said, through this campaign, we've got a lot of love and a lot of support from the people of Assam. Even today, many people have called us to express their disappointment. For all those who have voted for us, we express our gratitude towards them. All the workers who have worked so hard, we're expressing, and they continue to work hard in the counting centers. So we express our gratitude to them. And as I said, we would take the right lessons forward. As of now, counting is still undergoing. So we would pay attention to make sure that till the last round, every vote is counted fairly and transparent. Thank you. You are the Thank you. Congress base. Will you take responsibility for this? Thank you. Sir, So, this victory is a victory of people of Assam. It's a victory of the visionary leadership of Pradhan Mantri Narendra Modi ji, Amit Shah ji, Nitin Nabin ji, and our State President Dilip Saikia, Honorable Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma. Their leadership's victory, because you see, Assam has witnessed unprecedented, remarkable development. It's unprecedented. So people voted for development. People, Assam has come across insurgency. We just a couple of years ago we saw how insurgency engulfed us. But now, peace and harmony and good, law and order situation is prevailing here in Assam. So people have witnessed this. So that is why they have blessed us and they have given us a clear mandate to serve the state for the third consecutive term. So as a citizen, as a member of my party, I wholeheartedly again, thank the people of Assam for their blessings and support, and especially our 6.5 million Karyakartas who have tirelessly, relentlessly dedicating themselves for the growth, for the strengthening the organization in our state. So this is a victory of those Samarpit Karyakartas. This is the victory of our 3.4 crore people.
And this is victory of our leadership. And I think, yes, now people of India are marching towards the Big Seat Bharat 2047 as envisioned by Paramadharina Pradhan Mantri Narendra Modi ji. So like Assam, the people of the other states, our neighboring West Bengal, Puducherry, there is change in Tamil Nadu also. So all people of India are marching towards the path of, prosperity, progress, peace and harmony. So that is why we are getting mandate, blessings, cooperation from all the other parts of India also, including Assam. So we are really, it's a great day for our BJP and NDA Karyakartas. So I think people of West Bengal were deprived from development. So corruption was corruption was plaguing there in West Bengal. So because of that, people actually outstayed the Mamata Banerjee's TMC. Now we are very much optimistic. We are sure that under the able visionary leadership of Paramadharina Pradhan Mantri Narendra Modi ji, double engine Sarkar will definitely bring back the development of West Bengal to the right track. So let's celebrate. Thank you. शानदार विजय हुई है हेमंत बिस्वा जी के नेतृत्व में। आप चारों तरफ का माहौल देख सकते हैं और इतनी ही शानदार विजय इस बार बंगाल
जैसा वैसा कर लीजिए कहेंगे जो रुझान आए हैं। देखिए, रुझान तो असम में संतोषजनक बिल्कुल नहीं है। जो हमारी आशा थी उसके प्रतिकूल है। अभी भी राउंड्स बाकी हैं और हम अपने सारे दलों के जितने भी हमारे प्रतिनिधि हैं, प्रत्याशी हैं, हमारे दल के जितने भी कर्मी हैं, सबको ही हम अनुरोध करें कि जब तक अंतिम वोट की गणना नहीं होती है, हम सबको चौकन्ना रहना है, हमको काउंटिंग सेंटर्स में रहना है। बहुत से ऐसे विधानसभाएं हैं जहां पर मार्जिन चाहे लीडिंग का हो चाहे ट्रेलिंग का हो, मार्जिन बहुत ही कम है। तो पूरा हमें चौकन्ना रहना है और निश्चय ही संपूर्ण जब रिजल्ट आने के बाद हम आने वाले समय की कैसे हम तैयारी करेंगे, कैसे हम आगे बढ़ेंगे, उसको लेकर निश्चय दल के अंदर असम के लोगों के साथ और हमारे केंद्रीय नेतृत्व के साथ विचार विमर्श करेंगे। अगले इलेक्शन के लिए आप लोगों का क्या प्लान है? नहीं, बिल्कुल हमारे अगला जो हमारा म्यूनिसिपैलिटी हमारे इलेक्शंस आ रहे हैं और हमको अभी से ही वैसे हमने पहले से ही शुरुआत कर लिया था प्रचार के समय ही कि आने वाले लोकसभा चुनाव में हमें किस प्रकार से आगे बढ़ना है। जो सारे रिजल्ट्स आने दीजिए, जो हमको सीख लेनी है वो निश्चय हम सीखेंगे। कांग्रेस पार्टी एक बहुत मजबूत पार्टी है और हर विजय या हर पराजय से कैसे आगे बढ़ना है, कैसे हमको सबक लेना है, यह पार्टी हमारी बहुत अच्छी। जोरहाट में you lose trailing as of now counting is still going on. The results, booth wise results are not yet out, and obviously once the results are out, once the numbers are out, we will be able to make a better analysis. But no doubt overall trends are extremely disappointing. Nonetheless, because counting is still undergoing, we have requested all our candidates, all our party workers to be watchful, to make sure that every vote is counted fairly and transparently. And once the entire result sheet is out, booth-wise result is out, no doubt we would go into our analysis. One message for the people of Assam, sir? No, I think, as I said, through this campaign, we've got a lot of love and a lot of support from the people of Assam. Even today, many people have called us to express their disappointment. For all those who have voted for us, we express our gratitude towards them. All the workers who have worked so hard, we're expressing, and they continue to work hard in the counting centers. So we express our gratitude to them. And as I said, we would take the right lessons forward. As of now, counting is still undergoing, so we would pay attention to make sure that till the last round, every vote is counted fairly and transparent. Thank you. You are the Congress face. Will you take responsibility for this? Thank you. Sir, फटाफट निकाल देते हैं। ये प्रमोद भी तो बोलो TP6 आसाम हाँ ये
हाँ ये लाइव फ्रेम देखा आसाम में, ठीक है निकल रहा है, ठीक है अभी निकलेंगे। गुरु भाई ये कनेक्शन हो गई, बच्चे को मार दो, लाल हो गया देखो, ठीक है लाइव नहीं तो फिर वही है, शाम का ही है। ठीक है उधर ज़्यादा सही रहता है ना, वो कह रहे हैं इधर पता नहीं क्या कह रहा है, नहीं सही है ना, वो खोलेंगे नहीं वो प्रॉब्लम होगा तो बाहर से चले जाएंगे। নহ'লে এইফালে নোলাই বেলেগ ফালে গুচি যাব, আমাৰ একো নহ'ব, পলাই দিয়ক অঁ निकालने के लिए टाइम है, इस रास्ते से नहीं जाएगा, दूसरे रास्ते से जाने से हम लोग का बर्बाद ही हो जाएगा, है कि नहीं? पूरा यहाँ जब आएगा हम लोग को मालूम पड़ जाएगा। बैठ लो बैग और नालागे निमिता को पका जाओ जी हाँ रिसीवर टू से लाइव है सीएम आवाज के वाले
सही कर रहा है कि जांच उठ पे ना अपने फोन में मैं सोडोनाम वार्ड में रहता हूँ और मेंबर हो, एक्टिव मेंबर हो बीजेपी का।
आज हितेन गोस्वामी का जो जय है ये अभूतपूर्व जय है। ये हम लोग तो पहले से मालूम है जितेंद्र इस बार जीतेगा, लेकिन कुछ मेरा नाम रातुल दास है। एक बात सुनिए, जितना हम लोग का जोरहाट डिस्ट्रिक्ट का आदमी है ना, सब लोग एक ही बात सोचता है कि यहाँ में जो बीजेपी सरकार आएगा ना तो वही कुछ कर सकता है। ये कांग्रेस का कोई भेटी नहीं है यहाँ पे, डेवलपमेंट का थोड़े के नहीं है। और हितेन गोस्वामी है ना, बहुत काम किया है, हिमंता बिस्वा शर्मा ने काम किया है ना, और बहुत ये कि हमारा जोरहाट डिस्ट्रिक्ट के लिए बहुत अच्छा है। और एक बात सही है कि जितना ये लोग है ना, सब सनातन का धर्म का आदमी है और हिंदू का आदमी है। हम लोग का इसलिए एक बार बोले बंगाल में भी हमारा सरकार आ रहा है। हाँ, ममता दीदी का इसका सफाई हो रहा है, ममता दीदी का इस बार सफाई हो रहा है। हम लोग का बीजेपी सरकार आ रहा है, ममता दीदी का इस बार सब लोग नकार रहा है। और इतना जो ये लोग है ना, सब हिंदू का धर्म मिलेगा। हम लोग है हिंदुस्तान का, हम लोग का हिंदू का एक धर्म है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हम लोग होली खेलेगा, पार्टी भी करेगा कुछ। हाँ, हम लोग को कुछ नाच गाना भी होगा। हाँ, लेकिन बहुत मस्ती में हम रहेगा। हाँ, जो गोरखपुर का कैंडिडेट है ना, वो नकामा आदमी है, उसको कोई नकार है, 2 करोड़ वोट दे दे, जुआर का कोई काम कर नहीं रहा है। हितेन गोस्वामी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हितेन गोस्वामी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हितेन गोस्वामी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या कहेंगे जो सेलिब्रेशन कर रहे हैं उसके बारे में क्या कहेंगे? मामा जिंदाबाद, मामा का जिंदाबाद है। जय श्री राम। सब खुश है। নিকা নিযুক্তি পক্ষ থিয়াদিছে আমাক বিজেপি সরকার লাগে, মোদী সরকার জিন্দাবাদ। গৌরৱ গগৈ 2 বছৰ একো কৰা নাই আমি চোৱাই নাই, আমি একো চোৱাই নাই, ৰাইজে একো চোৱা নাই গৌৰৱ গগৈ। হিতেন নাই আমাৰ মামা সব কাম কৰিছে, ডেভেলপমেণ্ট ৰাইজৰ কি লাগে, ডেভেলপমেণ্ট লাগে। আৰু এতিয়া আমি সবে মিলি কওঁ মনৰ পৰা যে জয় জুবিন দা, জয় জুবিন দা। সিহঁতে ৰাজনীতি কৰিছিল, আমি ৰাজনীতি নকৰো, আমি জুবিনৰ নাম কম, জুবিন দা, জয় জুবিন দা, জয় জুবিন দা।
जैसा वैसा कर लीजिए। कहेंगे जो रुझान आए हैं। देखिए, रुझान तो असम में संतोषजनक बिल्कुल नहीं है। जो हमारी आशा थी उसके प्रतिकूल है। अभी भी राउंड्स बाकी हैं और हम अपने सारे दलों के जितने भी हमारे प्रतिनिधि हैं, प्रत्याशी हैं, हमारे दल के जितने भी कर्मी हैं, सबको ही हम अनुरोध करें कि जब तक अंतिम वोट की गणना नहीं होती है, हम सबको चौकन्ना रहना है, हमको काउंटिंग सेंटर्स में रहना है। बहुत से ऐसे विधानसभाएं हैं जहां पर मार्जिन चाहे लीडिंग का हो चाहे ट्रेलिंग का हो, मार्जिन बहुत ही कम है। तो पूरा हमें चौकन्ना रहना है और निश्चय ही संपूर्ण जब रिजल्ट आने के बाद हम आने वाले समय की कैसे हम तैयारी करेंगे, कैसे हम आगे बढ़ेंगे, उसको लेकर निश्चय दल के अंदर असम के लोगों के साथ और हमारे केंद्रीय नेतृत्व के साथ विचार विमर्श करेंगे। अगले इलेक्शन के लिए आप लोगों का क्या प्लान है? नहीं, बिल्कुल हमारे अगला जो हमारा म्यूनिसिपैलिटी हमारे इलेक्शंस आ रहे हैं और हमको अभी से ही वैसे हमने पहले से ही शुरुआत कर लिया था प्रचार के समय ही कि आने वाले लोकसभा चुनाव में हमें किस प्रकार से आगे बढ़ना है। जो सारे रिजल्ट्स आने दीजिए, जो हमको सीख लेनी है वो निश्चय हम सीखेंगे। कांग्रेस पार्टी एक बहुत मजबूत पार्टी है और हर विजय या हर पराजय से कैसे आगे बढ़ना है, कैसे हमको सबक लेना है, यह पार्टी हमारी बहुत अच्छी। जोरहाट में you lose trailing as of Jorhat now में what 11 lesson rounds. did you take? As of now, counting is still going on. The results, booth-wise results, are not yet out. And obviously, once the results are out, once the numbers are out, we will be able to make a better analysis. But no doubt, overall trends are extremely disappointing. Nonetheless, because counting is still undergoing, we have requested all our candidates, all our party workers to be watchful, to make sure that every vote is counted fairly and transparently. And once the entire result sheet is out, booth-wise result is out, no doubt we would go into our analysis. One message for the people of Assam, sir? No, I think, as I said, through this campaign, we've got a lot of love and a lot of support from the people of Assam. Even today, many people have called us to express their disappointment. For all those who have voted for us, we express our gratitude towards them. All the workers who have worked so hard, we're expressing, and they continue to work hard in the counting centers. So we express our gratitude to them. And as I said, we would take the right lessons forward. As of now, counting is still undergoing. So we would pay attention to make sure that till the last round, every vote is counted fairly and transparent. Thank you. You are the Thank Congress you. base. Will you take responsibility for this? Thank you. Sir, फटाफट निकाल देते हैं। ये प्रमोद जी को बोलो TG6 असम हाँ ये
लाइट फ्रेम देखा आसाम में, ठीक है निकल रहा है, ठीक है अभी निकलेंगे गुरु भाई, गुरु भाई ये कनेक्ट हो गई, बच्चे को मार दो, लाल हो गया देखो, हो गया लाइव नहीं तो फिर वही है, शाम का ही है। वो कह रहे हैं इधर पता नहीं क्या कह रहा है, यहीं पर ही गए थे ना वो, थोड़े मेरे हो गए नहीं वो प्रॉब्लम होगा तो बाहर से चले जाएंगे। रास्ते से नहीं जाएगा, दूसरे रास्ते से जाने से हम लोग का बर्बाद ही हो जाएगा, है कि नहीं? पूरा यहाँ जब आएगा हम लोग को मालूम पड़ जाएगा। बैग और नलागे मिनिता मतलब पकड़ा जाओ रिसीवर टू से लाइव है मैं सीएम आवाज के वहाँ पे
सही चल रहा है कि जा चुके ना अपने फोन में
राजकुआ। मैं सोडनाम वार्ड में रहता हूँ और मेंबर हूँ, एक्टिव मेंबर हूँ बीजेपी का। आज हितन गोस्वामी का जो जय है ये अभूतपूर्व जय है। ये हम लोग तो पहले से मालूम है जितेंद्र इस बार जीतेगा, लेकिन कुछ मेरा नाम रातुल दास है। एक बात सुनिए, जितना हम लोग का जुहाट डिस्ट्रिक्ट का आदमी है ना, सब लोग एक ही बात सोचता है कि यहाँ में जो बीजेपी सरकार आएगा ना तो वही कुछ कर सकता है। ये कांग्रेस का कोई भेटी नहीं है यहाँ पे, डेवलपमेंट का थोड़े के नहीं है। और हितन गोस्वामी है ना, बहुत काम किया है, हिमंत बिश्व शर्मा ने काम किया है ना, और बहुत ये कि हमारा जुहाट डिस्ट्रिक्ट के लिए बहुत अच्छा है। और एक बात सही है कि जितना ये लोग है ना, सब सनातन का धर्म का आदमी है और हिंदू का आदमी है। हम लोग का इसलिए एक बार बोले, बंगाल में भी हमारा सरकार आ रहा है। हाँ, ममता का दीदी का इसका सफाई हो रहा है, ममता दीदी का इस बार सफाई हो रहा है। हम लोग का बीजेपी सरकार आ रहा है, ममता दीदी का इस बार सब लोग नकार रहा है। और इतना जो ये लोग है ना, सब हिंदू का धर्म मिलेगा। हम लोग है हिंदुस्तान का, हम लोग का हिंदू का एक ही धर्म है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हम लोग होली खेलेगा, पार्टी भी करेगा कुछ। हाँ, हम लोग को कुछ नाच गाना भी होगा। हाँ, लेकिन बहुत मस्ती में हम रहेगा। हाँ, जो गौरव गोगोई कैंडिडेट है ना, वो नकामा आदमी है, उसको कोई नकार है, 2 कार वोट दे रहे, जुआर करेगा, कोई काम करेगा नहीं रहे। हितन गोस्वामी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हितन गोस्वामी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हितन गोस्वामी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या कहेंगे जो सेलिब्रेशन कर रहे हैं उसके बारे में क्या कहेंगे? मामा जिंदाबाद, मामा के जिंदाबाद है। जय श्री राम। सब खुश है। নিকা নিযুক্তি পক্ষত থিয়া দিছে। আমাক বিজেপি চৰকাৰ লাগে, মোদী চৰকাৰ জিন্দাবাদ। গৌৰৱ গগৈ 2 বছৰ একো কৰা নাই, আমি চোৱাই নাই, আমি একো চোৱাই নাই, ৰাইজে একো চোৱা নাই। গৌৰৱ গগৈ হিতান নাই, আমাৰ মামা সব কাম কৰিছে, ডেভেলপমেণ্ট ৰাইজৰ কি লাগে, ডেভেলপমেণ্ট লাগে। আৰু এতিয়া আমি সবে মিলি কওঁ মনৰ পৰা যে জয় জুবিন দা, জয় জুবিন দা। সিহঁতে ৰাজনীতি কৰিছিল, আমি ৰাজনীতি নকৰো, আমি জুবিনৰ নাম কম, জুবিন দা, জয় জুবিন দা, জয় জুবিন দা।
जैसा वैसा कर लीजिए क्या कहेंगे जो रुझान आए हैं देखिए, रुझान तो असम में संतोषजनक बिल्कुल नहीं है। जो हमारी आशा थी उसके प्रतिकूल है। अभी भी राउंड्स बाकी हैं और हम अपने सारे दलों के जितने भी हमारे प्रतिनिधि हैं, प्रत्याशी हैं, हमारे दल के जितने भी कर्मी हैं, सबको ही हम अनुरोध करें कि जब तक अंतिम वोट की गणना नहीं होती है, हम सबको चौकन्ना रहना है, हमको काउंटिंग सेंटर्स में रहना है। बहुत से ऐसे विधानसभाएं हैं जहां पर मार्जिन चाहे लीडिंग का हो चाहे ट्रेलिंग का हो, मार्जिन बहुत ही कम है। तो पूरा हमें चौकन्ना रहना है और निश्चय ही संपूर्ण जब रिजल्ट आने के बाद हम आने वाले समय की कैसे हम तैयारी करेंगे, कैसे हम आगे बढ़ेंगे, उसको लेकर निश्चय दल के अंदर असम के लोगों के साथ और हमारे केंद्रीय नेतृत्व के साथ विचार विमर्श करेंगे। अगले इलेक्शन के लिए आप लोगों का क्या प्लान है? नहीं, बिल्कुल हमारे अगला जो हमारा म्यूनिसिपैलिटी हमारे इलेक्शंस आ रहे हैं और हमको अभी से ही वैसे हमने पहले से ही शुरुआत कर लिया था प्रचार के समय ही कि आने वाले लोकसभा चुनाव में हमें किस प्रकार से आगे बढ़ना है। जो सारे रिजल्ट्स आने दीजिए, जो हमको सीख लेनी है वो निश्चय हम सीखेंगे। कांग्रेस पार्टी एक बहुत मजबूत पार्टी है और हर विजय या हर पराजय से कैसे आगे बढ़ना है, कैसे हमको सबक लेना है, यह पार्टी हमारी बहुत अच्छी। जोरहाट में you lose trailing as of Jorhat now में what 11 lesson rounds. did you take? As of now, counting is still going on. The results, booth-wise results, are not yet out. And obviously, once the results are out, once the numbers are out, we will be able to make a better analysis. But no doubt, overall trends are extremely disappointing. Nonetheless, because counting is still undergoing, we have requested all our candidates, all our party workers to be watchful, to make sure that every vote is counted fairly and transparently. And once the entire result sheet is out, booth-wise result is out, no doubt we would go into our analysis. One message for the people of Assam, sir? No, I think, as I said, through this campaign, we've got a lot of love and a lot of support from the people of Assam. Even today, many people have called us to express their disappointment. For all those who have voted for us, we express our gratitude towards them. All the workers who have worked so hard, we're expressing, and they're continuing to work hard in the counting centers. So we express our gratitude to them. And as I said, we would take the right lessons forward. As of now, counting is still undergoing. So we would pay attention to make sure that till the last round, every vote is counted fairly and transparent. Thank you. You are the Thank you. Congress face. Will you take Thank you. responsibility for this? Thank you. Sir, फटाफट निकाल देते हैं। ये प्रमोद जी तो बहुत TG6 आसाम हाँ
हाँ हाँ ये लाइट फ्रेम देखा आसाम में, ठीक है निकल रहा है, ठीक है अभी निकलेंगे। गुरु भाई ये कनेक्ट हो गई, बच्चे को मार दो, लाल हो गया देखो, ठीक है लाइव नहीं तो फिर वही है, शाम का ही है। ठीक है उधर ज़्यादा सही रहता है ना, वो कह रहे हैं इधर पता नहीं क्या कह रहे हैं, नहीं सही है ना, वो खोलेंगे नहीं होंगे, नहीं वो प्रॉब्लम होगा तो बाहर से चले जाएंगे। निकालने के लिए टाइम है, इस रास्ते से नहीं जाएगा, दूसरे रास्ते से जाने से हम लोग का बर्बाद नहीं हो जाएगा, है कि नहीं? पूरा यहाँ जब आएगा हम लोग को मालूम पड़ जाएगा। बैग लो बैग और बैग और नालागे गाइस निमिता को ना पकड़ जाओ।
सही कर रहा है कि जांच पे ना अपने फोन में
मेरा नाम अंजन राजकुआ, मैं सोडोनाम वार्ड में रहता हूँ और मेंबर हूँ, एक्टिव मेंबर हूँ बीजेपी का। आज हितन गोस्वामी का जो जय है ये अभूतपूर्व जय है। ये हम लोग तो पहले से मालूम है जितेंद्र इस बार जीतेगा, लेकिन कुछ मेरा नाम रातुल दास है। एक बात सुनिए, जितना हम लोग का जोहाट डिस्ट्रिक्ट का आदमी है ना, सब लोग एक ही बात सोचता है कि यहाँ में जो बीजेपी सरकार आएगा ना तो वही कुछ कर सकता है। ये कांग्रेस का कोई भेटी नहीं है यहाँ पे, डेवलपमेंट का थोड़े के नहीं है। और हितन गोस्वामी है ना, बहुत काम किया है, हिमंता बिस्वा शर्मा ने काम किया है ना, और बहुत ये कि हमारा जोहाट डिस्ट्रिक्ट के लिए बहुत अच्छा है। और एक बात सही है कि जितना ये लोग है ना, सब सनातन का धर्म का आदमी है और हिंदू का आदमी है। हम लोग का इसलिए एक बार बोले, बंगाल में भी हमारा सरकार आ रहा है। हाँ, ममता का दीदी का इसका सफाई हो रहा है, ममता दीदी का इस बार सफाई हो रहा है। हम लोग का बीजेपी सरकार आ रहा है, ममता दीदी का इस बार सब लोग नकार रहा है। और इतना जो ये लोग है ना, सब हिंदू का धर्म मिलेगा। हम लोग है हिंदुस्तान का, हम लोग का हिंदू का एक ही धर्म है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हम लोग होली खेलेगा, पार्टी भी करेगा कुछ। हाँ, हम लोग को कुछ नाच गाना भी होगा। हाँ, लेकिन बहुत मस्ती में हम रहेगा। हाँ, जो गोरखपुर का कैंडिडेट है ना, वो नकामा आदमी है, उसको कोई नकार है, दो कार वोट दे रहे, जुआर करेगा, कोई काम करने नहीं रहे। हितन गोस्वामी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हितन गोस्वामी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हितन गोस्वामी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या कहेंगे जो सेलिब्रेशन कर रहे हैं उसके बारे में क्या कहेंगे? मामा जिंदाबाद, मामा का जिंदाबाद है। जय श्री राम। सब खुश है। নিযুক্তি পৰীক্ষা থিয়া দিছে। আমাক বিজেপি চৰকাৰ লাগে, মোদী চৰকাৰ জিন্দাবাদ। গৌৰৱ গগৈ দুই বছৰ একো কৰা নাই, আমি চোৱাই নাই, ৰাইজে একো চোৱা নাই গৌৰৱ গগৈ। হিতেন নাই আমাৰ মামা সব কাম কৰিছে, ডেভেলপমেণ্ট ৰাইজৰ কি লাগে, ডেভেলপমেণ্ট লাগে। আৰু এতিয়া আমি সবে মিলি কওঁ মনৰ পৰা যে জয় জুবিন দা, জয় জুবিন দা। সিহঁতে ৰাজনীতি কৰিছে, আমি ৰাজনীতি নকৰো, আমি জুবিনৰ নাম কম, জুবিন দা, জয় জুবিন দা, জয় জুবিন দা।
जैसा है वैसा कर दीजिए। So what क्या will be? कहेंगे जो रुझान आए हैं? देखिए, रुझान तो असम में संतोषजनक बिल्कुल नहीं है। जो हमारी आशा थी उसके प्रतिकूल है। अभी भी राउंड्स बाकी हैं और हम अपने सारे दलों के जितने भी हमारे प्रतिनिधि हैं, प्रत्याशी हैं, हमारे दल के जितने भी कर्मी हैं, सबको ही हम अनुरोध करें कि जब तक अंतिम वोट की गणना नहीं होती है, हम सबको चौकन्ना रहना है, हमको काउंटिंग सेंटर्स में रहना है। बहुत से ऐसे विधानसभाएं हैं जहां पर मार्जिन चाहे लीडिंग का हो चाहे ट्रेलिंग का हो, मार्जिन बहुत ही कम है। तो पूरा हमें चौकन्ना रहना है और निश्चय ही संपूर्ण जब रिजल्ट आने के बाद हम आने वाले समय की कैसे हम तैयारी करेंगे, कैसे हम आगे बढ़ेंगे, उसको लेकर निश्चय दल के अंदर असम के लोगों के साथ और हमारे केंद्रीय नेतृत्व के साथ विचार विमर्श करेंगे। अगले इलेक्शन के लिए आप लोगों का क्या प्लान है? नहीं, बिल्कुल हमारे अगला जो हमारा म्यूनिसिपैलिटी हमारे इलेक्शंस आ रहे हैं और हमको अभी से ही वैसे हमने पहले से ही शुरुआत कर लिया था प्रचार के समय ही कि आने वाले लोकसभा चुनाव में हमें किस प्रकार से आगे बढ़ना है। जो सारे रिजल्ट्स आने दीजिए, जो हमको सीख लेनी है वो निश्चय हम सीखेंगे। कांग्रेस पार्टी एक बहुत मजबूत पार्टी है और हर विजय या हर पराजय से कैसे आगे बढ़ना है, कैसे हमको सबक लेना है, यह पार्टी हमारे बहुत अच्छी। जो जोरहाट में यू लूज ट्रेलिंग as of now counting is still going on. The results, booth wise results are not yet out, and obviously once the results are out, once the numbers are out, we will be able to make a better analysis. But no doubt overall trends are extremely disappointing. Nonetheless, because counting is still undergoing, we have requested all our candidates, all our party workers to be watchful, to make sure that every vote is counted fairly and transparently. And once the entire result sheet is out, booth-wise result is out, no doubt we would go into our analysis. One message for the people of Assam, sir. No, I think, as I said, through this campaign, we've got a lot of love and a lot of support from the people of Assam. Even today, many people have called us to express their disappointment. For all those who have voted for us, we express our gratitude towards them. All the workers who have worked so hard, we're expressing, and they continue to work hard in the counting centers. So we express our gratitude to them. And as I said, we would take the right lessons forward. As of now, counting is still undergoing, so we would pay attention to make sure that till the last round, every vote is counted fairly and transparent. Thank you. You are the Thank you. Congress base. Will you Thank take you. responsibility for this? Thank you. Sir, फटाफट निकाल देते हैं। ये प्रमोद भी तो बोलो TG6 असम
हाँ हाँ ये लाइव फ्रेम देखा आसाम में, ठीक है निकल रहा है, ठीक है अभी निकल गए गुरु भाई, गुरु भाई ये कनेक्ट हो गई, बच्चे को मार दो, लाल हो गया देखो, हो गया लाइव लाइव नहीं तो फिर वही है, शाम का ही है। ठीक है उधर ज़्यादा सही रहता है ना, वो कह रहे हैं इधर पता नहीं क्या कह रहा है, यहीं पर ही गए थे ना वो छोड़ेंगे नहीं होंगे, नहीं वो टोटल होगा तो बाहर से चले जाएंगे, নহ'লে এইফালে নোলাই বেলেগ ফালে গুচি যাব, আমাৰ একো নহ'ব, পলাই দিয়ক পলাই দিয়ক, অঁ निकालने के लिए टाइम है, इस रास्ते से नहीं जाएगा, दूसरे रास्ते से जाने से हम लोग का बर्बाद ही हो जाएगा, ठीक है कि नहीं, पूरा यहाँ जब आएगा हम लोग को मालूम पड़ जाएगा। बैठ लो बैग और बैग और नालागे निमिता को पका जाओ रिसीवर टू से लाइव फ्रेम है सीएम आवाज के
सही कर रहा है कि जाके उठे ना अपने फोन में
मेरा नाम अंजन राजकुमार, मैं 14 नंबर वार्ड में रहता हूँ और मेंबर हूँ, एक्टिव मेंबर हूँ बीजेपी का। ঠিক আছে আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ সাংবাদিকসকল, আপোনালোকে ইতিমধ্যে সকলোৱে অৱগত হৈছে যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু ইয়াৰ মিত্ৰ দল এক ঐতিহাসিক বিজয়ৰ ফালে আগবাঢ়িছে। স্বাধীনোত্তৰ অসমত এটা ৰাজনৈতিক শক্তিয়ে 100টাতকৈও অধিক আসন লাভ কৰা এয়া প্ৰথম আৰু এক প্ৰকাৰ NDA আৰু BJPয়ে আজি এক অসমৰ ৰাজনীতিত নতুন ইতিহাস ৰচনা কৰিলে। মই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু আমাৰ মিত্ৰ দলৰ হৈ অসমবাসী ৰাইজক আমাৰ কৃতজ্ঞতা আগবঢ়াইছোঁ। শিৰ নত কৰি প্ৰতিগৰাকী অসমবাসী ৰাইজক আমি তেওঁলোকৰ শ্ৰীচৰণত সেৱা আগবঢ়াইছোঁ আৰু অসমবাসী ৰাইজক এই ঐতিহাসিক বিজয়ৰ মুহূৰ্তত আমি অত্যন্ত বিনম্ৰতাৰে সৈতে ক'ব বিচাৰিম যে নিৰ্বাচনৰ সময়ত আমি আপোনালোকক দিয়া প্ৰতিটো প্ৰতিশ্ৰুতি পালন কৰাৰ বাবে আমি নিষ্ঠাৰে সৈতে কাম কৰিম। ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই যোৱা 10টা বছৰে যি ধৰণে আমাৰ ৰাজ্যখনৰ বিকাশত বৰঙণি যোগালে, আজি অসমৰ ৰাইজে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বৰ ওপৰত পুনৰ এবাৰ আস্থা প্ৰকাশ কৰিলে। তৃতীয়বাৰ একেধাৰে আমাৰ চৰকাৰ গঠন কৰা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ৰাজ্যসমূহৰ ভিতৰত অসমেও নিজৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰিলে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক মই পুনৰ এবাৰ আজি এই বিজয়ৰ ঐতিহাসিক মুহূৰ্তত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমাৰ দলটোক এই বিজয়ক নেতৃত্ব দিয়া আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি শ্ৰী নীতিন নবীন ডাঙৰীয়া আৰু অসমৰ শান্তি প্ৰতিষ্ঠাৰ পৰা বিকাশলৈকে এই সমগ্ৰ কৰ্মযজ্ঞত আমাক মাৰ্গদৰ্শন কৰি থকা ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াকো আজি আমি কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে বিশ্বাস কৰিছিলে যে আমি নিৰ্বাচনত 100টাতকৈও অধিক আসন লাভ। Welcome, my fellow developers. Software development is incomplete without SOLID, solid principles. Without them, any software will be as user-friendly. বিচাৰিছিলোঁ ৰাইজে হিয়া উজাৰি আমাক আশীৰ্বাদ কৰিলে। পুনৰ এবাৰ মই অসমবাসী ৰাইজৰ ওচৰত মই মোৰ কৃতজ্ঞতা আৰু সমগ্ৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু ইয়াৰ মিত্ৰ দলৰ কৃতজ্ঞতা
মই জ্ঞাপন কৰিছোঁ। সাংবাদিকসকলে যদি প্ৰথমতে আমাৰ স্থানীয় সাংবাদিকসকলে মোক যদি কিবা প্ৰশ্ন সুধিব খোজে আপোনালোকে প্ৰশ্ন কৰিব পাৰে, আপোনালোকক মই অনুৰোধ কৰিম। মই নাভাবোঁ যে নিৰ্বাচনত জুবিন গাৰ্গৰ বিষয়টো কিবা ইছ্যু আছিলে। সদায় মই বিশ্বাস কৰিছিলোঁ যে জুবিন গাৰ্গ ৰাজনীতিৰ ঊৰ্ধত। কংগ্ৰেছে নিজৰ মেনিফেষ্টোত জুবিন গাৰ্গৰ বিষয় উল্লেখ কৰি তেওঁলোকে অসমীয়া ৰাইজৰ পৰা বহু যোজন আঁতৰি গ'ল। আৰু মই ভাবোঁ যে এনে ধৰণৰ যি কংগ্ৰেছে পৰাজয় লাভ কৰিলে তাৰ এটা কাৰণ হ'ল যে জুবিন গাৰ্গক লৈ নিকৃষ্ট ৰাজনীতি কৰা। অসমৰ ৰাইজে কংগ্ৰেছক আজি এই নিকৃষ্ট ৰাজনীতিৰ বাবে এক প্ৰকাৰ শাস্তি প্ৰদান কৰিছে। মই আগতে কৈছিলোঁ যে তিনি গগৈ এই শব্দটোৱে আমাৰ জাতিটোক দ্বিখণ্ডিত কৰাৰ এক প্ৰকাৰ ষড়যন্ত্ৰ আছিলে। অসমৰ ৰাজনীতিত কেতিয়াও উপাধি, জাতি আৰু বৰ্ণলৈ ৰাজনীতি হোৱা নাছিল। লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈৰ পৰা সৰ্বানন্দ সোণোৱাললৈকে এই দীঘলীয়া ৰাজনৈতিক ইতিহাসত উপাধিৰে সৈতে ৰাজনীতি কৰিব বিচৰা এয়া এক প্ৰকাৰ আমি নজনা নুশুনা এক প্ৰচেষ্টা আছিল। যদি আপোনালোকে গোপীনাথ বৰদলৈৰ পৰা সৰ্বানন্দ সোণোৱাললৈকে ৰাজনৈতিক ইতিহাস চায়, কেতিয়াও উপাধিৰে ৰাজনীতি কৰিব কোনেও বিচৰা নাছিল, কংগ্ৰেছে হওক বিজেপিয়ে হওক। এইবাৰ প্ৰথম উপাধিৰে সৈতে ৰাজনীতি কৰিব বিচৰা হৈছিল, তাক ৰাইজে প্ৰত্যাখ্যান কৰিছে। আৰু মই আগতেই কৈ অহাৰ দৰে যে আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মঞ্চত গগৈও আছে, বৰগোহাঁইও আছে, বুঢ়াগোহাঁইও আছে, দাস কলিতা কোচ ৰাজবংশী, পাহাৰ ভৈয়ামৰ জনজাতীয় সকলো লোকৰ সমাৱেশ আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত আছে। সেইকাৰণে আমি বৰাকৰ পৰা পাহাৰলৈ, নামনিৰ পৰা উজনিলৈ, মধ্য অসমৰ পৰা আমি সমগ্ৰ ভূখণ্ডত আমি শক্তিশালীভাৱে জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ। অসমৰ ৰাইজে এই তিনি গগৈ ৰাজনীতিক দৃঢ়তাৰে সৈতে প্ৰত্যাখ্যান কৰিলে আৰু দুজন গগৈক অসমৰ ৰাইজে নিৰ্বাচনত পৰাজিতও কৰিলে। सर आप इस बार बंगाल भी जीत गए हैं, क्या कहेंगे? মই এটাই কথা ক'ব খোজোঁ যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত অসমৰ ৰাইজক যোৱা 10টা বছৰত আমি যি ধৰণে সেৱা কৰিছিলোঁ, ৰাজ্যখনক বিকাশৰ পথলৈ আগুৱাই লৈ গৈছিলোঁ, অসমক এক অনন্য বিকাশৰ পথলৈ আগুৱাই লৈ গৈছিলোঁ, অসমক এক অনন্য পৰিচয় দিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ। অসমৰ ৰাইজে তাৰ বাবে আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু ইয়াৰ মিত্ৰ দলক হিয়া উজাৰি আশীৰ্বাদ দিছে। আৰু মই নিশ্চিতভাৱে কথা দিম যে অনাগত দিনবিলাকতো প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমি এনেধৰণে অসমৰ ৰাইজক সেৱা আগবঢ়াই গৈ থাকিম। সামাজিক প্ৰচাৰ মাধ্যম, বিশেষকৈ অসমৰ এটা বা দুটা প্ৰচাৰ মাধ্যমে জেনজিৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোকে এক প্ৰকাৰ একপক্ষীয় নীতি গ্ৰহণ কৰা আমি নিৰ্বাচনৰ সময়ত দেখা পাইছিলোঁ। সেই সংবাদ মাধ্যমৰ দৃষ্টিত ৰূপালী লাংথাচাও জেনজি নাছিলে, ধীৰাজ গোৱালাও জেনজি নাছিলে, মিলন দাসো জেনজি নাছিলে। অৰ্থাৎ জেনজিৰ যেন সমগ্ৰ অধিকাৰ বিৰোধী পক্ষৰ লগতহে আছিলে, বিজেপিৰ লগত জেনজিৰ অধিকাৰেই নাছিলে। মই আপোনালোকক জনাবলৈ পাই ভাল পাইছোঁ যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে আগবঢ়োৱা সকলোবোৰ
যুৱ প্ৰাৰ্থী এই নিৰ্বাচনত বিজয়ী হৈছে আৰু ক'ব গ'লে আমি আমাৰ দলে যিসকল জেনজিক প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াইছিল প্ৰতিগৰাকী প্ৰাৰ্থী এই নিৰ্বাচনত বিজয়ী হ'বলৈ সক্ষম হৈছে। এই বিষয়ে সাংবিধানিক নীতি নিয়ম আছে। প্ৰথমতে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পদত্যাগ কৰিব, তাৰ পিছত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে দলীয় নেতা নিৰ্বাচন কৰিব, তাৰ পিছত NDA নিজৰ নেতা নিৰ্বাচন কৰিব আৰু ৰাজ্যপাল মহোদয়ে চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ আহ্বান জনাব। তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ ৰাজ্যিক সভাপতিয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্বৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি পৰৱৰ্তী সময় আপোনালোকক অৱগত কৰিব। আজিৰ দিনটোতে সেই ধৰণৰ শপত গ্ৰহণৰ দিন বা তাৰিখ আমি আলোচনা কৰা নাই। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ত এই বিষয়ে নিশ্চিতভাৱে চৰ্চা হ'ব। কোনটো চিটত জিকিলে হিন্দু প্ৰভুত্ব থকা? মইতো জানাত শিৱসাগৰত কংগ্ৰেছ জিকা নাই, শিৱসাগৰত ভোট গণনা চলি আছে এতিয়াও। সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে এইবাৰ বিৰোধী পক্ষত হিন্দু বিধায়ক নাথাকিবই। হয়তো জয়প্ৰকাশ দাস আৰু যদি অখিল গগৈ যদি জিকে বাদ দিওঁ, তেতিয়াহ'লে বিৰোধীত হিন্দু বিধায়ক নাথাকিব। মই বহুদিন আগতে কৈছিলোঁ যে কংগ্ৰেছত হিন্দু সমাজ থকাৰ পৰিৱেশ নাই আৰু সেইকাৰণে ভূপেন বৰা, প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈক আমি মাতি আনিছিলোঁ। অনাগত দিনতো আমি কংগ্ৰেছত যিবিলাক ভাল অধ্যয়নপুষ্ট বা সামাজিকভাৱে সেৱা আগবঢ়োৱাব পৰা হিন্দু নেতৃত্ব আছে, তেওঁলোককো মই আহ্বান জনাম যে অসমৰ ভৱিষ্যতৰ ফালে লক্ষ্য কৰি অনাগত সময়ত সকলোৱে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ এই মহামঞ্চত একত্ৰিত হৈয়ে আমি জাতিটোক বিদেশী বাংলাদেশী বিদেশীৰ পৰা আমি ৰক্ষা কৰিব লাগিব। আৰু সেইকাৰণে আজিৰ দিনটোতো মই সকলোকে আহ্বান জনাম যে আপোনালোকে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ এই মহামঞ্চত মিলিত হওক, যাতে বাংলাদেশী মিয়াৰ আগ্ৰাসনৰ পৰা আমি জাতিটোক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ এই মহামঞ্চত তলত ঐক্যবদ্ধ হৈ আমি বচাব পাৰোঁ। ইতিমধ্যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মেনিফেষ্টো ভিজন ডকুমেণ্ট আপোনালোকৰ সন্মুখত আছে। তাৰ উপৰিও প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ স্বপ্ন উত্তৰ পূৰ্বক অষ্টলক্ষ্মীলৈ ৰূপান্তৰ কৰা, তেখেতৰ আদৰ্শ আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ভিজন ডকুমেণ্ট অনুসৰিয়ে আগন্তুক চৰকাৰে কাম কৰিব। মই বেংগলত কৈছিলোঁ অসমত চেঞ্চুৰী, বেংগলত ডাবল চেঞ্চুৰী আৰু কাৰ্যত সেইফালে আজি আমি আগবাঢ়িছোঁ। এভিকশ্যন নচলাৰ কথাটোতো কেতিয়াও হোৱাই নাই। আমি কৈছিলোঁ যোৱাবাৰ 1.5 লাখ বিঘাত কৰিছিলোঁ, এইবাৰ আমাৰ লক্ষ্য তাতকৈ বেছি হ'ব। পশ্চিমবংগৰ নিৰ্বাচনৰ বিজেপিৰ বিজয় অসমৰ বাবে এটা বাংলাদেশ সীমান্ত ত্ৰিপুৰা, মিজোৰাম, মেঘালয়, অসম আৰু পশ্চিমবংগ, ইয়াৰ ভিতৰত সীমা অসমতে আটাইতকৈ কম আৰু ভাৰত আৰু বাংলাদেশৰ সীমা আটাইতকৈ বেছি হ'ল পশ্চিমবংগ। বহু সময়ত আমাৰ ইয়াৰ ছাত্ৰ সংগঠন, যুৱ সংগঠনে দাবী কৰে যে অসমৰ কাইটিয়াতাৰৰ বেৰা বা অসমৰ সীমান্ত চিল কৰিব লাগে। কিন্তু প্ৰথমৰ পৰা আমি এই কথা কৈ আহিছিলোঁ যে অসমত সীমান্ত বন্ধ কৰি লাভ নাই যদি আন ৰাজ্যসমূহত ই মুকলি হৈ থাকে। পশ্চিমবংগত মমতা বেনাৰ্জীয়ে ইমান দিন
ফেন্সিং বনাবৰ কাৰণে BSF আৰু ভাৰত চৰকাৰক মাটি দিয়া নাছিল। বিজেপিৰ চৰকাৰে ইতিমধ্যে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে যে বিজেপিৰ চৰকাৰৰ প্ৰথম লক্ষ্য হ'ব ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তত ফেন্সিঙৰ কাৰণে BSFক মাটি দিয়া। ইয়াৰ ফলত অসম বা পশ্চিমবংগ বা ভাৰতত বিদেশী নাগৰিক বাংলাদেশী মিয়া সোমোৱা যি এটা ৰাস্তা খোলা আছিলে সেই ৰাস্তাটো বন্ধ হৈ যাব। দেশৰ সাৰ্বভৌমত্বৰ কাৰণে পশ্চিমবংগত বিজেপি চৰকাৰ অহা অতিকে প্ৰয়োজনীয় আছিল। মই ভাবোঁ যে আজি ৰাষ্ট্ৰৰ বাবে এটা আনন্দৰ দিন। মই এটাই কথা ক'ব খোজোঁ যে বাংলাদেশী মিয়াই হওক বা সীমান্তৰ লগত জড়িত বিষয়বোৰে হওক অসম, পশ্চিমবংগ, ত্ৰিপুৰা, মেঘালয় বা মিজোৰামত বন্ধুত্বমূলক ৰাজ্য চৰকাৰে আমাৰ দেশৰ সাৰ্বভৌমত্বক সুৰক্ষিত কৰিব। मैं हिंदी में आता हूँ, एक बार आसामीज को खत्म कर लूँगा। পশ্চিমবংগৰ কথা কৰি কি লাভ? দেশত প্ৰতিদিন বাতৰি কাকত আৰু প্ৰতিদিন টাইমছত মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। কেমেৰাটো ৰাইজে প্ৰত্যাখ্যান কৰিলে আৰু এতিয়া অন্তত আপোনালোকে ৰাইজৰ লগত এতিয়া हिंदीत कब तार पिछत मैं इंग्रजी को हिंदी में आइए पूरे इलाका में जो जीत हासिल हुआ है, एक अभूतपूर्व मैंडेट मिला है असम में बीजेपी को, इसका श्रेय आप किसको देंगे? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बीते 10 साल असम को हर दृष्टिकोण से सांस्कृतिक सुरक्षा, विकास और असम का आइडेंटिटी को आगे करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए जो निरंतर प्रयास किया था, आज असम ने ये प्रयास मैं असम का जनता को हमारे पार्टी का ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो बीते 10 साल असम को जो मोदी जी ने सेवा किया, इसके लिए मैं मोदी जी को धन्यवाद देता हूं और आगे भी मैं आशा करता हूं कि प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में असम हर बिंदु में आगे बढ़ेगा। यही आशा लेके असम का जनता ने मोदी जी को वोट दिया। मैं असम का पत्रकारों से जब भी बातचीत हुए थे, हमेशा मैं बोलता हूँ कि हमारा जो अध्यक्ष है वो दिलीप सैकिया है। सैकिया का मतलब 100 का ऊपर अधिपति। मैं जो दिन दिलीप सैकिया जी अध्यक्ष हुआ तभी मैं असम का जर्नलिस्ट को पत्रकार सम्मेलन में बताया था कि यही संदेश है कि 100 सीट हमें जीतना है। और आज शायद पवित्र मार्गरीटा जो हमारे मंत्री जी हैं, उन्होंने शायद जोरहाट में मेरा लिखा हुआ एक स्लिप भी दिखाया है, उसमें मैं 102 ±2 लिख के दिए थे हस्ताक्षर करके। वो पत्र अभी जोरहाट में पवित्र मार्गरीटा जी ने जनता को दिखाया। मतलब जैसे हमारे एक्सपेक्टेशन थे ऐसे ही हम जीते। हमारे कोई अफसोस कि ये हम जितना चाहिए था नहीं जीता, ऐसा नहीं है। जितना हो सकता था असम वासियों ने पूरा दिल खोल के हमें दे दिया और इसमें कुछ और बात नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने जो सेवा किया असम को, पहला बार कोई प्रधानमंत्री जो देश का मेन स्ट्रीम में असम को और नॉर्थ ईस्ट को ले जाने का प्रयास किए थे। प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व में
ये वोट है। और प्रधानमंत्री जी का जो एक नॉर्थ ईस्ट को अष्टलक्ष्मी बनाने का प्रधानमंत्री जी का एक जो सपना है, वो सपना को साकार करने के लिए असम का जनता ने तीसरा बार प्रधानमंत्री जी को सरकार दी। असम के साथ साथ पूरे देश में नजर पश्चिम बंगाल पर थी। पश्चिम बंगाल की इतनी बड़ी जीत पर असम के मुख्यमंत्री देखिए, पश्चिम बंगाल का जीत आज भारत का जीत है। ये कोई बीजेपी का जीत नहीं है, ये भारत का जीत है। भारत और बांग्लादेश सीमा असुरक्षित रहने का कारण हमारे डेमोग्राफी से लेकर सिक्योरिटी तक एक बहुत बड़ा चैलेंज हुए थे। असम में हम जितना भी काम करें, लेकिन भारत और बांग्लादेश का सीमा सबसे ज्यादा लंबा सीमा पश्चिम बंगाल में है। आज ममता बनर्जी ने सरकार को बार बार रिक्वेस्ट करने का बाद भी फेंसिंग बनाने के लिए बीते 10 साल जमीन नहीं दी। राष्ट्र एक प्रकार असुरक्षित हुए। सेकेंड नेक भी वेस्ट बंगाल में ही है। आज ये जो जीत है, ये जरूर बीजेपी का जीत है, लेकिन मैं मानता हूँ ये बीजेपी का जीत कम और भारत का जीत सबसे ज्यादा। ये देश का विजय हुआ है पश्चिम बंगाल में, ये देश का विजय है। और मेरा लगता है कि पश्चिम बंगाल का जनता ने हमारे देश का सुरक्षा के लिए ये वोट डाले, मोदी जी का नेतृत्व में वोट डाले। और मेरा लगता है कि इससे पूरे नॉर्थ ईस्ट का साथ बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल सुरक्षित होगा और फेंसिंग का काम जबरदस्त आगे बढ़ेगा। मैं मानता हूँ ये राष्ट्र का विजय है। पवन खेरा के लिए मेरा एक कमिटमेंट है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको बोल दिया है कि असम का थाना में आके हाजिरा लगाने के लिए। बाकी आगे आगे आप फिल्म देखते रहे। आप एक बार हिमंत बिस्वा शर्मा कुछ बोलते हैं तो शायद ही हम पीछे पलट के देखता है। तो आगे देखते हैं। लेकिन पवन खेरा जी को मैं एक धन्यवाद देना चाहता हूँ। पवन खेरा जी का जो एलिगेशन रहा एक असम का बेटियों का ऊपर, इससे लोगों को काफी इमोशनल थी। शायद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते थे और गौरव गोगोई जी साथ में नहीं बैठते थे, शायद गौरव गोगोई जी नहीं हारते थे। क्योंकि वो लांछन मेरा ऊपर नहीं था, एक असम का बेटियों का ऊपर था। तो असम का जनता ने उनको पेरा बना दिया है और आगे जाके थोड़ा मेरा भी जिम्मेदारी बाकी रहेगा, वो भी मैं जिम्मेदारी पूरा करूंगा। कांग्रेस का सारा विधायक अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस का शायद कितना विधायक जीते हैं दिखा रखा है, तो 22 में 21 का धर्म इस्लाम है, एक का धर्म हिंदू। मैं ऐसे धर्म का बात बोलना जरूरत नहीं है, लेकिन आपने पूछा है इसलिए मैंने बोला। जितना भी जीते हैं सारे हमारे मुसलमान भाई बहन जीते हैं कांग्रेस का, खाली एक ही हिंदू जीते। और उसमें और एक आप लोग को खबर देना मेरा ड्यूटी है। 2016 में बीजेपी का सरकार हुआ, 21 में रिपीट हुए। बीजेपी का कभी अपने मेजोरिटी नहीं था। इस बार बीजेपी अपना खुद का मेजोरिटी मिले हैं, 80 से ज्यादा। देखिए, हम जो बोलता हो वो तो हम नहीं बोलते हो। माँ कामाख्या किसी से बुलवा देते हैं। असम में माँ कामाख्या रहते हैं। जब मैं सिलीगुड़ी गया, माँ ने मेरा मुंह से निकलवा दिया, क्या असम में 100 बीजेपी में 200 हो गया तो अच्छा हुए। लेकिन इसमें कोई बंगाल का जीत, मैं बार बार बोलता हूँ, राष्ट्र का जीत है। ये बीजेपी से ऊपर राष्ट्र का जीत है। मेरा लगता है कि ये जीत को आधार बनाते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी
देश को सुरक्षित करने के लिए बहुत बड़ा कदम उठा पाएगा। झारखंड में भी ये लोग आते हैं मुर्शिदाबाद होते हुए। मैं असम से किसी को भगाता हूँ बांग्लादेश, फिर वो लोग घूम के बंगाल में आने का एक स्कोप रह जाते थे। तो अभी बंगाल से लेकर मिजोरम तक पूरा हमारे ही अपना सरकार हुए, कम से कम हॉस्टाइल सरकार नहीं, फ्रेंडली सरकार हुए। मेघालय, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, बंगाल, ये 500 मुख्य। So I can just use ChatGPT, right? Why do I have to attend your workshop? See, that's the biggest misconception, that only ChatGPT is AI, only Gemini is AI, right? There are more than 1500 AI tools. All of these AI tools are automating some part of the work. But if you are working in India, there are these top 10 AI tools which are automating data analysis, software development, software testing, Excel, PowerPoint, right? And these top 10 AI tools we teach in our 3 hours AI tools workshop, which is going to happen upcoming Sunday, right? And usually this workshop is for 2000 rupees, but for first few seats, we have kept it just 9 rupees. Oh wow, and that's such a less pricing, right? So how can I join this workshop though? You can simply click on the link below and join right now. नॉर्थ ईस्ट को सुरक्षित किया, हम लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मैं दोनों प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने बहुत अपना समय दिया, परिकल्पना किया, समय दिया, सामने से नेतृत्व लिया। गृह मंत्री जी ने माइक्रो लेवल में अपने काम किए। मैं नहीं मानता हूं बीजेपी को जिताने के लिए, ममता बनर्जी को हराने के लिए ये प्रयास किया था। ये देश को जिताने के लिए दोनों ने अपना प्रयास किया। देखा जाए तो बिहार में भी सरकार हो गई, बंगाल में भी, तो क्या भारत एक हिंदू राष्ट्र बनने की अवसर है? देखिए, भारत हमेशा से हिंदू राष्ट्र है और जब तक शान और सूरत रहेगा भारत हिंदू राष्ट्र है। मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, मियां मुसलमान का वोट नहीं चाहिए। हमें कैसे चाहिए? क्या मैसेज? वो अच्छा खुश है, वो लोग अभी डांस कर रहे हैं। अभी यहाँ में भी आप हिसाब लीजिए ना कितना मुसलमान भाई बहन है। हमें वोट नहीं देते हैं, लेकिन मैं जीतने से वो सबसे ज्यादा खुशी होती है। मेरा काफिला में मेरा तो गाड़ी का ड्राइवर भी मुस्लिम है। वो कोई ये नहीं है। हमारे अभी मुस्लिम भाई बहन वोट देने में प्रॉब्लम है, वो लोग का धीरे धीरे देगा, लेकिन बहुत खुश है। आज सबसे जो मुस्लिम विधायक जीते कांग्रेस ने, सबको मुझे फोन किया कि दादा बहुत खुश हुई जीती। मेरा मोबाइल में जो अभी तक बीजेपी एमएलए का फोन नहीं आ रहा है, सबसे ज्यादा कांग्रेस का एमएलए का ही फोन आ रहा है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। असम का मुस्लिम पहले से भी खुश है, अभी भी खुश रहेगा, आगे भी खुश रहेगा। खाली एक ही हमारा रिक्वेस्ट है, हम यहाँ भारतीय बन के रहना, नेशनलिस्ट बन के रहना। देखिए, कांग्रेस ने 2 पाप किए। एक, उन्होंने स्लोगन दिया था नतून भारत, मतलब उन्होंने इनडायरेक्टली बोले थे कि बांग्लादेश से आए हुए मियाँ को हम मेन स्ट्रीम करेंगे। 1, 2, जो 3 गोगोई बोल के उनके जो एक असम का महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव ने असम को कास्टलेस सोसाइटी बनाया। यहाँ में कोई किसी का कास्ट से नहीं देखते, लेकिन ये जो राजनीति किया, वो राजनीति को उनके ही लोगों ने रिजेक्ट किया। जो 3 गोगोई का 2 गोगोई हारे, उसमें जितना गोगोई लोगों का बूथ थे, पोलिंग बूथ थे, वही लोगों ने ही उनको वोट नहीं डाला। इसलिए हमारे लोग अच्छा नहीं पाते हैं ये सब। और मेरा लगता है आप लोगों ने भी थोड़ा ये लोगों को इनजस्टिस किया। थोड़ा हमारा असम का जो मीडिया लोग मुझे जो अच्छा नहीं पाते हैं, उनको ये 3 गोगोई कैट्स लाइन अच्छा लगा और खूब चला, खास करके हमारा प्रतिनिधि। तो ये जो कैप्शन चलाया, मैं कभी मना नहीं किया, इसलिए मेरा मालूम था कि ये कैप्शन का कारण ही ये लोग गिरेगा। तो इसीलिए मैं इनडायरेक्टली कभी कभी हमारा भी गोगोई है बोल के उनको उत्साहित ही करते रहा।
इसलिए मेरा पहले से मालूम है कि ये लाइन नहीं चलता है, इसलिए ये लाइन चलाने का साथ साथ बुरा गुहाई लोग चला गया, बड़ गुहाई लोग चला गया, संधि कोई लोग चला गया, कलिता चला गया, कोस चला गया, हिंदू चला गया, मुसलमान चला गया। तो उन्होंने आप लोगों को हमारा यहाँ में कोई नॉस्टैल्जिक जैसा बहुत ही उत्सुक जर्नलिस्ट है ना, तो उनको लगा कि ये टीम को कोई कैप्शन बहुत बढ़िया कैप्शन आया है और इससे हिमंत बिस्वा शर्मा हार जाएगा। खूब चलाया और उसका निगेटिव रिजल्ट आज मिल चुका। देखिए मैं कागज लिख के दिया था हमारे मंत्री जी पवित्र मार्गरेटा जी को कि 102 ± 1 हम लोग या 2 मिलने वाला है। इसलिए हमेशा से क्या है, जितना हिंदू जिता सकता है सब सीट हम लोग, और हिंदू का पावर में इतना ही सीट है असम में। एक सीट छोड़ के सारे सीट जो असम में हिंदू जिता सकता है सब हमें जिता दिया, और बाकी हम नहीं जीत सकता था, नहीं जीता, लेकिन उसमें हमारा कोई अफसोस नहीं है। अभी नौगांव में बाईपोल आ रहा है, ये पूरा हमारे मुसलमान भाई का सीट है और हम जीत जाएगा, नौगांव जीत जाएगा हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज ही मुझसे लोग फोन करना शुरू कर दिया कि दादा हम लोग इस बार वोट डालेंगे, तो कोई चिंता मत कीजिए, ऐसे चमत्कार होते रहेगा असम में आगे भी। नहीं, आप एकदम चिंता मत करो, चमत्कार देखते जाएगा। और आपको अगर लगता है कि बीजेपी को मुस्लिम वोट मिलना है, असमी मुस्लिम तो हमें हमेशा वोट देते हैं, अगर बाकी भी वोट मिल के एक बार दिखाना है तो अगले बार वो भी मैं दिखा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। यही जो बहन मुस्लिम है उनका सामने में नहीं, ये चुनाव प्रधानमंत्री मोदी जी और बीजेपी कार्यकर्ता का सेहरा में हुए, और मैं भी एक बीजेपी का कार्यकर्ता। हमारा कार्यकर्ता सामने लड़े मोदी जी का नेतृत्व में। आपको जान के मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, इसी हॉल में, जो हॉल में आप लोग हैं, इसी हॉल में मोदी जी आए और हमारा कार्यकर्ता को 2 घंटा उन्होंने लाइन सिखाया कि क्या करना है हमें आगे, देश के लिए, समाज के लिए, पार्टी के लिए। ये पार्टी कार्यालय में आज से 3 महीना पहले, तो मोदी जी ने इतना अपने आप को इन्वॉल्व किए थे असम का चुनाव, और हमारा कार्यकर्ता पूरा दिल लगा के लगे फाइट किए। और मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ, मैं अपने आप को माइनस नहीं करता हूँ, सारे हमारे 48 लाख कार्यकर्ता है, उसमें मैं भी एक हूँ। मैं अभी हिंदी से इंग्लिश तक जाना चाहूँ, हिंदी का तीसरी बार जनता ने मौका दिया है, जीते अभी अपोजिशन तो हम जाके जीता हूँ क्या अपोजिशन? तो मुझे एक ऑर्डर करवा दीजिए कि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ही कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, तो हम लोग 2 साल से कांग्रेस को भी दे देंगे। सर, असम की जनता ने तीसरी बार आपको मौका दिया है, जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ गया, कितनी बड़ी चुनौती? हम लोग चुनौती लेने के लिए तैयार हो, इसलिए तो चुनाव में गए थे। प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में हम चुनाव को स्वीकार करता हूँ, और असम का जनता को हम लोग सब मिलकर भरपूर सेवा करेंगे। शपथ कब ले रहे हैं सर? ये नितिन नवीन जी से आपको पूछना पड़ेगा, इसका जवाब मेरा पास नहीं है। ये प्रश्न का जवाब देना उनका दायरे में पड़ता है, वो मेरा दायरे में नहीं पड़ता। This has never been witnessed in Assam earlier. After the peak of Assam Election also, we never saw such an unprecedented mandate. So, would you like to dedicate this mandate? I want to dedicate this win to the people of Assam, because this verdict could not have been possible without their support. They have supported, they have reposed their faith to the leadership of Prime Minister Narendra Modi, and this is a historic moment for Assam,
even post-independence also, no ruling alliance has received such a historic margin. So this is a huge victory, unprecedented victory, one of its kind. I don't know whether it will be ever be repeated again. I think today is a huge moment, a moment of pride, moment of बोल सकते हैं कि एक बहुत ही historical and emotional moment for all of us. I think Congress party has lost a number, their president has lost. Every Hindu candidate of Congress party has lost the election barring one. So rejection is that high. No Hindu candidate of Congress party could own except one candidate. Everyone has lost. So this is a mandate which is unprecedented. Never we have seen in the history of Assam. And I think this is a moment to introspect, this is a moment to celebrate, and this is a moment to thank people of Assam. Look, I don't want to talk Hindu-Muslim at this moment. I am only giving you the facts that today all the Hindu candidates of Congress party has lost the election barring one. So I am just giving the factual status. But I am not trying to say this is a Hindu win, this is a Muslim win. I am not explaining on that. I am just giving you a factual data, and now it is for you to analyze the data. You see, first, post 2016, the Assam, its image, outside and inside, has completely changed. Now Assam is considered as a state which is developing. Assam is considered as a state which is peaceful. Assam is considered as a state which reflects the composite culture of our state. All this change has happened because of the leadership of Prime Minister Narendra Modi. Second, as you know, we have a history of violence. Today, Assam has become a completely peaceful state. Because of the initiative of Prime Minister Modi as well as Home Minister Amit Shah, today Assam is considered as one of the most peaceful states. Number 3, people of Assam, along with development, always vote for its identity. People of Assam is now convinced that our identity can only be secured by the BJP. So, development, peace, and the faith of people of Assam that BJP is the platform, BJP is the party which will secure our identity. So these are the 3 basic reasons, and beyond this we cannot give, I think, except one. All the seats we have won, whatever seat native people could have given to us, they have given us everything. So this is a victory which is for us 99.9%. Although 26 Congress has got, but those seats we could not win otherwise also. Whatever we could have win, except one seat, they have given us all the seats. So for us, this is a victory with 99.9 striking rate. So you did people in West Bengal are thinking that this massive win credit goes to you. What's your take on this? People of West Bengal, I offer my gratitude to them.
This was a vote for the security of our nation. This was a vote for the development of Bengal. And this was a vote for the development of eastern and northeastern region. Anga, Banga, Kalinga and Kamrup. Now all these civilizational states are with BJP. Anga, Banga, Kalinga, Kamrup. So all these 4 civilizational states with now BJP under the leadership of Prime Minister Narendra Modi. So this is a moment of triumph, and this is also a moment where the people of Eastern India and Northeastern India can now be assured that the border will be secure and our identity will now be preserved much better way. So Bengal was a missing link. By winning Bengal, that missing link is now filled up. I think people has already voted. He has lost the election badly. And so far as case is concerned, the documents are with Ministry of Home Affairs. All the question may be directed to Assembly. It is not about the press conference. The day when he went to vote without his wife, people realized that all my allegations are true. What was my allegation? That after 10 years of marriage, she has not changed her nationality. Whoever has thought that Himanta Biswa Sarma has said something wrong, but the day of voting, when Mr. Gogoi went to polling station to vote without his wife, he got exposed. Both of his children are not the citizens of India. Then his link with the Pakistan. These are not documented. This is not about the press conference. These are part of documents which is now with the government of India. And obviously during election, because this was not for election, so we have not pursued the matter. But now as election is over, definitely we are going to pursue the matter further. What will be your 100-day plan in the next government? This is a government on continuation. So whatever good work we are doing, we will try to bring more pace to it. And I don't think that we have to do something new in these 100 days. I think people have said whatever you are doing in last 5 years, this is good for us, and continue that. So we will continue that with renewed momentum. And now as we will have 100 plus MLA, so it will be much more easier to walk on ground. आपने सीटों का शतक लगाया, राहुल गांधी ने हार का शतक लगाया। मैं राहुल गांधी जी को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आपने जो शतक लगाया, ये देश का इतिहास में आपका नाम गोल्डन अक्षर में लिखा जाएगा और हमेशा लोग आपको याद करेंगे। आपने कांग्रेस जैसा ये हिस्टोरिकल पार्टी को, कांग्रेस जैसे पार्टी को आप 100 हार देने में कामयाब रहे। खेरा जी का कारण ही गौरव गोगोई ने हार दिया है। बिकॉज क्या, when Mr. Pawan Khera made those allegations was not against me. Those allegations was against a daughter of Assam. But he has not uttered single word against me. He uttered all those words against a daughter of Assam. And Gaurav Gogoi was sitting with him without protesting. That is why I think why Gaurav Gogoi lost this election. He won a historical election in the last parliament. In the same seat he lost, and in his parliamentary constituency, out of 10, 9 constituency BJP won. This is partly because of Mr. Pawan Khera's press conference. Even if those allegations were there in front of Congress,
those should have been leveled by somebody from the Assam. They should not have hired Mr. Pawan Khera to defame a daughter of Assam. So that was one of their wrong policy. And obviously, हमारा असम का लोगों ने उनको पेड़ा खिला दिया और आप लोगों का पास भी पेड़ा है, आप लोग भी थोड़ा पेड़ा हमारा अध्यक्ष भी पेड़ा लेके आया हेमंत सोरेन जी ने हमारे पार्टी को काफी मदद किया। वो आने का कारण कांग्रेस ने सलाह किया है और हेमंत सोरेन जी आने का कारण कम से कम 6 से 7 सीट में हमारे फायदा है। मैं हेमंत सोरेन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आगे भी आप आते रहिए। थैंक यू। আৰু ইয়াৰ মিত্ৰ দল এক ঐতিহাসিক বিজয়ৰ ফালে আগবাঢ়িছে। স্বাধীনোত্তৰ অসমত এটা ৰাজনৈতিক শক্তিয়ে 100টাতকৈও অধিক আসন লাভ কৰা এয়া প্ৰথম আৰু এক প্ৰকাৰ NDA আৰু BJP-য়ে আজি এক অসমৰ ৰাজনীতিত নতুন ইতিহাস ৰচনা কৰিলে। মই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু আমাৰ মিত্ৰ দলৰ হৈ অসমবাসী ৰাইজক আমাৰ কৃতজ্ঞতা আগবঢ়াইছোঁ। শিৰ নত কৰি প্ৰতিগৰাকী অসমবাসী ৰাইজক আমি তেওঁলোকৰ শ্ৰীচৰণত সেৱা আগবঢ়াইছোঁ আৰু অসমবাসী ৰাইজক এই ঐতিহাসিক বিজয়ৰ মুহূৰ্তত আমি অত্যন্ত বিনম্ৰতাৰে সৈতে ক'ব বিচাৰিম যে নিৰ্বাচনৰ সময়ত আমি আপোনালোকক দিয়া প্ৰতিটো প্ৰতিশ্ৰুতি পালন কৰাৰ বাবে আমি নিষ্ঠাৰে সৈতে কাম কৰিম। ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই যোৱা 10টা বছৰে যি ধৰণে আমাৰ ৰাজ্যখনৰ বিকাশত বৰঙণি যোগালে, আজি অসমৰ ৰাইজে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বৰ ওপৰত পুনৰ এবাৰ আস্থা প্ৰকাশ কৰিলে। তৃতীয়বাৰ একেধাৰে আমাৰ চৰকাৰ গঠন কৰা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ৰাজ্যসমূহৰ ভিতৰত অসমেও নিজৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰিলে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক মই পুনৰ এবাৰ আজি এই বিজয়ৰ ঐতিহাসিক মুহূৰ্তত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমাৰ দলটো এই বিজয়ত নেতৃত্ব দিয়া আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি শ্ৰী নীতিন নবীন ডাঙৰীয়া আৰু অসমৰ শান্তি প্ৰতিষ্ঠাৰ পৰা বিকাশলৈকে এই সমগ্ৰ কৰ্মযজ্ঞত আমাক মাৰ্গদৰ্শন কৰি থকা ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াকো আজি আমি কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে বিশ্বাস কৰিছিলে
যে আমি নিৰ্বাচনত 100টাতকৈ অধিক আসন লাভ কৰিব পাৰিম আৰু সেই বিশ্বাসেৰে আমি ৰাইজৰ মাজলৈ গৈছিলোঁ ৰাইজক আমি বিনম্ৰতাৰে সৈতে ভোট বিচাৰিছিলোঁ ৰাইজে হিয়া উজাৰি আমাক আশীৰ্বাদ কৰিলে পুনৰ এবাৰ মই অসমবাসী ৰাইজৰ ওচৰত মই মোৰ কৃতজ্ঞতা আৰু সমগ্ৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু ইয়াৰ মিত্ৰ দলৰ কৃতজ্ঞতা মই জ্ঞাপন কৰিছোঁ সাংবাদিকসকলে যদি প্ৰথমতে আমাৰ স্থানীয় সাংবাদিকসকলে মোক যদি কিবা প্ৰশ্ন সুধিব খোজে আপোনালোকে প্ৰশ্ন কৰিব পাৰে আপোনালোকক মই অনুৰোধ কৰিম মই নাভাবোঁ যে নিৰ্বাচনত জুবিন গাৰ্গৰ বিষয়টো কিবা ইছ্যু আছিলে সদায় মই বিশ্বাস কৰিছিলোঁ যে জুবিন গাৰ্গ ৰাজনীতিৰ ঊৰ্ধত কংগ্ৰেছে নিজৰ মেনিফেষ্টোত জুবিন গাৰ্গৰ বিষয় উল্লেখ কৰি তেওঁলোকে অসমীয়া ৰাইজৰ পৰা বহু যোজন আঁতৰি গ'ল আৰু মই ভাবোঁ যে এনে ধৰণৰ যি কংগ্ৰেছে পৰাজয় লাভ কৰিলে তাৰ এটা কাৰণ হ'ল যে জুবিন গাৰ্গক লৈ নিকৃষ্ট ৰাজনীতি কৰা অসমৰ ৰাইজে কংগ্ৰেছক আজি এই নিকৃষ্ট ৰাজনীতিৰ বাবে এক প্ৰকাৰ শাস্তি প্ৰদান কৰিছে মই আগতে কৈছিলোঁ যে তিনি গগৈ এই শব্দটোৱে আমাৰ জাতিটোক দ্বিখণ্ডিত কৰাৰ এক প্ৰকাৰ ষড়যন্ত্ৰ আছিলে অসমৰ ৰাজনীতিত কেতিয়াও উপাধি জাতি আৰু বৰ্ণলৈ ৰাজনীতি হোৱা নাছিল লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈৰ পৰা সৰ্বানন্দ সোণোৱাললৈকে এই দীঘলীয়া ৰাজনৈতিক ইতিহাসত উপাধিৰে সৈতে ৰাজনীতি কৰিব বিচৰা এয়া এক প্ৰকাৰ আমি নজনা নুশুনা এক প্ৰচেষ্টা আছিল যদি আপোনালোকে গোপীনাথ বৰদলৈৰ পৰা সৰ্বানন্দ সোণোৱাললৈকে ৰাজনৈতিক ইতিহাস চায় কেতিয়াও উপাধিৰে ৰাজনীতি কৰিব কোনেও বিচৰা নাছিল কংগ্ৰেছে হওক বিজেপিয়ে হওক এইবাৰ প্ৰথম উপাধিৰে সৈতে ৰাজনীতি কৰিব বিচৰা হৈছিল তাক ৰাইজে প্ৰত্যাখ্যান কৰিছে আৰু মই আগতেই কৈ অহাৰ দৰে যে আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ মঞ্চত গগৈও আছে বৰগোহাঁইও আছে বুঢ়াগোহাঁইও আছে দাস কলিতা কোচ ৰাজবংশী পাহাৰ ভৈয়ামৰ জনজাতীয় সকলো লোকৰ সমাৱেশ আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত আছে সেইকাৰণে আমি বৰাকৰ পৰা পাহাৰলৈ নামনিৰ পৰা উজনিলৈ মধ্য অসমৰ পৰা আমি সমগ্ৰ ভূখণ্ডত আমি শক্তিশালীভাৱে জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ অসমৰ ৰাইজে এই তিনি গগৈ ৰাজনীতিক দৃঢ়তাৰে সৈতে প্ৰত্যাখ্যান কৰিলে আৰু দুজন গগৈক অসমৰ ৰাইজে নিৰ্বাচনত পৰাজিতও কৰিলে सर आप इस बार बंगाल भी जीत गए हैं क्या कहेंगे মই এটাই কথা ক'ব খোজোঁ যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত অসমৰ ৰাইজক যোৱা 10টা বছৰত আমি যি ধৰণে সেৱা কৰিছিলোঁ ৰাজ্যখনক বিকাশৰ পথলৈ আগুৱাই লৈ গৈছিলোঁ অসমক এক অনন্য বিকাশৰ পথলৈ আগুৱাই লৈ গৈছিলোঁ অসমক এক অনন্য পৰিচয় দিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ অসমৰ ৰাইজে তাৰ বাবে আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু ইয়াৰ মিত্ৰ দলক হিয়া উজাৰি আশীৰ্বাদ দিছে আৰু মই নিশ্চিতভাৱে কথা দিম যে অনাগত দিনবিলাকতো প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমি এনেধৰণে অসমৰ ৰাইজক সেৱা আগবঢ়াই গৈ থাকিম সামাজিক প্ৰচাৰ মাধ্যম বিশেষকৈ অসমৰ এটা বা দুটা প্ৰচাৰ মাধ্যমে জেনজিৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোকে এক প্ৰকাৰ
একপক্ষীয় নীতি গ্ৰহণ কৰা আমি নিৰ্বাচনৰ সময়ত দেখা পাইছিলোঁ। সেই সংবাদ মাধ্যমৰ দৃষ্টিত ৰূপালী লাংথাচাও জেনজি নাছিলে, ধীৰাজ গোৱালাও জেনজি নাছিলে, মিলন দাসো জেনজি নাছিলে। অৰ্থাৎ জেনজিৰ যেন সমগ্ৰ অধিকাৰ বিৰোধী পক্ষৰ লগতহে আছিলে, বিজেপিৰ লগত জেনজিৰ অধিকাৰেই নাছিলে। মই আপোনালোকক জনাবলৈ পাই ভাল পাইছোঁ যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে আগবঢ়োৱা সকলোবোৰ যুৱ প্ৰাৰ্থী এই নিৰ্বাচনত বিজয়ী হৈছে। আৰু ক'ব গ'লে আমি আমাৰ দলে যিসকল জেনজিক প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াইছিল প্ৰতিগৰাকী প্ৰাৰ্থী এই নিৰ্বাচনত বিজয়ী হ'বলৈ সক্ষম হৈছে। এই বিষয়ে সাংবিধানিক নীতি নিয়ম আছে। প্ৰথমতে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পদত্যাগ কৰিব, তাৰ পিছত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে দলীয় নেতা নিৰ্বাচন কৰিব, তাৰ পিছত NDA নিজৰ নেতা নিৰ্বাচন কৰিব আৰু ৰাজ্যপাল মহোদয়ে চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ আহ্বান জনাব। তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ ৰাজ্যিক সভাপতিয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্বৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি পৰৱৰ্তী সময় আপোনালোকক অৱগত কৰিব। আজিৰ দিনটোতে সেই ধৰণৰ শপত গ্ৰহণৰ দিন বা তাৰিখ আমি আলোচনা কৰা নাই। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ত এই বিষয়ে নিশ্চিতভাৱে চৰ্চা হ'ব। কোনটো চিটত জিকিলে হিন্দু প্ৰভুত্ব থকা? মইতো জানাত শিৱসাগৰত কংগ্ৰেছ জিকা নাই, শিৱসাগৰত ভোট গণনা চলি আছে এতিয়াও। সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে এইবাৰ বিৰোধী পক্ষত হিন্দু বিধায়ক নাথাকিবই। হয়তো জয়প্ৰকাশ দাস আৰু যদি অখিল গগৈ যদি জিকে বাদ দিওঁ, তেতিয়াহ'লে বিৰোধীত হিন্দু বিধায়ক নাথাকিব। মই বহুদিন আগতে কৈছিলোঁ যে কংগ্ৰেছত হিন্দু সমাজ থকাৰ পৰিৱেশ নাই, আৰু সেইকাৰণে ভূপেন বৰা প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈক আমি মাতি আনিছিলোঁ। অনাগত দিনতো আমি কংগ্ৰেছত যিবিলাক ভাল অধ্যয়নপুষ্ট বা সামাজিকভাৱে সেৱা আগবঢ়োৱাব পৰা হিন্দু নেতৃত্ব আছে, তেওঁলোককো মই আহ্বান জনাম যে অসমৰ ভৱিষ্যতৰ ফালে লক্ষ্য কৰি অনাগত সময়ত সকলোৱে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ এই মহামঞ্চত একত্ৰিত হৈয়ে আমি জাতিটোক বিদেশী বাংলাদেশী বিদেশীৰ পৰা আমি ৰক্ষা কৰিব লাগিব। আৰু সেইকাৰণে আজিৰ দিনটোতো মই সকলোকে আহ্বান জনাম যে আপোনালোকে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ এই মহামঞ্চত মিলিত হওক, যাতে বাংলাদেশী মিয়াৰ আগ্ৰাসনৰ পৰা আমি জাতিটোক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ এই মহামঞ্চত তলত ঐক্যবদ্ধ হৈ আমি বচাব পাৰোঁ। ইতিমধ্যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মেনিফেষ্টো ভিজন ডকুমেণ্ট আপোনালোকৰ সন্মুখত আছে। তাৰ উপৰিও প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ স্বপ্ন উত্তৰ পূৰ্বক অষ্টলক্ষ্মীলৈ ৰূপান্তৰ কৰা, তেখেতৰ আদৰ্শ আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ভিজন ডকুমেণ্ট অনুসৰিয়ে আগন্তুক চৰকাৰে কাম কৰিব। মই বেংগলত কৈছিলোঁ অসমত চেঞ্চুৰী, বেংগলত ডাবল চেঞ্চুৰী, আৰু কাৰ্যত সেইফালে আজি আমি আগবাঢ়িছোঁ। এভিকশ্যন নচলাৰ কথাটোতো কেতিয়াও হোৱাই নাই। আমি কৈছিলোঁ যোৱাবাৰ 1.5 লাখ বিঘাত কৰিছিলোঁ, এইবাৰ আমাৰ লক্ষ্য তাতকৈ বেছি হ'ব। পশ্চিমবংগৰ নিৰ্বাচনৰ বিজেপিৰ বিজয় অসমৰ বাবে এটা বাংলাদেশ সীমান্ত ত্ৰিপুৰা, মিজোৰাম, মেঘালয়, অসম আৰু পশ্চিমবংগ